for both the ruling and the opposition. I also have with me in the studio this morning my colleague Rashmi. So of course over 9 lakh people, viewers, will exercise their franchise in the 5 assembly seats of Sidli, Bongaigaon, Samoguri, Bihali and Dholai in Assam to decide the fates of 34 candidates. The bypolls are being seen by some as a semi-final ahead of the assembly elections in 2026, with the ruling BJP-led alliance aiming to maintain its dominance. The opposition, which has struggled to remain united in the run-up to the bypolls, will also expect to dent the BJP spirit as voting takes place across 5 constituencies. The stakes are also high for at least a couple of political families, as the electoral fate of a spouse and a son of a senior politician will be decided today. We are talking, of course, about Bongaigaon and Samoguri. While in Bongaigaon, wife of Borpeta MP and 8-time MLA Fani Bhushan Chaudhary, Dipti Moi Chaudhary, is contesting on an AGP ticket. In Samoguri, Tanzil Hussain, the son of 5-time MLA Rakibul Hussain, has been fielded by the Congress. The Dholai seat fell vacant after incumbent BJP MLA Parimal Suklabadya won the Lok Sabha polls from the Silchar seat, and similarly, Rakibul Hussain of the Congress won the Lok Sabha seat from Dubri, leaving the Samoguri Assembly constituency vacant. AGP's Fani Bhushan Chaudhary won the Borpeta Lok Sabha seat, leading to by-election in Bongaigaon, and similar was the scene in Sidli and Bihali, where sitting MLAs Jayanta Basumatari and Ranjit Datta vacated the seats after the Lok Sabha poll victories. While parties are confident of a good show in all 5 constituencies, the 2 seats to be watched out for are, of course, Samoguri and Bihali. The run-up to the bypolls saw unprecedented violence in Samoguri, where even a BJP MLA had a narrow escape when shots were fired during an election rally. Bihali, on the other hand, will be a big test for the opposition, with the Congress and the CPIML contesting against each other in the constituency. There are a total of 1,078 polling stations for the 5 bypoll seats in Assam, and polling is set to begin any time now. Sidli has the highest number of 2,12,555 voters, followed by Dholai, which has over 1.96 lakh voters, Bongaigaon with over 1.82 lakh voters, Samoguri with 1.80 lakh voters, and Bihali with 1,33,300 voters. Overall, a divided opposition is facing a united BJP-led alliance in Assam. Along with 5 assembly seats of Assam, by-election is also being held for the Bongaigaon assembly seat in Meghalaya, where Chief Minister Conrad Sangma's wife Mehtab Chandi Sangma is facing a multi-cornered contest. Also in the fray in Bongaigaon are Sadhya Rani Sangma of the TMC, Jingjang Marak of the Congress and Bernard Marak of the BJP. The seat fell vacant after Congress MLA from the constituency Saling Sangma won the Lok Sabha polls from Tura. So indeed, a lot at stake today, isn't it, Rashmi? बिल्कुल रौनक। तो 7 बज चुके हैं, 7:01 हो चुका है समय। चुनाव जो मतदान है वो शुरू हो चुका है। झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ ही आज देश के कई राज्यों में उपचुनाव कराए जा रहे हैं। असम और पूर्वोत्तर की कुल 6 सीटों पर आज उपचुनाव हो रहा है। असम के बिहाली, सामागुड़ी, धलाई, बोंगाईगांव और सिडली विधानसभा सीट पर वोटिंग अब 7 बज चुके हैं, ऐसे में शुरू हो चुकी है। मेघालय के गाम्बेगरे सीट पर भी वोट डाले जाएंगे। आज इन सीटों से निर्वाचित विधायकों के गत लोकसभा चुनाव में सांसद चुने जाने के बाद ये जो सभी सीटें हैं वो खाली हो गई थी। और सबसे पहले अगर मैं बात करूं असम की, तो सामागुड़ी के रकीबुल हुसैन, बिहाली से रंजीत दत्त, सिदली से जयंत बसुमतारी, धौलाई से परिमल शुक्ल वैद्य और बंगाईगांव से फणी भूषण चौधरी के इस्तीफा देने के बाद इन सीटों पर आज उपचुनाव कराए जा रहे हैं। इन 5 सीटों पर कुल 34 उम्मीदवार मैदान में हैं। सामागुड़ी विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक 11 उम्मीदवार मैदान में हैं, वहीं धौलाई में 8, बंगाईगांव से 8, बिहाली से 4 और सिदली से 3 उम्मीदवार मैदान में हैं। Alright, so we have the big breaking news coming in at this point in time, viewers. Voting has officially begun for the by-elections to 5 assembly constituencies in Assam, viewers. So voting has begun at 7 a.m. sharp, viewers. At 7 a.m. voting has officially gotten underway. So it has officially started, viewers. Voting has begun across 5 assembly constituencies, and the fate of 34 candidates in Assam for the 5
constituency is going to Bypolls has officially begun. Of course, voters have come out in numbers in this early morning hours today, and of course, as the day progresses, we can expect the number to go up and more people to come out and cast their votes, isn't it, Rashmi? बिल्कुल रौनक, तो 7 बजते ही वोटिंग शुरू हो गई है। आज असम के 5 सीटों पर विधानसभा चुनाव के तहत उपचुनाव कराए जा रहे हैं। साथ ही मेघालय की गाम्बेगरे सीट पर भी आज उपचुनाव कराए जा रहे हैं। इस बीच मतदान केंद्रों पर मतदाता पहुंचे हैं, लंबी कतारें सुबह से लगी हुई है और अब 7 बजते ही वोटिंग शुरू हो चुकी है। असम की मैं बात कर रही थी, सामागुड़ी सीट पर सभी की नजर आज टिकी हुई है, जहां से कांग्रेस के दिग्गज नेता और 5 बार के विधायक रकीबुल हुसैन के बेटे तंजील हुसैन मैदान में हैं। और इस सीट से भाजपा ने अपने युवा नेता डिप्लू रंजन शर्मा को मैदान में उतारा है। बोंगाईगांव सीट की अगर बात करूं तो इस बार आकर्षण का केंद्र यह सीट बना हुआ है, जहां 4 दशक से फणिभूषण का राज रहा है। इस बार फणिभूषण की पत्नी दीप्तिमयी चौधरी मैदान में है, जिनका मुकाबला कांग्रेस के ब्रजेंद्र सिन्हा और अगप के बागी नेता शैलेंद्र सरकार से है। और इस वक्त सीधी तस्वीरें आ रही है मेघालय के गाम्बेगरे सीट से, जहां आज उपचुनाव कराए जा रहे हैं। मतदाता इस बीच वहां मौजूद है और इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गाम्बेगरे से, जहां इस वक्त वोटिंग शुरू हो चुकी है। Yes, absolutely. So these are the live visuals coming to you straight from Gambegre in Meghalaya, viewers, where voting has officially begun along with the 5 seats in Assam. So as you can clearly see, there were a number of people who were lined up, who were in queue even before the clock struck 7 a.m. this morning, and they were waiting in line. These are the early morning voters in Gambegre constituency who have come out to cast their votes. Today, officially at 7 o'clock, the voting began. So people, one after the other, are going in and casting their votes. You can already see a number of female voters also there standing in queue to cast their votes in Gambegre. तो वरिष्ठ नागरिक आप देख सकते हैं, जो बुजुर्ग है वो भी पहुंचे हैं सुबह क्योंकि 7 बजते ही जो वोटिंग है वो शुरू हो चुकी है। गाम्बेगरे जो सीट है वहां आज उपचुनाव कराए जा रहे हैं। बहुकोणीय मुकाबला इस बार मेघालय के गाम्बेगरे सीट में देखने को मिल रही है, जहां एनपीपी ने भाजपा ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। मेहताब चांडी एनपीपी से मैदान में है, भाजपा से बर्नार्ड मराग, कांग्रेस से जिंगजांग एंग मराग और टीएमसी से साधिया रानी एम सांगमा चुनावी मैदान में है। और इस बीच तस्वीरें आई है गाम्बेगरे से, जहां इस वक्त वोटिंग शुरू हो चुकी है और वोटिंग इस वक्त चल रही है। Absolutely, Rashmi. So it remains to be seen who will have the last laugh as far as the Gambegre Bypolls is concerned. Of course, a number of very prominent leaders in the fray. One of whom is, of course, the wife of Meghalaya Chief Minister Conrad Sangma, Mehtab Chandi Sangma, who will be up against the BJP's Bernard Maraag. Bernard Maraag, of course, is the Vice President of the Meghalaya BJP unit. Also in the fray is the Congress's Jinjang M. Maraag, as is Sadhya Rani Sangma of the TMC. So a multi-cornered contest as far as Gambegre is concerned. We are getting you visuals from inside the polling booth in Gambegre, viewers, where, as you can clearly see, voting is currently underway. The people are coming in one after the other, casting their votes. There you see the woman there in the visuals going inside and casting her vote. So first visuals of the day, viewers, live visuals coming in of voting underway from the Gambegre Bypoll constituency. बिल्कुल रौनक, मतदान इस वक्त जारी है और लोग कतारों में खड़े हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सुबह से ही लोग इस तरह से कतारों में खड़े हैं और अब एक एक कर जो वोटर्स है वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तस्वीरें सीधे गाम्बेगरे से आ रही है। आज मेघालय का जो एकमात्र गाम्बेगरे सीट है वहाँ उपचुनाव कराए जा रहे हैं। पूरे पूर्वोत्तर की अगर मैं बात करूँ रौनक, तो 6 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। आज असम की 5 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, जबकि मेघालय के 1 सीट यानी गाम्बेगरे में चुनाव हो रहा है। जी बिल्कुल रश्मि, और like it has been the trend even earlier, as we had seen, you know, even before the clock struck 7, there was already quite a healthy number of voters waiting in line to cast their votes. So काफी उत्साह देखी जा रही है लोगों के बीच, if we talk about Gambegre, रश्मि। बिल्कुल, लोग उत्साहित हैं, उपचुनाव है और ऐसे में उनको अपना नेता चुनना है। ऐसे में अपने विवेक से वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। क्या युवा, क्या बुजुर्ग, सभी कतारों में इस वक्त खड़े हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं रौनक।
Absolutely. So young and old alike, both are in line to cast their votes today. As far as Gambegri is concerned, we will be getting live visuals from across the other constituencies who are going to bypoll today as well in a short while from now. But for now, these are the live visuals once again coming to you from Gambegri viewers. Also, what is heartening to see is that a number of the, or should I say a sizable number of the voters who are standing in queue right now are women voters, which is also a very encouraging sign, always a very encouraging sign. Old and young alike, as well as women, all standing in queue to exercise their franchise. जी बिल्कुल, मतदान जो शुरू हो चुका है, विधानसभा चुनाव के तहत उपचुनाव कराए जा रहे हैं। ये वो सीट है जहां से सांसद चुने जाने के बाद ये सीटें खाली हो गई थी। लोकसभा चुनाव हुए थे हाल ही में, जिसके बाद सीटें जो है वो खाली हो गई थी। ऐसे में उपचुनाव जरूरी हो गया था। जी बिल्कुल रश्मि, और right now what we are getting are the first visuals of the voters, some of the first voters who cast their votes early this morning today. So these are visuals coming in from the Darang Agal polling booth in Gambegri constituency. More visuals will be coming forth in just a short while from now, but these are some of the early morning voters in Garo Hills today, viewers. And we are getting live visuals once again, viewers. These are some of the voters. This very charming lady who has just cast her vote and is now flashing the finger and showing that she has indeed exercised her franchise. These are visuals coming in from Gambegri, viewers. Already quite a number of people who have cast their votes and more to follow. And of course, Rashmi, we also have our reporters who will be joining us live from the various polling stations in just a short while from now. And of course, we will be getting a feel. We'll be getting a feel of the mood, the atmosphere at the polling stations right now. But of course, that will come in a short while from now. But already, Rashmi, if we talk about the visual that we are seeing right now, there is a lot of enthusiasm among the people. Why not? Because these are very crucial seats, and the contest is also something to actually watch out for, Rashmi. जी बिल्कुल, आज उपचुनाव हो रहा है और चुनावी माहौल इस वक्त आप देख सकते हैं पूरी तरह से चुनावी रंग में रंग चुका है। गाम्बेगरे से हमने विजुअल्स दिखाए हैं, हमारे साथ रिपोर्टर्स भी लाइव जुड़ रहे हैं। हमारे चीफ ऑफ ब्यूरो अरिंदम दास गाम्बेगरे से जुड़ रहे हैं, वहीं धोलाई से हमारे जो सिलचर से हमारे संवाददाता विक्रम सरकार हमसे लाइव जुड़ रहे हैं। तस्वीरें भी लगातार आ रही है। विक्रम सरकार, आप अगर हमें सुन पा रहे हैं तो हम बता दें, हम आपसे जानना चाहते हैं कि फिलहाल किस तरह का चुनावी माहौल वहां पर है। जी हाँ रश्मि, सुप्रभात। बहुत ही सुंदर और सनी मॉर्निंग के साथ शुरू हुआ है। हम देख रहे हैं अभी जहां पे हम लोग खड़े हैं धोलाई के आयरोंगमारा क्षेत्र में, ये 115वां नंबर आयरोंगमारा प्राथमिक विद्यालय है, 118 नंबर आयरोंगमारा प्राथमिक विद्यालय है। और हम देख रहे हैं सुबह 6:30 बजे से ही लोग अपनी कतारों में लगना यहाँ पे शुरू हो गई है। और खास बात इस पोलिंग स्टेशन की यह है कि ये पूरी तरह से महिला परिचालित पोलिंग स्टेशन है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बुजुर्ग, बच्चे, न्यू टाइम वोटर्स और महिलाएं ये कतारों में आना शुरू हो गए हैं। ऑलरेडी 6:30 बजे से यहाँ पे कतारें शुरू हो गई थी, मॉक पोलिंग हो गई है। अभी देखना है कि कब यहाँ पे शुरू हो पोलिंग, क्योंकि आज जैसे कि हम जानते हैं रश्मि, दोनों ही जो उम्मीदवार हैं दोनों ही फर्स्ट टाइम कैंडिडेट हैं, कांग्रेस के, बीजेपी के। उनके साथ 6 और कैंडिडेट्स यहाँ पे हैं जो अपना भाग्य का खेल आज वो लोग खेलेंगे। और ये वोटर्स के हाथ में ही है कि वो किसको क्या करते हैं। लेकिन उत्साह आप देख सकते हैं, लोग सुबह से यहाँ पे खड़े हैं रश्मि। और यहाँ पे महिलाएं हैं, जैसे कि हमने पहले कहा, ये 3 पोलिंग स्टेशन है। कल जब जिला प्रशासन की तरफ से हमको बताया गया, मृदुल यादव जो कि डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर है, उन्होंने कहा कि कुल 3 पिंक पोलिंग स्टेशन और 3 मॉडल पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं धुलाई क्षेत्र में। 208 जो पोलिंग स्टेशन है उनमें से 155 ऐसे पोलिंग स्टेशन है जो वेबकास्टिंग के अंदर में है, ताकि सुचारू रूप से और सुंदर तरीके से ये पूरा जो मतदान की प्रक्रिया है वो चल सके। और आप देख सकते हैं यहाँ पे फिलहाल अभी तक मतदान शुरू नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे कतारों में लाइन में लगना शुरू हो गई है। जी विक्रम, काफी महिलाएं इस वक्त हमें दिख रही हैं, काफी महिलाएं इस वक्त हमको दिख रही हैं जो काफी उत्साह के साथ आज मतदान करने पहुंची। अगर आप उनसे बात कर सके।
पार्टी को पूरे रूप ले जा रहा है। जी हाँ, जैसे कि देख सकते हैं मतदान की प्रक्रिया है जो यहाँ पे शुरू हो गई है। महिलाओं से यहाँ पे बात करेंगे। दीदी कितनी एक्साइटेड है आप लोग मतदान करने को? আপনারা কি ভেবে এসেছেন আজকে? আমরা আইছি ভোট দেওয়ার লাগে আইছি। সকাল সকাল ঘরে কাজকর্ম সব সেরে এসেছেন? না সারে আছে। ओके, जैसे कि देख सकते हैं महिलाएं यहाँ पे हैं। आपसे जानना चाहेंगे क्या आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं? नहीं, यहाँ पर कितना टाइम है देने का? फोर्थ टाइम हो गया। फोर्थ टाइम। क्या सोच के आई हैं जब आप वोट डालते हैं तो क्या सोच के डालते हैं? कैसे बताऊं? कुछ ऐसे होते हैं, कोई मुद्दा है, रास्ते हैं, एम्प्लॉयमेंट है, क्या लेके आते हैं? कुछ नहीं बताऊं। ओके, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे महिलाएं हैं, कतारों में खड़े हैं। यहाँ पे पुरुष भी हैं, हम पुरुषों से पूछेंगे कि वो क्या, यहाँ पे एक बुजुर्ग आदमी है। तो दादा सुबह सुबह आए हैं वोट डालने, पहले मतदान फिर जलपान, ऐसा कुछ सीन है क्या? क्या सोच के आते हैं जब मतदान करते हैं? आप नहीं जानते? ओके, कुछ लोग हैं जो कहना नहीं चाहते हैं, सामने बोलना नहीं चाहते, लेकिन सबके दिल में एक ही उम्मीद है कि वो अपना मत का प्रयोग बहुत अच्छी तरीके से करे। रश्मि, लोग इस बार देखा जा रहा है कि लोग चुप हैं, कुछ खुल के बता नहीं रहे हैं, लेकिन अपना जो मत का प्रयोग है, जो उनका राइट है, वो डेफिनेटली उसे यहाँ पे करने आए हैं इस पोलिंग स्टेशन में, जो पिंक पोलिंग स्टेशन है। रश्मि जी बिल्कुल विक्रम, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो हम देख रहे हैं। पूरा बंदोबस्त हम जानना चाहेंगे आज किस तरह के बंदोबस्त है, खासकर सुरक्षा को लेकर, उपचुनाव है। सुरक्षा को लेकर काफी कड़ा व्यवस्था किया गया है। कल जो कछार के एसपी महोदय हैं, दुमान महतो, उन्होंने कहा है कि 3 लेयर्स में बटा हुआ है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे कहना बहुत लाजमी है रश्मि, क्योंकि धोलाई जो क्षेत्र है, कई एरिया ऐसे हैं जो मिजोरम से सटा हुआ है, बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है मिजोरम का। तो उस एरिया में भी जब हमसे बात कर रहे थे कल, उन्होंने कहा है कि उनके जो काउंटर पार्ट है, स्कॉलरशिप के जो डीसी एसपी है, उनसे भी बात हो चुकी है। वहाँ पे अच्छी सिक्योरिटी व्यवस्था की गई है, सर्वेलेंस की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। कई जगहों पे सीसीटीवी कैमरास लगाए हुए हैं और पुलिस बल जो है आप देख सकते हैं, पुलिस के बल है, सीसीटीवी के बटालियंस है, बाहर में सीआरपीएफ के बटालियंस भी हैं, वो खड़े हैं। हालांकि धोलाई बहुत ही शांत क्षेत्र है, काफी सुचारू रूप से यहाँ पे जो जितने भी मतदान प्रक्रिया हुई है आज तक, सब शांत रूप से और सुंदर रूप से हुई है। पर इसे नजर रखते हुए सिक्योरिटी व्यवस्था अगर की हम बात करें तो यहाँ पे पुलिस व्यवस्था अच्छी से की गई है, सीसीटीवी के बटालियंस है और ऑफिसर्स, हर एक पोलिंग स्टेशन पे ऑफिसर्स तैनात किए गए हैं। Yes, absolutely, Bikram. We can clearly see that quite a good arrangement has been made as far as the security arrangement is concerned. Tight security in place at the particular polling booth that you are in. Let me now go across once again to Bongaigaon, where my colleague Arindam Das is joining us live to bring us all the latest updates. Arindam, very good morning to you. Tell us where you are at right now and what is the mood like there. How is the enthusiasm among the voters, Arindam? Right now I'm at Dedengre Secondary School in Bongaigaon constituency, and this is in West Garo Hills, and you can see the early morning trend. People in large number have already queued up to cast their votes. We have seen people of all ages coming here to cast their votes. Some have come with their infants. Elderly people are here to cast their votes. So early morning trend shows that it's going to be high turnout today here in Bongaigaon, and around 33,000 voters will cast their votes to decide the fate of 8 candidates in Bongaigaon constituency. Of course, the main contest will be a 4-cornered fight. It is between the Congress, TMC, NPP and the Bharatiya Janata Party. And this is going to be a prestige fight for all the parties who have fielded their candidates, particularly speaking of the NPP, because NPP has fielded the wife of Chief Minister Conrad Sangma, Mehtab Chandi, as the candidate for the Bongaigaon constituency. On the other hand, TMC has fielded the sister-in-law of former Chief Minister of Meghalaya and the leader of opposition, TMC leader Dr. Mukul Sangma. On the other hand, if we talk about the Bharatiya Janata Party, they have also fielded the vice president of the state as well as the
member of the Garo Hills Autonomous District Council, Bernard Marak, and on the other hand, if we talk about the Congress party, they have fielded Jinjang Sangma. So that's how this is going to be a four-corner fight in the Gambagre constituency. And as I've said, that around 33,000 voters will cast their votes to decide the fate of 8 candidates. And early morning trend shows that it's going to be high voter turnout. Around 33,000 voters will cast their votes. There are 51 polling stations in Gambagre constituency and over 500 personnel, both polling agents as well as security personnel, have been deployed for a free and fair election. So there you can see a lady coming out, flashing her finger, showing that she has cast her vote. So you can see that in large number people have come out to cast their votes. So these are the credentials, the documents that they are carrying to cast their votes. I'll ask one of the voters to show what she has brought. Okay, she has brought this the ECI card. Then that's the voter ID card she has brought to cast her vote. So she'll be going inside to cast her votes. And there you can see these are the agents who are ensuring that the right person or the person who have the credentials can only cast their votes. So these are the polling agents. And after going through this phase, they go to the polling officials. There they again verify the credentials. Then her or his finger is inked with that indelible ink, and then they cast their vote through that EVM machine. So the voting is taking place through electronic voting machines. And as I've said, that early morning people have queued in large number. We have been here since 6 a.m. in the morning, and we have seen people lining up since 6:30 in the morning. So there you can make out the mood here. People in large number have turned up to cast their votes, and looking at this trend, we can say that it's going to be high voter turnout here in the Gambagre by-elections. Ronak. Absolutely. And Arindam, we're talking about the contest in Gambagre itself. This is one of the seats that is going to Bypolls today, where there are two high profile candidates. One of course is the NPP's Mehtab Chandi Sangma, as well as the BJP's Bernard Marak. But at the same time, if we talk about the TMC and the Congress, they too might come out as the dark horse. So it's a multi-cornered contest where none of the candidates can be ruled out, and the result could be something very, very interesting, isn't it, Arindam? And we also saw a lot of campaigning back and forth between Mukul Sangma, the former Chief Minister, as well as the incumbent Chief Minister Conrad Sangma, Arindam. Well, Ronak, talking about the Gambagre constituency, we can only say that it's going to be a quadrangular fight between the Congress, BJP, TMC and the NPP because they have fielded high-profile candidates for this election. If we speak about the NPP has fielded the wife of Chief Minister and NPP National President Conrad Sangma. She is Mehtab Chandi. She is a high-profile candidate. On the other hand, if we talk about the TMC, it's the sister-in-law of former Chief Minister of Meghalaya and leader of opposition, TMC leader Dr. Mukul Sangma. On the other hand, if we talk about the Bharatiya Janata Party, it's Bernard Marak, who is the state vice president of the Bharatiya Janata Party. And on the other hand, Congress has also fielded a strong candidate, Jinjang Sangma. So this Gambagre constituency has always remained a stronghold of the Congress party. Particularly, it has remained a stronghold of Saleng Sangma because he had won multiple times from this constituency. He has won as an independent candidate. He has won as a Congress candidate. He has won as an NCP candidate, and he has also won as independent. So basically this is a stronghold of Saleng Sangma. So will there be any change this time? That needs to be seen in time. But yes, as I have said, that the voter size here in Gambagre constituency is around 33,000 votes, and looking at the fight, it's going to be a quadrangular fight. So it's going to be a vote division in these four parties, and of course the independents will also pool some votes. So the margin of winning will be very less. Some predict that it's going to be as less as 500, that the winning candidate will be having the last laugh in this election. So as I have said, that the voter size is 33,000. So the margin of winning. जी ठीक है अरिंदम और विक्रम, आप लगातार बने रहिए, आपके पास वापस हम लौटेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।
like the inverted image? Get the real picture. বাটাকৰ নতুন গোলমাল স্যার আলু পৰঠাত মাখন কেনেকৈ খানে নিমখীয়া বিস্কুটত বাটাৰী চমৎকাৰ নতুন ব্ৰিটানিয়া 50-50 গোলমাল টপ বাটাৰী বাইটছ মোৰ দেউতাই মানে কি ইনে গাঁৱতে গুনগুনাই থাকে কেতিয়াবা ষ্টুডিঅ'ত সোমাবৰ কাৰণে ভয় লাগে মুৰছাল যেন কবিতা কাৰণ ইয়াৰ চিৰসংগী ইটালিয়ান অলিভ অইল আৰু ভেষজৰ গুণেৰে সমৃদ্ধ জেক অলিভ অইল বডি অইল কবিতাৰ দৰে চালে জগাই তোলে মনত নতুন সুৰ News to keep you ahead. Evening Prime, every day at 7 p.m. Don't like the inverted image? Get the real picture. नए तेवर नए कलेवर के साथ आपके भरोसेमंद चैनल नॉर्थ ईस्ट लाइव पर देखिए रोजाना इस वक्त 11 से 11:30 और सुर्खियां दोपहर 12 से 12:30 बजे तक। News to keep you ahead. Evening Prime, every day at Welcome back, viewers, to this special broadcast of Voting Day live across 5 assembly constituencies in Assam and 1 constituency in Meghalaya. I'm being joined right now in the studio by my colleague Rashmi, and we also have our correspondents who are standing on the ground to bring us all the latest details. But before we go across to them, Rashmi, you know, this is something that we've been witnessing before as well. Voting got underway at 7 a.m. but even before that, we just saw there was a huge line of voters who were already waiting in line to cast their votes. So that just goes to show that, you know, across the constituencies that are going to Bypolls today, there is a lot of enthusiasm amongst the people. We saw in Bongaigaon there were a lot of female voters as well. We saw in Dholai there was a huge line of people who are already in line. So what do you make of that, Rashmi? बिल्कुल लोगों में उत्साह है, उपचुनाव है, उसके बाद भी उत्साह जो है वो जबरदस्त है। यही दर्शाता है जिस तरह से कतारें वहां खड़ी है। असम की अगर मैं बात करूं 5 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, लेकिन रौनक दिलचस्प है इस बार बिहाली और खासकर सामागुड़ी को लेकर, जहां सामागुड़ी में इन दिनों काफी हिंसा देखने को मिली। बिहाली में जहां सभी अंत ही अंत है, कोई आदि नहीं है। वही बोंगाईगांव भी इस बार काफी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि यहां पर फणीभूषण चौधरी की पत्नी दीप्ति मोई चौधरी इस वक्त मैदान में हैं। तो ऐसे में काफ़ी इंटरेस्टिंग है असम का जो ये 5 विधानसभा चुनाव के तहत जो उपचुनाव कराए जा रहे हैं ऐसे में। और ये तस्वीरें इस वक्त आ रही है सामागुड़ी से तस्वीरें सामने आई हैं। डिप्लू रंजन शर्मा यहाँ भाजपा से कैंडिडेट है, जबकि उनका मुकाबला रकीबुल हुसैन के बेटे तंजील हुसैन से है, जो कांग्रेस से
कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। रौनक जी बिल्कुल रश्मि, so that is what we have been talking about. The two constituencies in Assam that are in focus, of course, are one Samuguri, which of course you are seeing the live visuals on your screen at this point in time, and of course Bihali as well. These are two constituencies, very key constituencies, and very interesting contest going on across these two constituencies. If we talk about Samuguri, you know, it has been making the headlines for all the wrong reasons in the run-up to the bypolls. A number of incidents of violence that had taken place in Samuguri, also leading to the death of one person. In fact, you know, a spate of violence incidents that had rocked Samuguri. So needless to say, security will be very tight as far as the polling stations in Samuguri is concerned. But nevertheless, let's just hope that the polling day goes by smoothly without any untoward incidents taking place across any constituency. And right now what you're seeing are the first visuals, viewers, coming from the Samuguri constituency. Here too we can see quite a healthy turnout of voters already in the early hours of the morning today. We expect the numbers to go up as the day progresses, and of course it's a very heartening sign to see that despite the spate of violence that you know, erupted in Samuguri in the run up to the polls, that has not discouraged the voters from coming out and casting their votes in large numbers. A lot of people already lined up as far as Samuguri is concerned, a number of female voters also standing in queue as well. So that these are very healthy signs, isn't it, Rashmi? बिल्कुल, ये बहुत ही एक जो है आकर्षक, एक उत्साहवर्धक इस वक्त तस्वीरें सामने आई हैं, क्योंकि जिस तरह की चुनाव पूर्व हिंसा यहाँ हुई सामागुड़ी में जिस तरह की चुनाव पूर्व हिंसा हुई, वार पलटवार हुए, भाजपा कांग्रेस पर आरोप लगाती रही, कांग्रेस भाजपा पर आरोप लगाती रही, और जिस तरह की गतिविधियां, जिस तरह का एक नाटकीय दृश्य वहां उत्पन्न हुआ चुनाव से ठीक पहले, ऐसे में कई सवाल उठ रहे थे कि क्या वोटिंग के दिन क्या होगा। तो ऐसे में सुरक्षा भी वहां कड़ी है। रकीबुल हुसैन के बेटे तंजील हुसैन यहां कांग्रेस से मैदान में हैं, और कुछ दिनों में हमने देखा रकीबुल को गो बैक के नारे वहां सुनने को मिले, कांग्रेस को गो बैक के नारे वहां सुनने को मिले। अल्पसंख्यक वोटों का विभाजन इस बार दिख रहा है। Ji bilkul Rashmi, and now we are also getting the first visuals coming in from Bihali as well, viewers. So these are live visuals coming in from Bihali, the first visuals of voting which is underway in the Bihali constituency in Assam. Of course, another place where there is already a huge line of people already waiting to cast their votes. There, of course, you can see the name of the polling station, that is the Chilaharan LP School East part. That is the name of the polling booth from where these visuals are coming in at this point in time, viewers. Early morning visuals straight from Bihali. That is another place where there is a very interesting contest going on, where of course the name of Deepti Moy Chaudhary, the AGP candidate, of course also the wife of 8-time MLA Fani Bhushan Chaudhary, is in the fray. And on that note, viewers, Tezpur MP Ranjit Datta has just cast his vote for the Bihali constituency. One of the first politicians who is also one of the early morning voters today, viewers. Ranjit Datta of the BJP has just cast his vote for the Bihali constituency. That is him. सांसद रंजीत दत्ता ने पहला वोट डाल दिया है, पहला राजनेता है जिन्होंने वोट कर दिया है बिहाली सीट से। ये तस्वीरें सामने आई हैं। भाजपा से दिगंत खटवार, जयंत बोरा, कांग्रेस से लक्ष्मीकांत कुर्मे इस वक्त मैदान में हैं। Yes, indeed, viewers. So that is on your screens, the visuals coming in of people flashing their indelible ink on their fingers right after having come out after casting their votes. So that is visual coming in from Bihali, and from what we've been given to understand, that Tezpur MP Ranjit Datta has cast his vote in Bihali today. He also spoke to the media right after casting his votes. Let's listen in to what he said. মই 2001 চনৰ পৰা মই যেতিয়া বিধায়ক হৈছিলোঁ তেতিয়াই মই বেলেটত প্ৰথম আমাৰ বেলেট আছিল, আৰু মই পুৰণা ঘৰৰ পুৰণা মোৰ জন্মস্থানত দিছিলোঁ। আৰু তাৰপিছত যে 2006 চনৰ পৰা এইটো চেণ্টাৰতে মই প্ৰথম ভোটটো মই দি আহিছোঁ, আৰু নিজৰ ভোটে নিজেই মই দিছিলোঁ। কিন্তু আজি মই আমাৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী হৈ ভোট দিবলৈ আহিছোঁ। গতিকে প্ৰাৰ্থীগৰাকী আমি বিজয়ী হ'ব, বিপুল ভোটত ইয়াৰ পৰা বিজয়ী হ'ব। ভাল দেখিছে আপুনি, ৰাতিপুৱা 7টা বজাতে লাইন লাগিছে, 7টা বজাত আহিবতেই মানুহে ইয়াত লাইনত হৈছে। গতিকে মানুহে ভোট দিবলৈ আহিব, আৰু মই বিহালী আপোনালোকৰ জৰিয়তে মই বিহালীবাসী ৰাইজক, যিসকল ভোটদাতা আছে, ভোটদাতা ৰাইজক মই এইটোৱে অনুৰোধ কৰিম যে সকলোৱে নিজৰ ভোট সাব্যস্ত কৰক, আৰু গণতন্ত্ৰৰ এখন সুস্থিৰ গণতন্ত্ৰৰ বাবে। এইটো পাৰ্চেণ্টেজ আগতেতো আপোনাৰ 83, 84, 85% হয় আমাৰ ইয়াত। আপোনালোকে আগৰ ইলেকশ্যনবিলাক চাব, কিন্তু এইবাৰ
যেহেতু উপনিৰ্বাচন বহুতো লোক বাহিৰত কৰ্মৰত অৱস্থাত আছে সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ 75-ৰ পৰা 80% ভোট পোল হ'ব ইয়াত বিয়ালি সমষ্টিত মই এটা অনুমান কৰিছোঁ এই ভোটাৰে উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত আমাৰ পাৰ্টিক ইয়াৰ পৰা বিজয়ী কৰিব বিয়ালি ভোটাৰে 1.5 বছৰত আমাৰ বিয়ালি সমষ্টিত উন্নয়ন হ'ব লাগে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যিটো ইয়াত ঘোষণা কৰিলে ইয়াত আমাৰ ৰাজ্য বিহালী ৰাজ্যক কথা দিলে আৰু সেইমতে বিহালী সমষ্টিৰ ৰাইজে যিটো ভুল কেতিয়াও নকৰে বিহালী সমষ্টিৰ ৰাইজে এইবাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি দিগন্ত ঘাটক বিপুল ভোটত ইয়াৰ পৰা বিজয়ী কৰাব All right, so that was the first reaction coming in from Tezpur MP Ranjit Datta right after casting his vote. Now, Rashmi, let's also once again talk about Samuguri because that is a place where, there's a lot to talk about, to be very honest, because the spate of violence that we saw in the run-up to the Bypolls today, that really raised a lot of concerns, a lot of apprehensions that, that is going to affect the turnout come voting day. But fortunately, that does not seem to be the case at all. We are seeing the visuals coming in from Samuguri right now on our screens, and that really tells a whole other story. This does not look like a place that has witnessed a spate of violence in the last few days because a healthy turnout of voters can be seen already. It's not even 8 o'clock, it's just past 7:30 now, so there's already quite a number of people who are lined up outside the polling stations. Indeed, a very heartening sign to see that despite the violence, people know what are their priorities. Casting their vote, exercising their franchise is something that even violence cannot deter them from doing so. Rashmi, रौनक, जिस तरह से चुनावपूर्ण हिंसा यहाँ हुई सामागुड़ी की जो सीट है वो बात करने लायक जरूर है क्योंकि जिस तरह की हिंसा हुई उसको देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल था कि इतनी बड़ी संख्या में लोग सामने आएंगे, मतदान करेंगे। उत्साहवर्धक ये तस्वीरें जो है वो सामागुड़ी से सामने आई है। रौनक, 12 कैंडिडेट है, सबसे ज्यादा 12 कैंडिडेट सामागुड़ी से चुनाव लड़ रहे हैं और जो खास मुकाबला, जो कड़ी टक्कर है वो भाजपा और कांग्रेस के बीच यहाँ पे है। डिप्लू रंजन शर्मा को भाजपा ने मैदान में उतारा जबकि रकीबुल हुसैन के बेटे तंजील हुसैन मैदान में है। हालांकि कांग्रेस को गो बैक के नारे यहां सुनने को मिले हैं। अल्पसंख्यक वोटर्स, इस बीच कई तस्वीरें, जब चुनाव से पहले हमने कई तस्वीरें दिखाई थी जहां अल्पसंख्यक वोटर्स जो थे वो कह रहे थे कि अब हम सिर्फ वोट बैंक बनकर नहीं रहना चाहते हैं, अब हमें विकास चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक परिवर्तन जो है वो नजर आने लगा था। ऐसे में अब बहुत ही दिलचस्प हो गया यह सामागुड़ी सीट। देखना होगा कि क्या जनादेश आता है, 23 को ही पता चल पाएगा। लेकिन लोगों का जिस तरह का इस वक्त हुजूम वहां उमड़ा है उसे देखकर ये काफी उत्साहवर्धक जो तस्वीरें हैं वो साबित हो रही है क्योंकि चुनावपूर्ण हिंसा के बाद जिस तरह सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे थे उस सब बाधाओं को पार करते हुए लोग बड़ी संख्या में निकले हैं, कतारों में खड़े हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। चुनाव इस वक्त वहां चल रहा है। जी बिल्कुल रश्मि, and as you rightly pointed out, Samuguri is witnessing a direct fight between the two rivals BJP and opposition Congress. The BJP of course has pitted Diplu Ranjan Sharma against of course Tanzil Hussain, who is none other than the son of Rakibul Hussain, the Dubri MP. So indeed a very interesting contest, and the spate of violence we saw before in the last few days that actually raised a lot of concerns. But despite that, since we are seeing a very healthy turnout of voters, let's hope that the security arrangements are also adequate enough to make sure that these people are not disappointed and everything goes off smoothly. Pre-poll violence is one thing, but violence on polling day is something that should not happen at all, and hopefully the security arrangements are absolutely tight and adequate to prevent any sort of those things from happening. जी रौनक, लेकिन अगर आपने ध्यान दिया होगा तो इस बार जो भाजपा जिस तरह से हमेशा से परिवारवाद के खिलाफ रही है, लेकिन इस बार अगर देखें तो इस बार वंशवाद जो है वो असम के इस चुनाव में दिख रहा है। असम की जो बरपेटा लोकसभा सीट है वहां से सांसद फणिभूषण चौधरी की पत्नी दीप्ति मोई बोंगाईगांव से एजीपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही है। दूसरी तरफ विधानसभा में मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने सामुगुड़ी सीट से तंजील को प्रत्याशी बनाया है। तंजील धुबरी के सांसद रकीबुल हुसैन के बेटे हैं। बोंगाईगांव और सामागुड़ी के अलावा धोलाई, सिडली और बिहाली में भी विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं और सभी सीट पर मतदान किया जा रहा है। कांग्रेस 5 सीटों पर ताल ठोक रही है जबकि भाजपा ने 3 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं। एक सीट पर भाजपा के सहयोगी दल यानी एजीपी और यूपीपीएल के प्रत्याशी आज चुनाव लड़ रहे हैं।
Absolutely, and Rashmi, once again, coming back to what we were discussing regarding Samuguri, let me also remind our viewers on that note, the Nagaon DC and SP were transferred by the Election Commission in the wake of the violence that took place in the run-up to the bypolls in Samuguri. So, as I was just saying, that just goes to show that, there has been a lot going on in the Samuguri constituency in the run-up to the bypolls. Not only did it witness a spate of violence, in the wake of that violence, the DC and SP were also transferred in order to ensure that nothing of that sort transpires when polling day comes, and that is today. So hopefully these measures that have been taken, coupled with the security arrangements, will ensure that Samuguri witnesses a peaceful polling day. जी बिल्कुल, सामागुड़ी में जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं काफ़ी उत्साहवर्धक है। 3 पीढ़ियाँ, रकीबुल हुसैन की 3 पीढ़ियाँ इस चुनाव में रही है। इस बार रकीबुल हुसैन के बेटे तंजील हुसैन चुनाव लड़ रहे हैं। उससे पहले रकीबुल, ये जो 3 पीढ़ियाँ इस वक्त सामागुड़ी में चल रही है, और वंशवाद, जिस तरह से परिवारवाद बाकी मैं बात कर रही थी कि परिवारों का जो राजनीतिक परिवार है वो एक के बाद एक चुनावी मैदान में है। तंजील हुसैन इस वक्त चुनावी मैदान में है। And it's also very interesting, the Samuguri contest, viewers, because this is the first time in Assam that 2 third-generation politicians have been fielded by the two parties, the BJP and the Congress. Of course, both of them are first-time candidates, first time that they are taking part in elections. So that makes the contest in Samuguri all the more intriguing, all the more interesting. These are two parties that the voters, it remains to be seen whom does the voters actually go and cast their votes for. And of course, at the same time, in the run up to the Samuguri elections, there were a lot of charges of nepotism and dynastic politics that were leveled against the Congress by the BJP as well, accusing the Dubri MP Raqibul Hussain of indulging in nepotism and dynastic politics, having fielded Tanzil Hussain from the Samuguri seat. So there were a lot of accusations that had been made back and forth. At the same time, they are both first time candidates, and of course before that we had the Congress's Gaurav Gogoi, who was a second generation politician. But now this time it's up to the newcomers, it's up to the first time candidates in the form of Tanzil Hussain and of course the BJP candidate Diplu Ranjan Sharma, both of whom are in the fray. We saw how they had gone door to door in Samuguri, campaigning to reach out to every last voter, telling them what are their plans for the constituency, how do they plan to develop the constituency further. And now it is just up to the voters to decide with whom they repose their fate as far as Samuguri is concerned, isn't it, Rashmi? बिल्कुल रौनक है। तो 3 पीढ़ियां हैं यहाँ पर, रकीबुल हुसैन के बेटे तंजील हुसैन, और उससे पहले रकीबुल हुसैन के पिता भी चुनावी मैदान में थे। तंजील हुसैन इस वक्त All right, so there is just one small correction that I would like to make here, viewers. So Raqibul Hussein's son Tanzil Hussain is a third generation politician and also a first time candidate taking part in his first elections. This time, of course, it's the debut of Tanzil Hussain. It remains to be seen how the Dubri MP's son performs in his first outing, the first election that he is contesting. Of course, he will not have it easy because the BJP's Diplu Ranjan Sharma also exuded confidence of a big victory for himself as well as the Saffron Party in the run-up to the polls. So, a lot at stake for both the BJP and Congress in Samuguri. ठीक है रौनक, इस वक्त अभिदीप हमसे जुड़ रहे हैं बोंगाईगांव से, हमारे संवाददाता अभिजीत चौधरी हमसे जुड़ रहे हैं। अभिजीत, किस तरह का चुनावी माहौल वहां पर है? सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हुई है। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूं बिडझोरा हाई सेकेंडरी स्कूल जो कि बोंगाईगांव शहर के बीचों बीच स्थित है, और देयर इज अ स्ट्राइकिंग डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज हैपनिंग इन सामोगुरी and what we witnessed in Bongaigaon. Bongaigaon is a peaceful town, is a city of peace. So during the campaigning hours also we didn't see any act of violence by any party or the independent candidates. And today also we are not expecting any sort of violence in 32 Bongaigaon LAC. Here you can see we are at a polling station where the AGP, BJP, UPPL
alliance candidate Dipti Chaudhary will be coming after a short while, and she will be casting her vote, and we are just waiting here for her. And for the viewers of Northeast Live, I would like to inform that there are around 240 polling stations, out of which 11 has been counted as sensitive, and 8 candidates are in fray. 8 candidates in altogether are in fray, of which one is from AGP, and the other one, Brajendra Singh, the retired IPS officer, he is from Congress, and there are other 6 candidates who are in fray, who are independent. Here you can see inside the polling station of this Birjhora High Secondary Girls School, where there is, we have not witnessed a long queue yet. There is a few voters who have come in the wee hours today. They have queued from 7, but we are expecting that after, as it has been declared a local holiday today, so we are expecting that after around 11 and 12 there would be some crowd in the polling station, and people will be coming out to cast their vote. As we have got some information from some village areas, polling station of rural areas, there are long queues, because in rural areas, what people believe, what the voters believe, that they will finish off with their voting process in the early morning hours, and then they can shift to their day-to-day course, day-to-day work. They can go to their field and for other household works. But in the city, in the town, the picture is a bit different. Here you can see this is a very important polling station amidst the town. It is in between the town of Bongaigaon. But here you can see there are only a few voters at this hour. It's around 8 now, but there is around, we have seen around 20 to 25 voters still now who have casted their vote. And here again I want to say that we are waiting, all the journalist fraternity people are here waiting for the AGP UPPL BJP alliance candidate Dipti Chaudhary to come here and cast her vote. And what I want to repeat once again, that during the campaigning time also, it was again a very peaceful campaigning. So there are a few young voters who, with whom I want to interact. Excuse me. Not at all. No, it's not a problem. This is your first time, or for how many years? Can you see towards the camera, please? The third time. Your third time. Yeah. So how you see the whole process of voting in Bongaigaon? It's good. Like I skipped one because I don't stay over here. It's a smooth process, I would say. Nothing else. How you are expecting the candidate you will be voting for, he or she will be winning? I hope. And with whom you have come today? My mother. Okay. Okay, here is a young voter who has come in the early morning hours. She says that because of studies and all, she doesn't stay at Bongaigaon. But for the voting, she is here with her mother. Her mother is with us. Let me ask her, you come in the early hours today. How do you feel to come in the early hours? And the weather is very good today here, and you have come out with your family. Yeah. Say something to us. No, it's running smoothly. I hope everything will be fine. It has been seen that Bongaigaon by and large is peaceful during the campaigning also, and today also we are hoping that everything will be peaceful. How you see this? Yeah, everything just started. It is just started. I think everything will be fine. Everything will go smoothly. That's all. Thank you very much. Here, these are the happy voters of Bongaigaon who have come to cast their vote in this Birjhora Girls High Secondary School. And you can see there are few forces, people of the CPMF, people from the CRPF who have been deployed here along with the Assam police personnel for the security of this booth of this polling station. And I want to repeat, yesterday at around 12 or 1, the distribution of all the EVM machines and distribution of all the papers related to the voting, relating to the voting process today was distributed from the Bongaigaon University campus. And today at around 5, the whole process will end along with other 4 constituencies of Assam here in Bongaigaon. बहुत बहुत धन्यवाद। जो तस्वीरें आपने हमको दिखाई, सिडली विधानसभा सीट पर भी आज उपचुनाव कराए जा रहे हैं, और यहाँ जो मुख्य मुकाबला है वो यूपीपीएल और बीपीएफ के बीच ही होने की उम्मीद की जा रही है। हमारे सहयोगी मिजिंग हमसे जुड़ चुके हैं इस वक्त। मिजिंग, किस तरह का चुनावी माहौल है, कौन से केंद्र पर आप उपस्थित हैं और चुनाव कैसा चल रहा है वहां पर?
यहाँ पे जो है कि काफ़ी चुनाव चर्चित है, ये जो समष्टि है और काफ़ी जो जनसंख्या यहाँ पे आसाम के जो पास विधानसभा के जो उपचुनाव हो रहा है वहाँ से जो सभी से जो मेजोरिटी वाला वोटर्स यहाँ पे है। टोटल यहाँ पे 2,17,200 से ज़्यादा वोटर्स है और यहाँ पे मेल जो वोटर्स है वो 1,60,000 है और फीमेल वोटर 1,09,000 है। और फिलहाल इस वक्त हमारा साथ है जो पहले हम बीपीएफ के कैंडिडेट यहाँ पे अपना खुद का जो मतदान वोट दे चुका है, हम बात करने की कोशिश करेंगे बीपीएफ के कैंडिडेट सुद्ध कुमार बसुमतारी से। ভোটদান কৰিছে কি ক'ব প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া? হয়, আজি মই ইটস এ গ্ৰেট ফিলিং ফৰ মি। আজি মই নিজৰ কাৰণে নিজে ভোট দিছোঁ। এইটো মোৰ হোম ভিলেজ হয়, এইটো মোৰ চেণ্টাৰ হয়। তো আৰু মই ৰাইজক আহ্বান কৰিছোঁ সকলোৱে ওলাই আহিব লাগে। মুডটো ভাল দেখিছোঁ আজি সকলোৰে, বতৰো ভাল, চবেই আহিব যেন লাগিছে। চবৰ মূল্যৱান ভোট যাতে নষ্ট নকৰে, নিজৰ নিজৰ মানে পচন্দৰ কেণ্ডিডেটক তেওঁলোকে যাতে বাছনি কৰে। আজি প্ৰাৰ্থীসকলে দেখা যায় পৰিয়াল লৈ আহে, আপুনি আজি অকলে আহিছে? হ্যাঁ, পৰিয়াল আহিব, অলপ পিছত আহিব, অলপ পিছত আহিব। আজিৰ দিনত কি কি কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে? বিশেষ তেনেকুৱা নাই, মই চেণ্টাৰে চেণ্টাৰে ঘূৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম, অলপ খবৰ ল'ম। বহুত ডাঙৰ এৰিয়া, হিউজ এৰিয়া, মানে এৰিয়াবিলাকো অলপ হেৰি হৈ আছেতো, বেকৱাৰ্ড হৈ আছে। সিডলি সমষ্টিত পুৰুষতকৈ ভোটাৰ মহিলাৰ সংখ্যাটো বেছি, কি ক'ব তেওঁলোকৰ? হ্যাঁ, এইটো আছে, সেইটোৱে আছে, এইটো ভাল। মহিলাবিলাকে বেছি ভালকে ডিচিশ্যন ল'ব পাৰে, এটা আৰু বেছি ভাল। কিমান আশাবাদী আপুনি আজি এই প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে নিজে নিজকে ভোটদান কৰাৰ পিছত? জিকাৰ কাৰণে আজি ক'ব লাগিব নেকি এইটো? নাই নাই নাই, আজি নকয় ভাল। আপোনালোকে ৰখক, 23 নৱেম্বৰত কাউণ্টিং হ'ব, সেইদিনাখন ৰিজাল্টটো পাই যাব। You have to wait for the counting day. It's on 23rd. So let's wait for the counting. What is your Today I'm planning to visit all the centers if possible. If not all, I'll visit maximum number of polling centers. ये जो समष्टि है, इसमें जो 5 समष्टि असम में चुनाव होने जा रहा है, ये सबसे बड़ा समष्टि माना जाता है। सबसे ज्यादा वोटर्स यहाँ पे है और फीमेल कैंडिडेट, फीमेल वोटर्स भी यहाँ जाता है। क्या कहेंगे इसके बारे में? हाँ, दिस इज बेटर। मतलब लेडीज कैन डिसाइड प्रॉपरली and they always maintain their families, so I believe they can maintain their LAC also in a proper way. মানে কি কম, এইটো সংবিধানিক যিটো অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰা তেওঁলোকে বেছি গুৰুত্ব ল'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। बहुत दिन से आप जो कैंपेनिंग में था, आज जो वोट भी दिया है आपने, आज मतदान का दिन है, कैसा लगा आपको इतना दिन कैंपेनिंग के बाद आज का जो ये नतीजा निकलने जा रहा है, आज सभी वोट देंगे, कैसा लगा? हाँ, it's a great feeling for me because I'm exercising my voting power for self, so it's a great feeling. আৰু মই ভাবিছোঁ ৰাইজে ওলাই আহিব, বতৰো ভাল, it's a lovely weather, চবে ভাল মুডত আছে, so ওলাই আহিব and I believe maximum percentage আজি ভোটদান হ'ব। সেইটো এতিয়া কোৱাটো ঠিক নহ'ব। লেটছ ৱেইট ফৰ দ্য কাউণ্টিং ডে, ইটছ অন 23rd। 23 तारीख আপোনালোকে ৰিজাল্টটো পাই যাব। थैंक यू। सो यहाँ पे हमने जो सुद्ध कुमार बसुमतारी बीपीएफ का कैंडिडेट है, उनसे हमने बात किया है यहाँ पे। जी, अमेजिंग। एक दिलचस्प बात यहाँ पे और है कि कांग्रेस ने जो उम्मीदवार उतारा है इस बार सिडली से 20 साल से अधिक समय हो गया जब सिडली से कोई उम्मीदवार कांग्रेस ने नहीं उतारा था, और इस बार मैदान में है। तो 2026 की क्या रणनीति है? देखिए, कांग्रेस का यहाँ पे 20 साल से यहाँ पे कैंडिडेट नहीं था इस कॉन्स्टिट्यूंसी में। पहले कांग्रेस का ही यहाँ पे 20 साल पहले कांग्रेस का ही यहाँ पे जो एमएलए हुआ करता था, अभी 20 साल से जो ज्यादा हो गया है यहाँ पे जो कैंडिडेट नहीं था। और इस बार जो बाई इलेक्शन में कैंडिडेट दिया है, कांग्रेस भी जो काफी जो यहाँ पे फाइट में हिस्सा है, जो ट्रायंगुलर फाइट होगा यहाँ पे बीपीएफ, यूपीपीएल, एनडीए की तरफ से जो यूपीपीएल लड़ा है और कांग्रेस, तीनों पार्टियों के बीच में जो ट्रायंगुलर फाइट है उसको देखने को मिलेगा।
बिल्कुल मिजिंग काफ़ी दिलचस्प चुनाव हो रहा है और जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है काफ़ी उत्साहजनक है रौनक। जी बिल्कुल रश्मि, so that is how things are going on as far as the Sidli assembly seat is concerned. Now let's once again go back to Gambegre where my colleague Biplab Dey is joining us live from outside the polling station to bring us the mood over there. Biplab, so very good morning to you and to all the voters of the Gambegre bypoll of the Gambegre constituency. Tell us what is the mood like over there, where are you right now and how is the turnout so far this morning? Since early morning, since actually 6:30 in the morning, there have been people lining up in various polling stations. We've had a robust polling till now. The first few votes have already been cast. We're expecting a very high turnout because Gambegre historically has been high turnout constituency. Right, absolutely. And Biplab, we can see clearly that we also have along with you a number of the people who have come out to cast their vote. So if they would at all like to express themselves about how they are feeling this morning, what are the issues that they are counting on to be addressed as far as this election is concerned, then you know, we're all ears. If they want to say anything, then please go ahead. We have a senior citizen who's just voted and she just cast a vote and come out. Let me see if we can speak to her. Ambi naso kana mining men vote khayenga yan. Ma mining men vote khayenga naso. Tisi khana na kharu ta. Vote khana na kharu ma. Naso na de ino de my problem ra hui na. Ma mai ningi kani ka to maninga naso. Ningi ku ma mak jong ma ja khurong ma. Di ba sama kapung tu kacau ni punah. Tahu na. Oh de. Tahu na punung jok. Acha. Makrom jong ja khurong ma. Ja. De, betul lah. Ya election ada naso kana management vote onega hukum. Management vote onega ni yade dode mijam amang saling sangma center chiang jo yani gisiapon dode singde mele dong jejo dode by election ong inga singode naimna singade dao option da kemung chade development ko nanga sungku noko chinanga nigi school nok nanga rama jalang nanga yerang ko thari nagta chade do vote ninga namga be candidate ko select kana gata Dem itulah deh. Jom, napa bisa kan? Hai, haram. Why are you voting? Sengade daud ni je yang pas barango, je sini na sitting MLA dong asam. Wada adani seat ko waktu mana, je central member of parliament unatri ang ha. Dem sengade daud sini ya lokalo MLA dong jana tong jahani kemat sengade daud. Ketal MLA ko selawat sengade daud vote ko enga. Nasung ni ya constituency my problem rang ro ngai na. Atu pede changde problem de bangal banga deba ko ek alaman saba. Ya ram ko change khana sa nasung totong khake. Thowe. As we just heard from point of view of these voters, most are actually voting to get change or change the situation that they are currently faced with. This Gambegre bypoll has been necessitated because Saleng Sangma actually won the MP election and thereby a bypoll was announced. And today the 13th of November we're having the polls, and on the 23rd of course the results will be out. We've been through a lot of places in Gambegre. Most people have reported that issues are very, very vast and has actually been one of the most neglected areas. And whether it's due to the sitting MLA being from the opposition, that actually is really currently we aren't really sure as to whether that can really be considered a reason. Other than that, we've had issues with roads. Gambegre road connectivity is absolutely pathetic. Livelihood issues also have been highlighted. People have very few avenues for livelihood. These are generally the main issues that have been picked up by voters, and that's what they'll be voting for.
All right, so Biplab, that is of course the scenario as far as Kambigri is concerned at this point in time. A number of issues that the people of the constituency would like to see addressed by the next candidate, whoever turns out victorious. We'll slip into a very short break here, viewers. Don't go anywhere, and I would request our correspondents on the ground to also do the same. Don't go anywhere, viewers. We'll be right back with all the live updates. Stay tuned. Don't like the inverted image? Get the real picture. বাটাকৰ নতুন গোলমাল স্যাৰ আলু পৰঠাত মাখন কেনেকৈ খানে নিমখীয়া বিস্কুটত বাটাৰী চমৎকাৰ নতুন ব্ৰিটানিয়া 50-50 গোলমাল টপ বাটাৰী বাইটছ মোৰ দেউতাই মানে কি ইনে গাঁৱতে গুনগুনাই থাকে কেতিয়াবা ষ্টুডিঅ'ত সোমাবৰ কাৰণে ভয় লাগে পাছে পাছে ঘূৰাই বডিগাৰ্ডে বনালি News to keep you ahead. Evening Prime every day at 7 p.m. মুৰছাল যেন কবিতা কাৰণ ইয়াৰ চিৰ সংগী ইটালিয়ান অলিভ অইল আৰু ভেষজৰ গুণেৰে সমৃদ্ধ জেক অলিভ অইল বডি অইল কবিতাৰ দৰে চালে জগাই তোলে মনত নতুন সুৰ প্ৰথম পিম্পল তেন্তে কি কৈছে তোমাৰ ইনফ্লুৱেঞ্চাৰ বহুত কিবা কিবি কিন্তু মোৰ ওজি অৰিজিনেল ইনফ্লুৱেঞ্চাৰ তুমি হে না সেই কাৰণে এইটো মোৰ ওজি এডভাইস ইয়াত আছে 100% নেচাৰেলি ডিৰাইভড নিম ই হ'ল সোপ ফ্ৰী আৰু পেৰাবেন ফ্ৰী পিম্পলছ আঁতৰাই স্কিন কৰি তোলে হেলদি হিমালয়া পিউৰিফাইং নিম ফেচ ৱাছ পিম্পলৰ অৰিজিনেল সলিউশ্যন আপোনাৰ প্ৰিয় চেনেল নৰ্থ ইষ্ট লাইভ আৰু ইন্দ্ৰধনু উপভোগ কৰিব পাৰিব ডিছ টিভি আৰু ভিডিঅ'কন DTHত চেনেল নম্বৰ 1539ত নৰ্থ ইষ্ট লাইভ আৰু ইন্দ্ৰধনু 1513ত উপভোগ কৰক Don't like the inverted image? Get the real picture. News to keep you ahead. Evening Prime every day at 7 p.m. Don't like the inverted image? Get the real picture. News to keep you ahead. Evening Prime.
Welcome back, viewers. You're watching this special broadcast of Voting Day live as we bring you all the latest live visuals from the 6 constituencies that are going to Bypolls today. Voting, of course, began at 7 a.m. sharp this morning, and a healthy voter turnout is being witnessed across the 6 constituencies, both in Assam and in Meghalaya. Now, if we talk about the Bongaigaon constituency, independent candidate Shailendra Sarkar also cast his vote just a while back. Sarkar, of course, has been a rebel candidate who came out of the AGP camp to contest the polls independently after Dipti Chaudhary was announced as the candidate by the party. Let's take a look at the visuals of the independent candidate Shailendra Sarkar casting his votes. There you have it, viewers. These are the visuals that are coming in from Bongaigaon just a while back. The independent candidate who once not too long ago was a district leader of the AGP in Bongaigaon, but he rebelled against the party. There were some internal divisions that had rocked the AGP before the elections, and all of that surrounded around the candidature of the AGPs, the Dipti Chaudhary, who is the wife of 8-time MLA Fani Bhushan Chaudhary. So there was a bit of internal divisions that had cropped up within the party in the run-up to the Bypolls, and in the midst of all that, Shailendra Sarkar had resigned from the party and had made the decision to contest as an independent candidate. He had also expressed a lot of confidence regarding his candidature, saying that the people of the constituency are behind him and they want him to be victorious. The people had reposed their faith in him to do well for the constituency, to take it forward as far as the people of Bongaigaon is concerned. প্ৰথম উপনিৰ্বাচনৰ আজি মই প্ৰাৰ্থী হৈছোঁ আৰু প্ৰাৰ্থী হৈ মই নিজে গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ যে মই এটা আশাৰ এটা মই পথ দেখা পাইছোঁ। মই ভাবিছোঁ মই এই নিৰ্বাচনত মই বিপুল সংখ্যক ভোটত এটা মই জয়ী হ'ম বুলি, গতিকে মই নিজকে উৎফুল্লিত হৈ আছোঁ। ফণী ভূষণ চৌধুৰী 40টা বছৰ এই MLA হৈ থকাৰ পিছতো তাৰপিছত তেওঁ এইবাৰ দেখা গ'ল যে তেওঁ নিজৰ পত্নীক দিয়ালে, পৰিবাৰত কৰিলে, গণতন্ত্ৰক তেওঁ খৰ্ব কৰিলে, আৰু দেখা গৈছে ৰাইজে কৈছে যে ৰাইজে বিচাৰিছে যে কি কয় উন্নয়নৰ গতি অতি লেহেমীয়া হৈছে, গতিকে উন্নয়নৰ গতিৰ পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে আৰু নেতৃত্বৰ পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে। এই কাৰণে মোক ৰাইজে ভোট দিব বুলি মই দৃঢ় বিশ্বাস। Yes, so the first reactions of the independent candidate right after having cast his vote this morning. And on that note, we also had Dholai Congress candidate Dubri MP, who also cast his vote this morning. Another candidate who was amongst the early morning voters himself this morning. Let's listen into what he had to say as well. আমি আশাবাদী, কারণ সঙ্গে আমার জনগণ আমার সঙ্গে আছে। জনগণের একটা যেটা আমি সাপোর্ট পাইছি, এই সাপোর্ট দেখে আমার মনে হচ্ছে যে আমি নিশ্চয় জয়ী হব। 30-35 হাজার ডিফারেন্স থাকবে মিনিমাম। So even Dubri MP is confident of his prospects, saying the people are behind him. He has the support of the people of the constituency. At this point, let me go to Gambegre once again, where my colleague Arindam Das is joining us with all the latest. Arindam, so Gambegre historically has been a constituency that has always seen very high voter turnout, and that is something that we are witnessing even today as well. So tell us more about where you are right now and what is going on around you, Arindam. Yes, sir. Ronak, right now I am at Dedengre Secondary School, and as you have already mentioned, that Gambegre has always witnessed high voter turnout, and today also it's not different. And you can see that the morning shows the day. We have been here at this polling station since 6 a.m. in the morning, and we have seen people queuing up since 6:30 to cast their votes. We have seen people, elderly citizens, young people coming to cast their votes, and right now also you can see that a large number of voters have come up to cast their votes. They are right now waiting in the queue. So let me show you the polling station, how the voting is taking place, and what type of arrangements have been made for free and fair polls. So this is how the people are coming. They are queuing up, and after that they enter the polling booth, and there are polling agents from the various political parties who verify the credentials there of the voters, and after that they gave a go-ahead sign, and then after that they go to the polling officer, who also checks the credentials, the voter ID card, PAN card, or whatever
identity proof they have to show that they are the genuine voters, and after that they are put with the indelible ink, and from there you can see that there one person, he has cleared all the formalities and he is being put with the indelible ink, and right now he is going ahead to cast his vote. So this is the area where the EVM has been kept, and right now you can see that the voter has gone inside to cast his vote. So there you can see that he has already cast his vote and is coming outside, and there are also some more people who are lining up to cast their votes. Now let me show you the arrangement that has been made by the district officer as well as the returning officer, the polling department, for ensuring free and fair polls. You can see there is a camera out there, and that's how this area has been kept under surveillance, and this feed of that the camera is giving, it's live streamed. It's been directly received by the district officer and the returning officer at their office. So at every polling station this type of webcasting is done, so that there is free and fair polls. There is no unfair means adopted by any of the voters or some untoward incident takes place. So everything is recorded and everything is live streamed. So this is how the polling is taking place in a Gambegre constituency. And as I have already mentioned that we have been here since 6 a.m. in the morning, and we have seen people turning up in large numbers since 6:30 a.m. in the morning. So looking at the early morning trend, we can say that this is going to be high voter turnout today also. And as you have already mentioned that Gambegre has always witnessed high voter turnout. So this is a prestige fight for all the political parties who have put their candidates in the fray, particularly the NPP. NPP has fielded the wife of Chief Minister Mehtab Chandi as the candidate. TMC has fielded the sister-in-law of former Chief Minister of Meghalaya and leader of opposition TMC leader Dr. Mukul Sangma. BJP has fielded the Vice President of the state Bernard Marak, who is also the member of the Garo Hills Autonomous District Council. And on the other hand, the Congress, which has this area as their bastion, have also fielded a strong candidate, Jinjang Marak. So it's going to be a quadrangular fight here in Gambegre constituency, and the voter size is not much. It's just around 33,000. So looking at the way that the fight is going to take place, a quadrangular fight, there is going to be vote division in this constituency, and whoever have the last laugh or whoever wins from this constituency will be winning to a very small margin. In fact, some people have predicted that the margin might be as low as 500 votes. So that is how the mandate is going to be here in Gambegre constituency. So this is going to be a prestige fight for all the political parties who have put their candidates in the fray. And since early morning we have seen high voter turnout, and at the end of the day it's going to be a high voter turnout. Absolutely, and Arindam, of course, as you rightly mentioned, the barest of margins may decide the winner as far as the Gambegre Bypolls is concerned. But, once again, talking about the high voter turnout, so we are already seeing a high voter turnout in the early hours of the morning. But what about the candidates and the leaders themselves, Arindam? Because this is the only seat as far as Meghalaya is concerned going to Bypolls today. So, any word on any update as far as the candidates themselves are concerned, or the leaders, Mukul Sangma, if we talk about Conrad Sangma, the Chief Minister himself. So, any word on when we can expect the leaders and the candidates themselves to show up and cast their votes? Well, Ronak, if we talk about the high-profile peoples who have been camping here in Gambegre as well as in Garo Hills, it's the Chief Minister himself who have been camping here since past 1 week. So he is overlooking the entire campaigning and the polling process. So he is campaigning for his wife Mehtab Chandi. On the other hand, former Chief Minister and leader of opposition TMC leader Dr. Mukul Sangma is also camping here in Garo Hills since past 1 week. So he is also looking after the campaigning and the all polling process. So the other candidates also, Bernard Marak, he is local from here. He is here only. Jinjang and Maraka, who is the candidate for the Congress, he is also here. But talking about particularly who is going to cast their votes, which particular candidate is going to cast their votes, we know that only two candidates, that's Sadia Rani M. Sangma as well as
Jinjang Marak. These two candidates are only going to cast their votes, and the other candidates don't have their votes in the Gambegre constituency. Mehtab Chandi doesn't have her vote in the Gambegre constituency. Conrad Sangma, Chief Minister of Meghalaya, doesn't have his vote in the Gambegre constituency. Mukul Sangma also doesn't have his vote in the Gambegre constituency. So Bernard Marak also doesn't have his vote in the Gambegre constituency. So, but these are the two candidates who are going to cast their votes. And apart from that, the present MP from the Congress party from Tura, Salenge Sangma, is also going to cast his vote from the Gambegre constituency, and the Gambegre constituency has always remained a stronghold of the Congress party, particularly Salenge Sangma. He has won multiple times from this constituency as an independent candidate, as a Congress candidate, as an NCP candidate, and right now he has been elected as the Member of Parliament from Lok Sabha from this constituency. So this is basically a stronghold of Salenge Sangma, and we have seen him also camping here since past 2 weeks and campaigning for the Congress candidate Jinjang Marak. So this is, as I have mentioned, is going to be prestige fight for all the parties who have fielded their candidates, particularly the NPP, Congress, TMC, and the Bharatiya Janata Party. So right now voting is underway, but we have to wait till 23rd of November when the counting will take place and the results will be declared. But as I have mentioned, looking at the voter sides, what the people have predicted is that there is going to be a vote division for all the political parties, and after that whoever wins will win with a very small margin, as low as 500 votes, maybe the margin of winning for the candidate who have the last laugh. Ronak. Right. Also, Arindam, talking about the constituency itself, Gambegre, it has been a constituency that, certain issues in this constituency are obvious issues, isn't it? If we talk about the road infrastructure, if we talk about connectivity, these are issues that come out, very obviously in this constituency. So, you have been spending the last few days in Gambegre, talking to the people, getting to see what are the issues in this place. So, tell us more about what you gauged in the past few days. What are the people looking for as far as the Bypolls Bypolls is concerned, Arindam? Now, Ronak, looking at the earlier trends, they have voted for an individual, that's Salenge Sangma, irrespective of whichever party he has played the elections for. He was an independent candidate, he was a Congress candidate, he was an NCP candidate, and right now he has been elected to the Lok Sabha as a Congress candidate from the Tura Lok Sabha seat. But looking at the issues on ground, we can only say that we have traveled DDP inside the Gambegre constituency. We have seen that the basic issues are there: infrastructure development, roads, potable drinking water facility at all households, and mobile connectivity, electricity connection. So these are the basic issues which is there in this election, but we have to again see whether it is going to be the individual influence or the party influence or the development issue which plays up in this election. But yes, as I have mentioned, that the basic issues for Gambegre constituency are the same as any other constituency, that's development or infrastructure development, electricity connection, mobile connectivity. So these are the basic issues which the voters of this constituency wants, and if they vote for those issues, then it's going to be a change. Otherwise, it's going to be the same again if they prefer any individual influence over this constituency. But yes, we have to wait for 23rd of November when the counting will take place. But as I mentioned, that since it's going to be a quadrangular fight between 4 candidates, so whichever candidate wins this election will win with a very small margin of votes, and that's how the fate of the Gambegre constituency will be decided by the voters here in the constituency. Ronak. Yes, absolutely. November 23rd is the day when we will come to know who wins the people's mandate as far as Gambegre is concerned. Thank you very much, Arindam, but don't go anywhere. We will come back to you shortly for more updates. For now, viewers, it's time for a very short break here once again, but don't go anywhere because continuous live coverage of the by-elections in Assam and Meghalaya will continue on the other side. Stay tuned.
like the inverted image, get the real picture. মুৰছাল যেন কবিতা কাৰণ ইয়াৰ চিৰসংগী ইটালিয়ান অলিভ অইল আৰু ভেষজৰ গুণেৰে সমৃদ্ধ জেক অলিভ অইল বডি অইল কবিতাৰ দৰে চালে জগাই তোলে মনত নতুন সুৰ नए तेवर नए कलेवर के साथ आपके भरोसेमंद चैनल नॉर्थ ईस्ट लाइव पर देखिए रोजाना इस वक्त 11 से 11:30 और सुर्खियां दोपहर 12 से 12:30 बजे तक। Welcome back, viewers, and we are bringing to you the live coverage of Voting Day Live as 5 constituencies in Assam and 1 in Meghalaya go to Bypolls today. Voting, of course, began at 7 o'clock sharp this morning, and of course, there has been a healthy voter turnout already in the early hours of the morning today. The number, of course, will be in all likelihood going up as the day progresses, and even the weather itself also seems to be in favor of a healthy voting day. It's bright and sunny out there, and also not too warm, not too hot either at the same time. It's pleasant, perfect sunny weather conditions for a great day of voting, viewers, as people across 6 constituencies exercise their franchise in what is a very crucial by-election, which is being touted as somewhat of a semi-final ahead of the 2026 assembly elections. And at the same time, we're also bringing you the live visuals from outside a number of polling stations across the constituencies going to Bypoll today, and the visuals speak to the fact that voters are coming out in large numbers to cast their votes. Despite a number of incidents of violence taking place in Samuguri, the run-up to the polls has been by and large peaceful. If we talk about the other constituencies in Assam, but nevertheless, even in Gambig, even in Samuguri, viewers, despite the fact that it has witnessed a number of incidents of violence, that has not deterred the people from coming out and casting their votes. All right, at this point in time, let me now go across live to my colleague Bikram Sarkar, who is joining us all the way from the Dholai constituency, which is also witnessing polling today. So Bikram, first of all, a very good morning to you and all the voters of Dholai constituency. Tell us where you are at right now and what is the mood like over there. Over to you, Bikram. Yes, Ronak, very good morning to you too, and it's a very bright sunny morning. As we started in the beginning, we are seeing that we are standing at 118 Iromara Prathmik Vidyalaya. We have seen when we started the day with, we have shown you that from the very morning, like from 6:30, people are coming out and they are standing in a queue. And very interestingly, while we are talking in our last bulletin, we have shown you this counter was there was a huge line of women and men were there, but we are seeing that very fluently this work is going on, the casting is going on, and here you can see the line of the men are here, they are sitting in queue waiting for their turn, Ronak. And as mentioned that this is the pink polling station, as it is fully all the booths, all the polling stations are being conducted by, this polling has been conducted by the ladies. This is one of the pink polling station. People are getting inside, they are casting their votes, they are coming out. You can see and very smoothly they are casting their vote and they are coming out. And very importantly, here in this polling station, MP Parimal Shukla Vaidya is gonna come and cast his vote, and here we found the Deputy Commissioner. He is also coming, and he is monitoring the entire situation. And after some while, MP Parimal Shukla Vaidya will come and cast his vote. Yes, Ronak. Right, so what we're witnessing is the arrangements that have been made for Parimal Shuklavatya to come and cast his vote in a short while from now. And all right, so as we wait for him to come, Bikram, let's also talk about the contest that we're witnessing in Dholai as well. So the Congress says the Dhrubajyoti Purkasta, of course, seems to be very confident about the support that he has gotten from the people in the run-up to the Bypolls, and understandably so, because his father is a very popular leader from the constituency. But
if we talk about the BJP's Nihar Ranjan Das, he too seems equally confident of giving Dhrubajyoti Purkasta a run for his money. So how do you gauge the contest that we are witnessing unfold in the Dholai, Bikram, according to you? We have the information that yes, Dhrubajyoti Purkasta, the candidate of Congress, he has already casted his vote in the other polling station at around 7:30 a.m. and he was at the Dholai in a different part where in the BNP school he casted his vote, and after coming out he stated we will take the reaction of the DC. Ronak, we have Nidul Jadhav, the district commissioner with us. So a very good morning, sir. It's a very bright day and the people are very much enthusiastic. What do you think? We have going to the by-election of the Dholai NC and the brisk voting is going on. I have visited more than 20 polling stations, and by 8 a.m. more than 10% people have voted on average. So this is a good sign that people have shown interest in democracy, and I hope that we'll cross the voting percentage for the last time. So we have seen that in 2016 and in 2021 the casting percentage was 79.83%, and in last 21 it was 78 or something. So what do you think? Like, will it cross 80 the mark? Because many people doesn't come out thinking that it is a bypoll. Yes, generally in the bypoll the voting percentage is lower as compared to general elections. However, we have taken sweep exercises and we have encouraged voters to come, and you can see the crowd yourself. And we hope that if it continues, we will be able to cross the. What about the polling centers that is near the border of Assam and Mizoram? We have close to 42 police stations which are near the border, but we have taken ample security measures, deployment of CSP to the SP and DC of the nearby Dholai district, as well as any kind of sector police officers are there. We do not foresee any untoward situation, and there has been no glitches as far, so it will continue. Thank you. So Ronak, as we have heard, District Commissioner Nidul Jadhav, he is on his run from the very morning. He has till 8 a.m. he has visited. Out of 208, he has already visited and took stock of 22 polling station, and he is on his way for the next polling station. As mentioned, that the polling station which is in the bordering area of Assam and Mizoram, they are also in a very peaceful manner. The conduction of this polling is going on, as they have also talked to the counterparts. And as the time moving on, you can see the people are getting inside, casting their votes. आपने मतदान कर दिया? अभी अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं. Okay. So people are waiting for the. Are you the first time voter? क्या आप first time voter हैं? Second time voter हैं. जब वोट डालते हैं आप, तो मन में क्या रहता है कि इस चीज के लिए हम लोग वोट डाल रहे हैं? डेवलपमेंट और हेल्थ के लिए, समाज के लिए, सबके लिए. Very good. So आपने वोट डाल दिया? हाँ, वोट डाल दिया. मैंने वोट इसलिए दिया है, मैंने वोट निहार रंजन दास को दे दिया. आप वोट किसी को भी दे, हमको वो जरूरत नहीं है. क्या सोच के डालते हैं? हम सोच के डाल रहे हैं, जो हमारा भारत देश में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, वो गाँव हर आदमी को मालूम है. नहीं, पूरा बात सुन लीजिए. वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है ना किताब है, वो सबको मालूम होना चाहिए. मैंने जब सर्वे किया, सर्वे करने के बाद मुझे पता चला जो हमारा भारत देश में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है बोल के बहुत आदमी को मालूम नहीं. आपने सर्वे किया? सर्वे किया. वो मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, मैं ये थोड़ा सा यूट्यूब करता हूँ. मेरा यूट्यूब चैनल में मैंने डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट किया. वेरी गुड. है आपके परिवार ने वोट डाल दिया? हाँ, डाल दिया. वेरी गुड. सो एज रोनक, यू heard that the people when they cast vote, it is in their mind that they want development and health is the main priority. So people are casting their vote, and there are some people who want the Constitution of India should stand first. Ronak. Absolutely, Bikram. So we have come to understand what are the issues that the voters of Dholai are looking to get addressed as they come out and cast their votes today. Thank you very much, Bikram, for bringing us all those live updates at this point in time. We will come back to you again shortly for more updates. But it's time now for another very short break here, viewers. On the other side, more live coverage will continue as a polling day continues. Stay tuned. To keep you ahead. Evening Prime, every day at 7 p.m.
গৰম ৰুটি ৰেডি এই ৰুটিনো কি এডভান্টেজ আছে আশীৰ্বাদ আটাৰে তৈয়াৰী ইয়াত 4টা এডভান্টেজ আছে আশীৰ্বাদে 6500 আৰু অধিক বাছনি কেন্দ্ৰৰ পৰা ঘেঁহু বাছি লয় 3বাৰ টন্নকৈ চাফা কৰে হাতেৰে স্পৰ্শ নকৰাকৈ স্বাস্থ্যবিধিসন্মত পেকেজিং কৰে প্ৰয়োজনীয় পৰিপুষ্টি লাভ কৰে আশীৰ্বাদ এডভান্টেজ প্ৰতিদিন from ITC. Don't like the inverted image? Get the real picture. News to keep you ahead. Evening Prime, every day at 7 p.m. Don't like the inverted image? Get the real picture. News to keep you ahead. Evening. Welcome back, viewers, and we are continuing with our live coverage of voting day live from Assam and Meghalaya at this point in time, viewers, and we have some fresh visuals for you at this point in time. If you see across your screens in a moment, we will bring you, viewers, visuals of more leaders who have come out themselves to cast their votes now. So, all right, we're getting live reaction from Fanishun Chaudhary. Let's listen in. যি ৰাইজৰ অধিকাৰ ভোটাৰৰ যি অধিকাৰ সেই অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ ৰাইজ ওলাই আহিছে কিন্তু ভোটদানৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে ভোটদান হেৰেঙা দেখিছোঁ আমি এইবাৰ নাই জেনেৰেলি আচলতে উপনিৰ্বাচনত অলপ হেৰেঙা হয়েই কিন্তু মই ভাবোঁ যে সময় হোৱাৰ লগে লগে ভোটদানৰ হাৰ বাঢ়িব মিনিমাম 70টো হ'ব মই ভাবোঁ মানে ভোটদানৰ প্ৰক্ৰিয়া ভোটদান 70% হ'ব বুলি আশা কৰিছে মই আশা কৰিছোঁ ৰাতিপুৱাৰ ভাগত কি ওলাই আনে এমপি ইলেকশ্যনত আমি দেখিছিলোঁ ৰাতিপুৱাৰ ভাগত যথেষ্ট ভিৰ হৈছিলে তেতিয়া আচলতে মানুহে তেতিয়া আচলতে জেনেৰেল ইলেকশ্যনবিলাকক বেছি গুৰুত্ব দিয়ে এনেধৰণৰ উপ নিৰ্বাচনবিলাক কমকৈ গুৰুত্ব দিয়ে যে কোন চৰকাৰ হওক কাৰ চৰকাৰ হ'ব কোন চৰকাৰ হ'ব এইটো ৰাইজে গমেই পায় গতিকে সেইকাৰণে তেওঁলোকে তাৰমানে ৰাইজে অলপ ধুৰি স্থিৰি অহাৰ কাৰণে চিন্তা কৰে ৰাতিপুৱা আপুনি প্ৰায় 7টামান বজাত আহে আজি অলপ কলমকৈ হ'ল কি ভোটাৰৰ বুজ ল'লে নেকি কেনেকৈ দেখিছে নাই মই বাকীখিনি সমষ্টিটোৰ বাকীবিলাক অঞ্চলৰ পৰা ভোটাৰ হেৰি দিছোঁ তো বাকীবিলাক অঞ্চলত কিন্তু ঠিকেই তাৰমানে বিশেষকৈ গ্ৰামাঞ্চলত ভোটাৰৰ সহায়টো ঠিকেই আছে আগন্তুক দিনবোৰত কেনেকুৱা দেখিছে ভৱিষ্যত কেনেকুৱা দেখিছে বঙাইগাঁও আপুনি আজি কি ক'ব মই বঙাইগাঁও আগন্তুক দিনত কেনে দেখিছোঁ কি দেখিছোঁ এইটোতো আজি কোৱা নাযাব কিন্তু তথাপিতো মই ভাবোঁ যে আগন্তুক দিনতো বঙাইগাঁও একে গতিতে গতি কৰি থাকিব আপোনাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কাৰ লগত হ'ব বুলি ভাবি আছে এইটোতো স্বাভাৱিক কথা ক'ব লগতে হ'ব শৈলেন চৰকাৰে যথেষ্ট ভোট পাম বুলি দাবী বস্তুটো ঘটনাটো হৈছে কি পৃথিৱীখন বহুত ডাঙৰ এটা কুৱাৰ তলত যিটো আছে এটা যদি হেৰি থাকে কি কয় ভেকুলী থাকে তেতিয়া তেওঁ ভাবে যে এই কুৱাৰ ওপৰেদি যিখিনি আকাশত দেখা পায় সেইখনেই কি কয় পৃথিৱী বুলি ভাবে গতিকে তেওঁলোকে দুই এটা অঞ্চলত তাৰমানে ঘূৰি মেলি ভাবিছে সেইখনেই পৃথিৱী গতিকে তেনেধৰণে চিন্তা কৰিবই আৰু সেইটো মই নকওঁ আৰু শুভেচ্ছা থাকিব মই নকওঁতো মই জিকাৰ কাৰণে শুভেচ্ছা দিছোঁ মই তেওঁতো জিকিম বুলি ভাবিছে নহয় জিকাৰ কাৰণে শুভেচ্ছা দিছোঁ তেওঁতো এতিয়া মই শুনিছোঁ তেওঁৰ কণ্টেষ্ট বোলে হেৰিৰ লগত হ'ব কংগ্ৰেছৰ লগত হ'ব গতিকে আমাক তৃতীয় পজিশ্যনত থৈছে গতিকে তেওঁৰ মানে ঘটনা হ'ল কি তেওঁৰ পলিটিকেল এনালাইচিছ পলিটিকেল নলেজ থাকিব লাগে এইবিলাকত ৰাইজ কোনফালে গতি কৰিছে ৰাইজ কোনফালে ভোট দিছে সেই মই ক'লোঁ নহয় যে ভেকুলীয়ে ওপৰত তাৰমানে
যিখিনি দেখা পায় আকাশ সেইখনকে পৃথিৱী বুলি ভাবিছে, তেওঁ সেইখনকে পৃথিৱী বুলি ভাবিছে, সেইকাৰণে তেওঁ ভাবিছে যে তেওঁ কণ্টেষ্টত আহিব, কণ্টেষ্টত নাহে। উন্নয়ন নোহোৱা বুলিও তেখেতে আজি উল্লেখ কৰিছে। আজিৰ পৰা একবাৰ 2 মাহতে উন্নয়ন কৰিব মোক ভগৱান বুলি কৈছিল যে ভগৱান অমুক তমুক চব কৰি দিছে, অমুক তমুক এনেকৈ কৰিছে। আজিতো হ'বই, স্বাভাৱিকতে হ'ব এইটো কথাটো, আজি হ'বই। মই তেওঁৰ বিষয়ে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে মই একো নকওঁ বস্তুটো, তেওঁ কৈ আছে কৈ থাকক বুলি দিয়ক। মই তাৰমানে দুৰ্বল যিবিলাক হেৰি অৱস্থাত যেতিয়া থাকে মানুহে যিহকে পায় তেওঁকে তাৰমানে আক্ৰমণ কৰিব বিচাৰে, সেইটো হৈছে তেওঁলোকে। আজিৰ দিনটোত কি ক'ব, কিমান ব্যৱধানত নাই আজি যদি মই এই মুহূৰ্তত নকওঁ তাৰমানে ভোটৰ ব্যৱধান পোল পাৰ্চেণ্টেজৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব। যদি পোল পাৰ্চেণ্টেজ যদি তাৰমানে MP লেখীয়া বা MLA লেখীয়াকৈ তাৰমানে পাৰ্লিয়ামেণ্ট লেখীয়া বা এছেম্বলি লেখীয়াকৈ যদি হয় তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি 40+ হ'ব। পাঁচটা সমষ্টিত কি দেখিছে আপুনি? নাই মই এতিয়া বৰ খবৰ ল'লে, মই এতিয়া বঙাইগাঁও সমষ্টিলৈ ব্যস্ত আছোঁ বুলি আমি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। All right, so that is of course Fani Bhushan Chaudhary, the 8-time MLA, and the Dubri and the MP, and the I beg your pardon, the AGP MP Fani Bhushan Chaudhary, 8-time MLA, a very popular leader in the Bongaigaon constituency, speaking to voters, speaking to the media, in fact, after having cast his vote just a short while back today. And at this point, viewers, we are also getting visuals of the polling booth in Bongaigaon, viewers, and one by one, leaders themselves are also coming out and casting their vote at this point in time, also expressing their confidence of a victory for their respective parties. Fani Bhushan Chaudhary, in fact, the latest among them, and he will be a man who is very confident at this point in time, naturally so, because the party has fielded his wife Deepti Moi Chaudhary from the Bongaigaon constituency. And at this point, viewers, I am also being joined in the studio by my colleague Dulumani. So indeed, Dulumani, it's a very bright and sunny day. It's a great day for polling, and we've seen that one by one the leaders are also coming out, and already it's hardly 8:30 now, but still there's quite a healthy voter turnout across the 5 constituencies in Assam, isn't it? जी बिल्कुल रौनक, और जैसा कि कहा जा रहा था, चुनाव अधिकारी भी कह रहे थे कि बोंगाईगांव में खासकर काफी महिलाएं हैं और काफी यहां पर पिछली बार की तरह वोटिंग भी दर्ज की गई थी। असम के 5 विधानसभा सीटों के लिए आज वोटिंग जारी है। सामुगड़ी, बिहाली, धौलाई और इसके साथ ही अन्य 2 सीटों पर भी सिडली और बोंगाईगांव में आज सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। शाम 5 बजे तक यहां वोटिंग जारी रहेगी। तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं बोंगाईगांव से, और जैसे कि रौनक तस्वीरें बोंगाईगांव से सामने आ रही हैं। फनी भूषण चौधरी जो फिलहाल एक सांसद बन चुके हैं, लेकिन उनकी छवि काफी अच्छी रही है, और अब उम्मीद की जा रही है कि उनकी पत्नी की जो छवि है, जो पत्नी है, उनकी भी आगे ये राजनीति में काफी अच्छा करने वाली है। लोग उनसे उम्मीद लगाए बैठे हैं, और इन दर्शकों को यहाँ पर एक बात बताना चाहेंगे कि इन 5 सीटों पर कुल 34 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनका भाग्य फैसला 9,09,057 मतदाता कर रहे हैं। और लगातार हम अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं रौनक, और जैसा कि आपने बताया कि मौसम काफी अच्छा है, और हल्की सी ठंड पूर्वोत्तर में इस वक्त देखी जा रही है। असम में मौसम काफी अच्छा है, सुबह से धूप खिली हुई है, और इस बीच लोग भी धीरे धीरे अब मतदान केंद्रों की तरफ जाने लगे हैं। सामग्री में ही जैसा अगर बताएं तो यहाँ 3.8% मतदान दर्ज किया गया है। बिहाली में 2.1%, धोलाई में 2.75%, सिडली में 2.3% और बोंगाईगांव में 2.6% मतदान सिर्फ 1.5 घंटे में ही दर्ज किया गया है। रौनक जी बिल्कुल, Dulumani very rightly pointed out, the fact that we're witnessing a healthy voter turnout even in the early morning hours today has a lot to do with the fact that it's a very pleasant day for voting as well. Bright and sunny weather, not too hot either, and the numbers flashing on our screens also speak to the same, as the voting percentage so far has started trickling in. If we talk about Samuguri, 3.8% voter turnout there, and that is something extremely heartening to see. The very constituency that has witnessed a spate of violence in the run-up to the polls is the one where we are seeing the maximum voter turnout so far. So that is indeed extremely encouraging signs this morning, viewers. And following, not to
Close behind is of course Bihali with 2.1% voter turnout so far. Then we have Dholai with 2.75 voter turnout. Sidli of course 2.3% and Bongaigaon 2.6% voter turnout. And it's just as you said, Dulumani, you know, just 1.5 hours into the voting, which began at 7 a.m. sharp. So you know, these are very healthy signs that we're witnessing in the early morning hours today, Dulumani. जी रौनक, अगर सामग्री की बात करें तो कांग्रेस और भाजपा में यहाँ काफी कड़ी टक्कर देखी जा रही है। एक तरफ भाजपा कह रही है कि कांग्रेस तीसरी पीढ़ी के नेता तंजिल हुसैन को मैदान में उतार रही है, वहीं भाजपा की तरफ से भी काफी तगड़े उम्मीदवार को उतारा गया है। यहाँ पर क्या कहेंगे इसे लेकर? Yes, absolutely, Dulumani. You know, the fact that we've witnessed these violence incidents in the run-up to the polls just makes the bypoll contest in Samaguri all the more intriguing, all the more interesting, because you have on one hand the Congress fielding a third-generation politician, a first-time candidate in the form of Tanzil Hussain, the son of the Dubri MP Rakibul Hussain. But of course, on the other hand, we also have Diplu Ranjan Sharma of the BJP, who is, you know, looking to turn the tide in his favor as well. He in fact is not he is not a third-time politician. He is a more of a seasoned politician. He would be looking to, you know, bank on the votes of the people and banking on the support of the people behind him. But you know, things are really you know, too close to call as far as Samaguri is concerned, because we've witnessed back-to-back campaignings by the BJP and the Congress, door-to-door campaigns in fact, that were undertaken by both the candidates. So you know, the Samaguri seat has turned out to be one of the most interesting contests as far as this by-elections is concerned, Dulumani. जी बिल्कुल, पिछले दिनों जैसा कि देखा गया था सामग्री में काफी जोर शोर से प्रचार अभियान चलाया गया यहाँ, और भाजपा और कांग्रेस में कड़ी टक्कर देखी गई है। इसी सीट पर सम्मिलित मोर्चा के उम्मीदवार भी उतारे गए और ये तस्वीर अब एक बार फिर से दिखा रहे हैं रौनक, हम बोंगाईगांव से, जहां फणिभूषण चौधरी अपना मताधिकार का इस्तेमाल कर बाहर निकले हैं। পৰিৱেশে সৃষ্টি কৰিছে। কি ক'ব? ভোট দিলে একবাৰ দেখুৱাই দিয়কচোন। এই মুহূৰ্তত মই বিশেষ ক'বলগীয়া নাই, কিন্তু কথাটো হৈছে যে এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে মই বঙাইগাঁও সমষ্টিৰ প্ৰতিনিধিৰ কাৰণে মই ভোট প্ৰদান কৰিলোঁ, আৰু মই ভাবোঁ মই যিগৰাকী প্ৰাৰ্থীক ভোট প্ৰদান কৰিছোঁ সেইগৰাকী প্ৰাৰ্থী নিশ্চিতভাৱে বিজয়ী হ'ব। আৰু जो 38টা বছৰে বঙাইগাঁও সমষ্টিত যেনেধৰণে উন্নয়নমূলক বা বিকাশৰ যাত্ৰা অব্যাহত আছিল, একেধৰণে অব্যাহত থাকিব বুলি মই ভাবোঁ। ইমান দিন ধৰি আপুনি বঙাইগাঁও গাৰ্জিয়ান হিচাপত আছিলে, এতিয়া কি বঙাইগাঁৱৰ গাৰ্জিয়ান পৰিৱৰ্তন হ'ব নেকি? কোনোবা বেলেগক ক'ব নেকি? মই গাৰ্জিয়ান পৰিৱৰ্তন হ'ব বুলি নহয়, মই সাংসদ হিচাপে মই বঙাইগাঁও সমষ্টি। और इस वक्त हम जुड़ते हैं हमारे संवाददाता विक्रम सरकार से, जो इस वक्त धौलाई से हमें ताजा अपडेट्स दे रहे हैं। मतदान केंद्र के बाहर हमारे संवाददाता मौजूद है। विक्रम, सूरज भी चमक रहा है, हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, ये बचपन से ये सेंटर मेरा केंद्र है। आज तो आना है, ये आना है कि राष्ट्र निर्माण का महापर्व चल रहा है, इलेक्शन हमारा धलाई, तो राष्ट्र इसलिए है कि हमारा सुख समृद्धि, हमारा संघ राष्ट्र से ही मिलता है। तो राष्ट्र निर्माण के लिए भाजपा का उम्मीदवार निहार रंजन दास को वोट देना है, इसलिए ये मैसेज आप दे रहे हैं? जरूर। रौनक, दुलुमनी, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सांसद है, जो 5 बार के एमएलए विधायक रह चुके इसी क्षेत्र से, अभी वो सांसद है, वो आए हैं अपना मतदान करने के लिए। आप देख सकते हैं वो अभी आए हैं और अभी मतदान करेंगे। दुलुमनी जी विक्रम, जैसे कि देखा जा रहा है सबके चेहरों पर एक विश्वास है कि यहाँ पर भाजपा की जीत होगी, और पहले जहाँ कांग्रेस भी इस सीट पर जीत चुकी है, कांग्रेस का भी कब्जा रहा है इस सीट पर, क्या कहेंगे? जी हाँ, अगर हम थोड़ा पीछे जाए, अगर 1972 की बात करें तो 1972 से लेके 1991 तक यहाँ पे कांग्रेस का शासन चला था, कांग्रेस यहाँ पे काबिज थी। 1991 में जब पूरे भारतवर्ष में ऊपर से नीचे तक कांग्रेस की सरकार थी, तब एक सीट था कछार, बराकबेरी के कछार से धोलाई, ये क्षेत्र है। 1991 में जब
पहला बीजेपी का उम्मीदवार यहाँ पे खड़ा होता है और यहाँ से विधायक बनते हैं, और वो थे परिमल शुक्लवैद्य। उसके बाद से जो एक कारवा है वो चेंज होता गया है, फिर से एक बार कांग्रेस आई, उसके बाद 2 बार यहाँ पे विधायक बने परिमल शुक्लवैद्य यहाँ पे काबिज, तब से वो यहाँ पे काबिज है। बीजेपी का गढ़ माना जाता है अभी धोलाई क्षेत्र को। फिलहाल दोनों ही सूरतों में अगर हम बात करें तो दोनों ही पार्टियां इसलिए ये प्रेस्टिजियस सीट बन जाती है क्योंकि बीजेपी को अपना जो यहाँ पे जो उनकी जो भीख है, उनका जो लैंड है, इसे उनको पकड़ के रखना है मजबूती के साथ। और कांग्रेस ये कोशिश कर रही है कि वो फिर से अपना जो दबदबा है वो यहाँ पे बनाए, अपना यहाँ पे काबिज करे, क्योंकि जैसा कि रौनक ने पहले ही कहा था कि ये सेमीफाइनल है, 2026 के इलेक्शन से पहले का ये सेमीफाइनल है और 5 क्षेत्र में आज ये चुनाव हो रहा है। तो इससे उभर के आएगा सामने कि आने वाले दिन किसके मुंह पे ये मुस्कुराहट आती है, और मतदाता ये अपना प्रयोग जो कर रहे हैं वो 23 तारीख को वही ये निर्णय देंगे कि किसकी शक्ल और किसकी मुस्कुराहट बहुत ज्यादा खिलती है और कौन मायूस होकर घर वापस लौट जाता है। दुलुमनी जी विक्रम, और जैसा कि तस्वीरें देख सकते हैं हम आपके पीछे मतदान केंद्र में फिलहाल लोगों की संख्या काफी कम है, लेकिन अब तक मतदान प्रक्रिया कैसी चल रही है? जी हाँ दुलुमनी, फिलहाल मतदान आप देख सकते हैं लाइनें कम है, लेकिन बहुत फास्ट यहाँ पे मतदान हो रही है। अगर हम इस बूथ की बात करें, 1 नंबर बूथ, यहाँ पे कुल 1268 वोटर्स हैं, जहाँ पे अभी एमपी खुद भी यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे वोट दे रहे हैं। यहाँ पे हम देखें 1 घंटे के अंदर अगर हम बात करें तो बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ मतदान हो रहा है। यहाँ पे सुबह से काफी लंबी कतार थी, पर लोग आ रहे हैं, मत का प्रयोग कर रहे हैं, जा रहे हैं। इस बूथ की अगर हम बात करें तो अभी तक 145 के ऊपर यहाँ पे मतदान 1 घंटे के अंदर बहुत ही सुचारू रूप से, तेजी के साथ यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे मतदान की जो प्रक्रिया है वो चल रही है, लोग आ रहे हैं, अपना अपना जो मत है उसका दान कर। और एक बात यहाँ पे हम दिखाएंगे, सांसद जो है, सांसद खुद यहाँ पे कतार में खड़े हैं। यही जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो सुंदरता है, यही इसी से दर्शाता है। पहले जो एक सीन था कि कोई डेलीगेट आते हैं, पहले घुस जाते हैं लाइन में अपना ओहदा का वो प्रयोग करते हुए, लेकिन ये कतार में आप देख सकते हैं सांसद खुद अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं, वो खुद कतार में खड़े हैं और आम आदमी की तरह ही, क्योंकि वो आम आदमी के लिए आम आदमी ही इनको वो पद गिफ्ट करती है। तो देख सकते हैं आम आदमी की तरह ही वो भी आज यहाँ पे अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और बहुत ही सुचारू रूप से यहाँ पे मत का प्रयोग हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। हम जानना चाहेंगे, जैसे यहाँ पे एक्चुअली हम आपसे जानना चाहेंगे दादा, कितने उत्साही हैं वोट डालने के लिए? हाउ एक्साइटेड यू आर? बहुत लोग उत्साहित हो वोट उत्साहित। আপনারা যখন ভোট কাস্ট করতে আসেন, ভোট দিতে আসেন, তখন মাথায় কি থাকে, কি ভেবে ভোট দেন? সুন্দর পরিচালনা করবে। जैसा कि देख सकते हैं मैक्सिमम जो वोटर्स हैं वो यही चाहते हैं, उनके दिमाग में यही रहता है कि जो भी हो वो सोसाइटी के लिए, अपने लोगों के लिए वो काम करे। इसी आशा के साथ जो मतदाताएं हैं वो अपना मत का प्रयोग करते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और आज सर्वोपरि मतदाता ही है। दुलुमनी। Yes, absolutely, Bikram. You know, that is indeed just goes to show that this is indeed the day that you know, the power to the people. You know, people coming out and casting their votes, deciding what they want for their own constituency. And of course, just a while back, when we even saw Parimal Shuklabadya standing in line along with every other person, just like a commoner. You know, that just goes to show why this is called the Festival of Democracy. We'll slip into a very short break here, viewers. Don't go anywhere. All our correspondents are on the ground to bring us all the live details. Don't go anywhere. We'll be right back. Don't like the inverted image? Get the real picture.
মোৰ ছাল যেন কবিতা কাৰণ ইয়াৰ চিৰসংগী ইটালিয়ান অলিভ অইল আৰু ভেষজৰ গুণেৰে সমৃদ্ধ জেক অলিভ অইল বডি অইল কবিতাৰ দৰে চালে জগাই তোলে মনত নতুন সুৰ News to keep you ahead. Evening Prime, every day at 7 p.m. Don't like the inverted image? Get the real picture. Welcome back, viewers, to this special broadcast of Voting Day Live. We also have the first reactions coming in at this point in time from Congress candidate from Sidli, Sanjeev Wari. Well, Wari expressed confidence that the Congress will be given a chance this time as the people are longing for a change. Let's listen in. আজি ইয়াত ভোট দি আমি খুব ভাল লাগিছে খুব শান্তিপ্ৰিয় আৰু সকলো মনত এটা হাঁহি সবে ভোট দি আছে এইকাৰণে খুব ভাল লাগিছে প্ৰায় সকলে বিপিএফ ইপিপিএল দুটাকৈ চালে 17 বছৰ বিপিএফে কৰিলে এবাৰ 4 বছৰ যেটো ইপিপিএলে কাম কৰিলে হেতৰ যেটো কাম এই কামত ৰাইজে সন্তুষ্ট নহয় আৰু ৰাইজে যেটো বিচাৰিছে এটো হোৱা নাই সেইকাৰণে ৰাইজে মোক ভোট দিব একচুয়ালি পুৰানা হিচাপত 2,50,000 যদি ধৰো আমি 70,000 প্লাস পাম All right, so that was another candidate who just cast his vote himself and then was speaking about his chances, his prospects as far as this bypoll is concerned. Now, Dulumani, let's talk about the fact that Sidli is witnessing a three-corner contest. But, in the run-up to the election, we saw how there were certain speculations during the rounds that there might be a joint contest between the BPF and the UPPL, two parties that have always remained on either side of the spectrum. They have historically been known to be rivals as far as the political landscape is concerned. But those speculations were immediately dashed when in the run-up we came to know that that is not going to be the case. The UPPL is going to field its own candidate, so will the BPF. So in the light of these things, there is also a very big chance that the Congress might try to seize the opportunity and bring forth an upset, so to speak, as far as the BJP and I beg your pardon, as far as the UPPL and the BPF candidates are concerned. जी, लेकिन जैसा कि देखा जा सकता है कि यूपीपीएल के सहयोग में भाजपा है, जो भाजपा सत्तारूढ़ है, इसके वजह से यूपीपीएल को काफी एक प्रोत्साहन मिला है, काफी एक सहयोग, बहुत बड़ा सहयोग यहाँ कहा जा सकता है सत्ता में, क्योंकि जो भी पार्टी होती है उसकी सहयोगी अगर कोई पार्टी होती है तो उसे लोग ज्यादा तवज्जो देते हैं। अगर उस इलाके में कोई ज्यादा समस्याएं ना हो, उस इलाके में विकास देखा जाता है, तो खास तौर पर आमतौर पर लोग उसी पार्टी को वोट देते हैं जो फिलहाल चल रही है या जो फिलहाल कैंडिडेट्स हैं उन्हें ज्यादातर तवज्जो दिया जाता है। तो ऐसे में जी हाँ, ऐसे में देखा जाए तो बीपीएफ के लिए भी बीपीएफ काफी वक्त से पिछड़ी हुई है, काफी वक्त से पीछे चल रही है, उनके सही उम्मीदवार यहाँ मैदान में नहीं उतार पा रही है पार्टी। ऐसे में यूपीपीएल को काफी ज्यादा लोगों का सहयोग मिल सकता है। Absolutely, Dulimani, how far the incumbency factor will play into the hands as far as the Sidli bypolls is concerned? How far will that decide the prospects of the UPPL remains to be seen. But, as you rightly pointed out, goes without saying that the UPL's, alliance with the BJP at the state level is something that they have been banking on. Even we saw that during the campaigning stages when Pramod Boro was also, spearheading the UPPL's campaigning for the Sidli
constituency. And on that note, viewers, we have reactions of BJP's Behali candidate Diganto Ghatawar, who visited a temple early morning today to seek blessings before today's contest. Take a look. প্ৰায় 18 বছৰ কাল কৰাৰ পিছত আজি বিহাৰীৰ যি উপনিৰ্বাচন প্ৰাৰ্থিতা প্ৰদান কৰিছে তাৰ কাৰণে মই পুনৰবাৰ আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয় ৰাজ্যিক সভাপতি সন্মানীয় হিমন্ত বিশ্ব ডাঙৰকে আদি কৰি আমাৰ শোণিতপুৰৰ সাংসদ ৰঞ্জিত ডাঙৰ সকলোকে আন্তৰিক ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ আৰু বিহাৰীবাসী ৰাইজ আটাইতকৈ মানে ধন্যবাদ জনাইছোঁ কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ এই এমাহ আমি যি দলৰ সংগঠনৰ হওক বা নিৰ্বাচন প্ৰচাৰ যাওঁতে যেনেধৰণে মৰম কৰিছে যেনেধৰণে হেৰি কৰিছে সহযোগিতা আগবঢ়াইছে এই সহযোগিতা বা মৰম কেতিয়াও নাপাহৰোঁ নিৰ্বাচনটো আহিব যাব কিন্তু মানুহৰ যিটো মৰম সেইটো সদায় থাকি যাব তাৰমানে আজি নিৰ্বাচন ভোট গণনা আৰম্ভ হৈছে ভোটিং যথেষ্ট ৰাইজে উৎসাহ দেখা পাইছোঁ চেণ্টাৰবিলাকৰ খবৰ লৈছোঁ যথেষ্ট উৎসাহ দেখা পাইছোঁ আৰু এবাৰ সকলো মানে উন্নয়নৰ লগত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত আছে প্ৰায় 18 বছৰ কাল কৰাৰ পিছত আজি বিহাৰীৰ যি উপনিৰ্বাচন প্ৰাৰ্থিতা প্ৰদান কৰিছে তাৰ কাৰণে মই পুনৰবাৰ আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয় ৰাজ্যিক সভাপতি সন্মানীয় হিমন্ত বিশ্ব ডাঙৰকে আদি কৰি আমাৰ শোণিতপুৰৰ সাংসদ ৰঞ্জিত ডাঙৰ সকলোকে আন্তৰিক ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ আৰু বিহাৰীবাসী ৰাইজ আটাইতকৈ মানে ধন্যবাদ জনাইছোঁ কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ এই এমাহ আমি যি দলৰ সংগঠনৰ হওক বা নিৰ্বাচন প্ৰচাৰ All right, so back-to-back reactions are coming in as the candidates themselves are going out and casting their votes. At this point in time, our editor-in-chief, Wasbir Hussain, joins us live from our newsroom to give us more on the bypolls that are underway right now. Wasbir, a very good morning to you. So how do you gauge the contest that is underway across the 5 constituencies in Assam this morning? Wasbir, over to you. Good morning, viewers. Good morning, Raunak, and good morning, Dulumani in the studios. Yes, a very good morning to everybody from Northeast Live. We are broadcasting live from this morning, bringing you minute-to-minute live coverage of the by-elections that are going on in the northeastern region. Let me tell you, viewers, the by-elections, there are by-elections to 6 assembly constituencies in the northeastern region, 5 of which are in Assam and 1 in Meghalaya. Now, all these by-elections to these 6 constituencies are turning out to be very important for the respective chief ministers in Assam as well as in Meghalaya. In Assam, the by-elections are important for Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma because the state assembly elections are due in a little over 1 year from now. Therefore, these by-elections are definitely going to be a barometer of the success that the government has been claiming to have achieved in the respective 2 states. Now, it is important in Assam because, as I said, the state assembly elections are coming up in a little more than 1 year from now. And as far as Meghalaya is concerned, viewers, this election in Bongaigaon in the Garo Hills is extremely important because Mehtab Chandi, the NPP candidate of the ruling, this is the dominant partner in the Meghalaya coalition government, that is the NPP. NPP has fielded the wife of the Meghalaya Chief Minister Conrad Sangma in the Bongaigaon seat. Therefore, it is a lot at stake personally for Chief Minister Conrad Sangma. First of all, yes, it is true that he has been facing charges of dynastic politics, but he said that it is not he or his party who have chosen Mehtab Chandi, but it is the demand that has come from the people, and the party had to succumb to this demand, and therefore they had to field Mehtab Chandi in Bongaigaon, and who incidentally is the wife of the Meghalaya Chief Minister. Now, that is the background in which we look at these by-elections to the 6 assembly constituencies, 5 in Assam and 1 in the neighboring state of Meghalaya, that is in Garo Hills' Bongaigaon constituency that we are talking about. Now, the Assam, the elections are in Samaguri, Behali, Dholai, Bongaigaon, Sidli. These are the 5 seats where by-elections are be held. And in Samaguri, the seat fell vacant
because Rakibul Hussain, the sitting MLA from Samaguri, won the Dubri Lok Sabha seat, and the Samaguri assembly seat went vacant. Now the Behali seat became vacant because Ranjit Datta, who was the sitting MLA of the BJP, won the Tezpur Lok Sabha seat, and therefore the Behali seat became vacant. Dholai, of course, again the Bypolls says Parimal Suklabadya won the Silchar Lok Sabha seat, and therefore the Dholai seat went vacant. Now, same is the case with Bongaigaon, because Phanibhushan Chaudhary, who was the AGP leader, he won the Barpata seat, Lok Sabha seat, and therefore the Bongaigaon seat went vacant. And in Sidli, UPPL Joyanta Basumatari won the Kokrajhar Lok Sabha seat, and therefore the seat went vacant. So what is significant in the by-elections in the 5 seats is that all the 5 seats fell vacant because the sitting MLAs had been elected to the Lok Sabha. That, viewers, is one of the most significant point in these by-elections in Assam, that all the 5 seats by-elections, if the by-elections are being held today, it is because all the 5 seats in Assam, that is Samaguri, Behali, Dholai, Bongaigaon and Sidli, the sitting MLAs, they were all provided tickets by their respective parties, and they have all been elected to the Lok Sabha, resulting or necessitating the by-elections. Now, Samaguri, it is the main contest is between, as we have been saying, between Diplu Ranjan Sharma of the BJP and Tanzil Hussain of the Congress. Now, Behali, it is Joyanta Bora of the Congress, Diganta Ghatwar of the BJP, and Lakshmi Kanta Kurmi of the CPIML. It's a triangular contest and is also a seat to watch. Now, Dholai is Nihar Ranjan Das of the BJP and Dhruba Jyoti Purkayastha of the Congress. This is a straight, looks like a straight fight there. And Bongaigaon, Dipti Moi Chaudhary, AGP, wife of the sitting MLA earlier, that is Phanibhushan Chaudhary, and Brazenjit Sinha of the Congress. And Sidli, of course, is UPPL's Jayanta Basumatari versus the Suddha Basumatari of, sorry, Sidli is Nirmal Kumar Brahma of the UPPL versus Suddha Kumar Basumatari of the BPF, and there is, of course, Sanjeev Wari of the Congress. And in Meghalaya, the Gambegri seat is witnessing a multi-cornered contest, because Mehtab Chandi is the NPP candidate, Jingjang Marak is the Congress candidate, Sidhia Rani Sangma is the TMC candidate, and Bernard Marak, the BJP, state BJP vice president, is the candidate from the BJP. So all these seats are witnessing a sharp contests this time round. Now, let me tell you what is significant. In another significant thing that we need to bring to the notice of our viewers is the contest in Samaguri. Now, the contest in Samaguri is significant because it is the first time that one is witnessing a third generation member from one particular family contesting the elections. Yes, I am talking about Tanzil Hussain, who is the Congress candidate from Samaguri. The seat was held by his father, Rakibul Hussain, who has been an MLA and a minister in the Torun Gogoi government. He is a veteran political leader of the state, and he has been holding on to Samaguri for quite some time now. And this time around, since he has been elected to the Lok Sabha from Dubri Lok Sabha constituency, he is fielding his son Tanzil Hussain. Now, let me tell you that Rakibul Hussain's father, the late Nurul Hussain, was earlier an MLA represented the same seat, that is Samaguri, and he was a minister in the Assam cabinet. He was a cabinet minister. So Samaguri's seat is witnessing a third generation member of a family contesting the elections. Nurul Hussain, Rakibul Hussain's father, then Rakibul Hussain, then of course Rakibul Hussain's son Tanzil Hussain. Therefore the seat is interesting. Now, Rakibul Hussain is a Congress heavyweight in the state, and therefore this is a prestige fight for Rakibul Hussain, because it is like a family pocket borough, that is Samaguri. Now, therefore, he is going all out to make sure that his son Tanzil Hussain gets elected from this constituency. But the ruling BJP is also leaving no stone unturned. Ruling BJP has focused a lot in Samaguri constituency. Right. I would just like to tell you at this point in time that we also have Bikram Sarkar joining us live from Dholai, and he also has with him Parimal Shuklabadya, who is right there alongside him. So I'm sure you must be having some questions for him as well. Yes, Bikram. Yes, the Bikram Sarkar, our correspondent in Silchar, he has Parimal Shuklabadya, the MP, with him. Yes, Bikram, go ahead. Please speak to Parimal Shuklabadya.
Yes, Wasbi, you can see the five-time MLA and now MP Parimal Shuklavadya came to his constituency and casted his vote. And we have seen the beauty of democracy, that he stood in the line and waited for his turn. Okay. So, Parimal Shuklavadya ji, the line. So, Parimal, can talk to him. कैसा लग रहा है वोट देके? परिमल शुक्लवैद्य जी, नमस्कार। परिमल शुक्लवैद्य जी नमस्कार। आप वोट दिए, आप लाइन में खड़े रहे, आप वोट डाले, आपको कैसा लग रहा है, क्या फील हो रहा है आज? देखिए बहुत अच्छा लग रहा है। पहला दफे मैं 91 से आज तक पहला दफे मैं कोई विधानसभा चुनाव में कोई अपना पार्टी का अलग सा, हम लोग इधर में बाई इलेक्शन में हम लोग उम्मीदवार खड़ा किया निहार रंजन दास को। इस बार वोट देके बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये डेमोक्रेसी में आपका भी जानकारी है कि डेमोक्रेसी हमारा एक पर्व होता है, और ये इलेक्शन पर्व में हम लोग हिस्सा लिया राष्ट्र निर्माण के लिए। राष्ट्र सुख समृद्धि शांति का वातावरण लेके आता है, और इसलिए राष्ट्र निर्माण का लक्ष्य में भाजपा इस बार असम विधानसभा का जो बाई इलेक्शन चल रहा है धलाई में, इसमें निहार रंजन दास को उम्मीदवार दिया है, और निहार रंजन दास को भाजपा में वोट देके बहुत अच्छा लग रहा है। तो परिमल शुक्लवैद्य जी, ये पहले दफे आप संसद के रूप में वोट डाले हैं, ये आपका क्या मायने रखते हैं आपके लिए? संसद के रूप में ये पहले दफे आप वोट डाले हैं। जी सही बात है, मैं संसद का रूप में पहला दफा वोट डाला हूं। ऐसा है कि मैं पहले आपको बोला, संसद या तो विधानसभा या तो पंचायत, हर जगह पे ही राष्ट्र निर्माण का लक्ष्य में ही भाजपा वोट में हिस्सा लेता है। और आज का दिन पे भी हम, क्योंकि आपका जानकारी है 21 में हमको 5 साल के लिए हमारा धलाई का जनता जनार्दन ने हमको विधानसभा में भेजा था, मगर बीच में संसद निर्वाचन में पार्टी का उम्मीदवार मैं हुआ। वो पार्टी का उम्मीदवार होने का बाद हमारा सिलचर लोकसभा का जितना निर्वाचक मंडली है, इन लोग का आशीर्वाद से मैं यहाँ से चुनकर गया पार्लियामेंट में, मगर ये जो स्थान खाली हुआ इसमें आज का दिन पे निहार बाबू या निहार रंजन दास वो उम्मीदवार है भाजपा का। तो पहला दफे सांसद होने का बाद में मैं पहला दफे ये चुनाव में हिस्सा लिया, बहुत अच्छा लगा। मैं उम्मीद रखता हूं कि निहार रंजन दास जाके मां भारती के लिए बहुत अच्छा काम करेगा। अच्छा, परिमल बाबू, आप तो असम के एक वरिष्ठ नेता है, आप बीजेपी का, भाजपा का भी आप वरिष्ठ नेता है, असम का आप वेटरन पॉलिटिकल लीडर है, तो आपका क्या मानना है ये जो उपचुनाव है, ये क्या 2026 में जो असम में विधानसभा का निर्वाचन होंगे उसका क्या एक रेफरेंडम हम लोग कह सकते हैं? देखिए, आपने बात सही बोला, क्योंकि हमारा 26 का जो चुनाव है, ये चुनाव तो आने वाला है, नथिंग टू द डू। इसमें ज्यादा से ज्यादा 1 साल है हम लोग का हाथ में। ये चुनाव में आप लोग देख रहे हैं आदमी जैसा एक उत्साह उमंग के साथ उभर कर आ रहा है वोट डालने के लिए, भाजपा को वोट डालने के लिए। और मैं समझता हूँ कि ये 26 का चुनाव में भी ऐसा ही पूरा असम का जितना हम लोग वोटर्स हो, हम लोग उमंग के साथ भाजपा का सरकार बनाने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे, हम लोग ऐसा ही वोट डालते रहेंगे। तो डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी का नेतृत्व जो सरकार है असम में, उनका ये जो परिणाम निकलेगा, उनका 26 का इलेक्शन में इनका क्या प्रभाव पड़ेंगे आपका हिसाब से? देखिए, हर चुनाव का एक प्रभाव होता है। पहला बात है जो यहाँ से जाएगा वो तो काम करेगा, और सबसे बड़ा बात है कि जिस पार्टी से चुनकर जाएगा जरूर ये पार्टी ही 1 साल का अंदर भाजपा छोड़ के अलग सा कोई पार्टी क्या काम करेगा समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, मेरा जानकारी नहीं है। इन लोग तो
हर टाइम में ही बोलता है इलेक्शन का पहले ही फटाफट खटाखट करके भेज देगा, क्या करेगा, तो बहुत सारे बात है। मगर मैं उम्मीद रखता हूँ आज का दिन पे डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी का नेतृत्व में जैसा काम चल रहा है, मोदी जी का नेतृत्व में जैसा पूरा इंडिया में काम चल रहा है, तो हर जितना निर्वाचक मंडली है, तो इन लोग सोचेगा कि राष्ट्र के लिए ही तो वोट डालना है। राष्ट्र निर्माण होगा तो अपना सुख समृद्धि, अपना शांति आने वाला है। तो इसलिए नेक्स्ट 26 में भी डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा का नेतृत्व में जो चुनाव अभी चल रहा है, ये बाई इलेक्शन 26 में चलेगा अपना पार्टी का, तो अच्छा ढंग से बहुत वोटों से अपना जो मेजोरिटी आने वाला है, मेजोरिटी आने का बाद जरूर पार्टी तय करेगा कौन सीएम होगा कौन नहीं होगा, तो पार्टी का जी। सो बहुत धन्यवाद परिमल शुक्लबैद्य जी नॉर्थ ईस्ट लाइव से बात करने के लिए। दैट वाज परिमल शुक्लबैद्य, the MP was speaking to us through our reporter Bikram Sarkar. Yes, Bikram, how is the voting going on? Do you see everything smooth there right now? Yes, was very smoothly and very fast, and frequently the voting procedure is going on. We have seen from the very morning 6:30 a.m. The people were standing in the queue waiting for their turn to cast their vote, but now it's just 9. It's 9, and we have seen that most of the booths are getting empty with the people, as because they have already casted their vote. Again, in that room, we are seeing that the people are coming in. More than 195 people have casted their vote so far in 1.5 hours, starting from 7:15 p.m. because it started from 7:15 p.m. was beat, and very smoothly and in a very fast and fluent manner, we are seeing that the casting of votes is going on, and we know that Dholai constituency is one of the most peaceful constituency in every election. It went very peacefully, and the casting percentage is also getting higher. Now, as it is a bypoll, it will be a time to see that how much casting happens in the end, we can say. But so far, we are seeing that people are coming in enthusiastically. They are casting their vote, waiting for their turn in standing in the queue. All right. Don't go away. Stand by. We'll come back to you soon. Bikram Sarkar in Barak Valley reporting for Northeast Live covering this by-elections. We are joined by our reporters Arindam Das and Biplab Dey from the Garo Hills. Arindam Das and Biplab, they are in Gambegri right now. Let me first go to you, Biplab Dey. Biplab Dey, if you can hear me. Biplab, I'm coming to you, Arindam, immediately after this. Biplab, this is a very significant election and lot at stake for personally for Chief Minister Conrad Sangma. Definitely, this is definitely a very interesting and a prestigious election for not only the NPP but the entire fraternity that is here. On the one side, we have Saling Sangma, who's just recently become an MP. And he would definitely want to stamp some authority on the fact that Gambegri is a seat that he and people from the Congress can always win. The other thing is that the NPP, this has become, although it's not going to really make a difference to governance, we still expect this to be a fight for prestige, because the candidate of the NPP is the wife of the current Chief Minister of Meghalaya. The third part is the Sadia Rani Sangma has come second in the past 2 elections, and this third election is something that she actually wants to change the status quo. As we've already seen, the fight is going to be extremely close, and we expect a very strong finish. We've had a few model code violations that have been. We've had a few model code violations that have taken place. Some allegations of money being thrown. These things have become very interesting over the past 2 days since model code, since the silent period has been ongoing. Right.
Arindam, coming to you, as Biplav had said, yes, we have been saying since morning, this is a very, very interesting contest. Mehtab Chandi, NPP, wife of the Chief Minister, Sadhya Rani Sangma of the TMC, also related to the former Chief Minister and NPC big gun in Meghalaya, Mukul Sangma, and BJP has also fielded a very strong candidate, Bernard Marak, member of the Garo Hills Autonomous District Council, who had also contested last time as well. Jingjang Marak is the Congress candidate, so multi-corner contest. But I want to know from you, Arindam, where is Conrad Sangma and where is Mehtab Chandi? Does Mehtab Chandi has a vote in Gambegri, or she doesn't have a vote in Gambegri? Where does she vote usually? Well, was we talking about which candidate have vote in the Gambegri constituency? Only two candidates have their votes in the Gambegri constituency. One is Sadhya Rani Sangma from the TMC, and the other is Jingjang Marak, who is from the Indian National Congress. The other two candidates doesn't have their votes in the Gambegri constituency. So right now we can only tell our viewers that Chief Minister Conrad Sangma as well as his wife Mehtab Chandi is at their residence in Tura, and likewise Bernard also. I had a talk in this morning whether he had any plans to go out to any polling station. He said he doesn't have any plans as of now. And on the other hand, Mukul Sangma also doesn't have his vote in this constituency. So basically all the top leaders are sitting in Tura right now. They are closely observing the polling process which is underway since 7 a.m. in the morning. And since 7 a.m. We have seen that people in large number have come to cast their votes. So looking at the early morning trend, we can only say that it is going to be a high voter turnout. But as Biplav was mentioning, I would like to ask a few questions to him. Well, Biplav, if we speak about the Gambegri constituency, it has been a stronghold of basically Saleng Sangma. Yes. He has won as an independent candidate, he has won as an NCP candidate, he has won as a Congress candidate. So will the individual influence work this time? Because since this is going to be a multi-cornered fight. See, it's a very interesting situation in the fact that while Saleng Sangma has a base here and he personally almost knows everybody from the constituency, one thing that could actually change people's minds is the fact that the NPP is currently in governance. So if people actually vote on that line, then Saleng Sangma's influence, although will still continue to be there, but this time it could be limited to just this by-election. Okay, the NPP could actually pull through the seat, and so could TMC, because TMC Sadhya Rani has had very close contests with the former the MLA of Gambegri, Saleng Sangma. She only lost by about 20-30 votes in 2018 and by about 2,300 votes in 2023. The NPP has always been third in this constituency, and this is something that they would really like to change. So there you have heard Biplav Right. telling us in detail how this fight is going to be, but we can only say that it is going to be a four-cornered fight. Right. Yes. Arindam, don't go away, stay on. We have got a short commercial break. We'll come back right after this very short commercial break. মুৰছাল যেন কবিতা, কাৰণ ইয়াৰ চিৰসংগী ইটালিয়ান অলিভ অইল আৰু ভেষজৰ গুণেৰে সমৃদ্ধ জেক অলিভ অইল বডি অইল। কবিতাৰ দৰে চালে জগাই তোলে মনত নতুন সুৰ। News to keep you ahead. Evening Prime, every day at 7 p.m.
All right. Welcome back to this live broadcast. Welcome back to this live broadcast. We are covering voting day live. As you know, viewers, elections, by-elections are going on to 5 assembly seats in Assam and 1 in Meghalaya. We will go quickly to our reporter in Bongaigaon, Abhideep Chaudhary. Bongaigaon is an interesting contest because the Bongaigaon seat, as we have been saying, fell vacant because the sitting MLA, AGP leader Phani Bhushan Chaudhary, got elected to the Lok Sabha, and therefore the Bongaigaon assembly seat fell vacant. And now there is a contest between Dipti Mohi Chaudhary, wife of Phani Bhushan Chaudhary of the AGP, and Brajjanjit Sinha of the Congress. So the BJP has left this Bongaigaon seat to its alliance partner, that is the AGP. Abhideep, good morning to you. Abhideep, what is the scene like? How many candidates are in the fray? What is the contest like? What is the turnout in Bongaigaon? What are you witnessing around you? Very good morning, Wasbir. Yeah, as mentioned by you, Bongaigaon constituency is very interesting, but it's peaceful compared to the other constituencies where the election is going on, the by-election is going on today. Here I am at Birjhora Girls HS School, where the voter turnout is a bit low. We are here since 7 in the morning, but the voter turnout is very low as compared to the other places of Assam, the other 4 constituencies of Assam. As you can see, there are not much voters standing in the queue. In the last MP election, the voter turnout was 89%, but now it's around 930. We have seen a very few voters coming out and standing here in the queue. You can see there are only 5 to 6 voters who are there in the polling station. This is in the center of Bongaigaon town. Here the voter percentage is going to be very low, I suppose, and this is the place where Barpeta MP Phani Bhushan Chaudhary and his candidate wife Dipti Mohi Chaudhary has casted his vote. This is the place where they have been casting their vote. The UPPL, BJP, AGP alliance candidate is casted her vote a while back, but they are quite hopeful. The politicians are quite hopeful that after around 12 or so the voter turnout will increase, and they are hoping that around 75 voter percentage turnout will be there. Abhideep, is this the situation? You are saying only 5 to 6 voters are lining up in that polling station where you are at the moment, but is it the trend across the constituency, or this is the trend only in that polling station where you are located at this point? Right, SB, this is the trend across all the polling stations of Bongaigaon town. I want to repeat, this is the trend across the polling stations in Bongaigaon town. But in rural areas, in village areas, people are coming out in huge number because they have their other daily costs to maintain. They need to go to their field, they need to go to their farm, they need to do their household chores. And that's why the people of the rural area, they have come out in huge number to cast their vote. We have a very young voter today with us who has casted his vote, and he is the son of Dipti Mohi Chaudhary and Phani Bhushan Chaudhary. You are a young voter, you have come to vote, but we are seeing that there is very low voting percentage. People are not coming out yet out of their home. What is your appeal as a young voter? Yeah, generally we see that in general election, every people come and cast their vote. But in this case of by-election, we know that people they are not completely aware, but I request people and I appeal people that all the people should come and cast their vote, because for the development of the constituency, they should come, because all the people are responsible for the development of this constituency. So for the sake of the development of Bongaigaon, people should come out and cast their vote. That is what the appeal from a young voter and the son of Phani Bhushan Chaudhary and Dipti Mohi Chaudhary. But we are hopeful, the political leaders are hopeful, the district administration is hopeful as the days pass on, as the days pass by. It's only 9:30 now, and we all are hopeful that the polling percentage will increase, and at the end of the day by 5. Yeah, this is something which is in sharp contrast to what we are witnessing in the other constituencies in Assam as well as in Meghalaya. There is brisk turnout of voters,
And you were saying in the entire Bongaigaon town, all the polling stations, there are very few turnout as far as of now. So that is, what does it signify? Does it mean anything? And there were some reports when Diptimoy Chaudhary was named a candidate by the AGP. There were a lot of reports that not everybody was upbeat. What do you have to say? What are you picking up from the ground? My assessment of the situation of the low voter turnout is that as because many people they stay outside of Bongaigaon town because of work and other related purpose, and as because Bongaigaon and other 4 constituencies has only declared local holiday, and as because the other people working in the other states and other cities, other big cities, they don't get their leave, might be is one of the reasons why the voter turnout is low. And another probability is that during the MP election where the voter turnout was around 89%, people are saying that they had to wait in the queue for long hours when they came to cast their vote during the MP election. That might be a reason that what people might be thinking sitting out there in their home watching live telecast in Northeast Live and other channels, that if the voter turnout is high in the first hours and they want to avoid the long queues, and that might be the reason, the psychological reason behind the low voter turnout in this hours. And as the days pass by, as the time passes on, we hope that the voter turnout will increase. But another one thing which the young voter rightly mentioned, that there is a bit of lack of awareness among voters because this is a by-election, and people might think that there is no point of going and leaving the work and casting their vote because it's not going to make much impact to the government or to the voter of Bongaigaon. That's what maybe another reason was. Right, Abhideep, thank you very much for joining us. We'll come to you soon again. But our appeal from Northeast Live to the voters in Bongaigaon is that please be aware and come out of your homes and cast your valuable vote. That is the appeal from Northeast Live to the voters in Bongaigaon. And we hope the voting turnout is going to peak, going to be higher sooner than later. Thank you, Abhideep, for that. We'll be joined now by Mizing Kwari, our reporter in Sidli. Mizing Kwari, where are you located at this point in time? Mizing, where are you? First of all, I want to know where you are located and where are you? Can you hear me, first of all? Mizing Wari is joining me. I can see him on the screen, but Mizing, can you hear me? Okay, I think Mizing, our audio line to Mizing is doesn't seem to. I'm not seem to getting through to him. So Mizing is in Sidli, and the Sidli constituency, of course, the UPPL candidate, that is the ruling UPPL, which is ruling the BTC at this point in time. UPPL candidate for the Lok Sabha seat was Jayanta Basumatari, and he was the sitting MLA from Sidli, and he won the seat, and therefore the seat fell vacant. And now the contest is between Nirmal Kumar Brahma of the UPPL and Suddho Kumar Basumatari of the BPF and Sanjeev Wari of the Congress. So let me request our producers, can Mizing hear me? So I'm not in touch with the producers as well. Okay, so this is the big news that we are witnessing at this point in time. Sharp contest going on in Gambigri in Meghalaya, because that is a high profile constituency at this point in time, because the chief minister's wife is the candidate from the NPP. The former chief minister Mukul Sangma's close relative is Sidhya Rani, and Sangma is the TMC candidate. The state BJP vice president Bernard Marak is the candidate from the BJP, and Xingjiang Marak of the Congress is the Congress candidate. So we'll go for a short commercial break. Don't go away. We'll be right back.
If your home is not built with water-resistant cement, you'll have to cry. When water seeps in, it weakens concrete. Star Weather Shield cement makes your home weatherproof in bad weather. Star Weather Shield, water-resistant cement, weatherproof ghar. মুৰছাল যেন কবিতা কাৰণ ইয়াৰ চিৰ সংগী ইটালিয়ান অলিভ অইল আৰু ভেষজৰ গুণেৰে সমৃদ্ধ জেক অলিভ অইল বডি অইল কবিতাৰ দৰে চালে জগাই তোলে মনত নতুন সুৰ News to keep you ahead. Evening Prime, every day at 7 p.m. Don't like the inverted image? Get the real picture. News to keep you ahead. Evening Prime, every day at 7 p.m. Don't like the inverted image? Get the real picture. News to keep you ahead. Evening Prime, every day at 7 p.m. तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और लगातार हम आपको दिखा रहे हैं आज असम और मेघालय में उपचुनाव हो रहे हैं। कुल 6 सीटों पर कई उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है। कई उम्मीदवार ऐसे भी हैं जो पहली बार राजनीति में अपना करियर शुरू करने की ओर बढ़ रहे हैं। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें सामने आई है गांबेगरे से, जहां हमारे चीफ ऑफ ब्यूरो अरिंदम दास भी मौजूद है। रौनक जी बिल्कुल दुलमनी, so we are bringing you back-to-back live visuals from all the constituencies that are going to Bypolls today. Right now we're talking about the Gambegre seat in Meghalaya, which is also witnessing a very interesting contest. The Meghalaya Chief Minister Conrad Sangma's wife is in the fray as far as the NPP is concerned. We have our correspondent Arindam Das joining us at this point in time. All right, so Arindam, coming to you once again, what is the scenario like in Gambegre at this point in time? Because we already saw there was quite a few voters that had come out in the early morning hours. Now it's almost going to be 9:30. So has there been an increase in the voter turnout as far as Gambegre is concerned, Arindam? All right. So we seem to be having a bit of a problem with the connection to my colleague Arindam. We'll reconnect with him shortly. But in the meantime, viewers, the AGP candidate from Bongaigaon, Dipti Moy Chaudhary, cast her vote just a while back. Later, she also expressed confidence that she would win the Bongaigaon seat. Let's listen in to what she said. মানে গণতন্ত্ৰ যেহেতু একমাত্ৰ ভোটটোৱে আচল উৎসৱ গণতন্ত্ৰত, গতিকে গণতন্ত্ৰ উৎসৱত নিজেই এজন প্ৰতিনিধি হিচাপে ভোট দিবলৈ পাই অতিকে আনন্দিত হৈছোঁ। আৰু এইটো ক'ব গ'লে ডাঙৰ কথা, এজন প্ৰতিনিধি হিচাপে আহি নিজেই নিজৰ ভোটটো দিয়াটো সেইকাৰণে ভাল লাগিছে। আপোনাৰ জিকাৰ সম্ভাৱনা কিমান? জিকাৰ সম্ভাৱনাটো পুৰাই ভাবিছোঁ, জিকিম বুলি ভাবিছোঁ। কিমান ভোট পাম বুলি ভাবি আছে, আশা কৰি আছে? মই এইটো কেনেকৈ কওঁ এতিয়া, আপুনি ঘূৰিছে, প্ৰচাৰ কৰিছে, আগত কৰি বেছি পাম বুলি ভাবিছোঁ। মহিলা হেৰিৰ ফালে যাওঁ, মিত্ৰজোঁটৰ পাৰ্টি, সেইটোকে ভাবিছোঁ। একমাত্ৰ মহিলাৰ কাৰণে হ'ব পাৰে নেকি? হ'ব পাৰে, মানে বহুত মহিলাই কৈছে,
মানে এইবাৰ মহিলা ইমান বছৰৰ মূৰত হৈছে গতিকে মহিলাক সকলে বিচাৰিছে আৰু মহিলাৰ হ'লে মনৰ কথা ক'বৰ কাৰণে সুবিধা পায় সেইটোৱে ভাবিছে আৰু আপুনি শিক্ষয়িত্ৰী আছিল ৰাজনৈতিক পথত আপুনি আহিব বুলি কেতিয়া ভাবিছিল নেকি? একদম ভবা নাছিলোঁ কোনোদিন ভবাই নাই মই ৰাজনৈতিক পথত আহিম বুলি একদম মানে চিম্পুল আছোঁ মই স্কুলতো সেই তেনেকৈ আছিলোঁ হঠাৎ মানে পৰিস্থিতিয়ে বাধ্য কৰালে মোক চবেই মহিলা পৰিষদ যুৱ পৰিষদে চবেই ক'লে আপুনি এনেকৈ কৰক তাৰপিছত ছাৰ নাথাকিলে তেখেতৰ কথাবিলাক আমি কাৰ আগত ক'ম এনেকৈ কোৱাৰ পিছত চবেই এনেকৈ ইমান কৈছে জোৰ দি আমাৰ ছাৰৰ ফালৰ পৰা বহুত আপত্তি আছিল মোক কথা পাতিব দিয়া নাছিল আৰু এইবিলাক ময়ো ভবাই নাই একটো কথা মানে তাৰপিছত সকলোৱে ক'লে মানে মই প্ৰাৰ্থিত্ব দিবই লাগিব সকলোৱে কোৱাৰ পিছত মই বাধ্য হ'লোঁ All right, so that was of course the Bongaigaon AGP candidate Deepti Moi Chaudhary expressing confidence of her victory right after having cast her vote. And as Assam is voting for by-elections in 5 constituencies, Chief Minister Himanta Biswa Sharma took to social media and called upon the people to come out and vote actively. Taking to social media, Chief Minister Sharma said, and I quote, "I call upon all the people of Bihali, Samaguri, Dholai, Bongaigaon and Sidli to come out and actively partake in the Assam by-elections today. Your voice matters, and the voice you make and the choice you make will determine the course of your constituency's development in the coming days." Unquote. So that is, of course, a big call out by the Assam Chief Minister, isn't it, Dulumanit, for the voters to come out and cast their votes. जी बिल्कुल और जिस तरह से मुख्यमंत्री हिमंत बिश्वा शर्मा की छवि रही है लोगों में भी काफी पॉपुलर है और इस बीच उन्होंने सभी मतदाताओं से इन 5 सीटों के लिए मतदाताओं से खुलकर आगे आते हुए यहाँ मतदान करने की अपील की है लोगों से आह्वान किया है सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने एक पोस्ट करते हुए लोगों से सिडली बोंगाईगांव धौलाई और सामग्री और बेहाली समेत इन 5 सीटों के लिए लोगों से मतदाताओं से आगे आकर बढ़ चढ़कर मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लेने की अपील की है Yes, absolutely. A big call out by the People's Chief Minister Himanta Biswa Sharma himself, telling people, asking them rather, to actively participate in the by-elections today. All right, now once again, I'm connected with my colleague Arindam Das, joining us live all the way from Bongaigaon in Meghalaya. So Arindam, we have been seeing that, there is already quite a healthy voter turnout in Bongaigaon. But what about the candidates? What about the leaders themselves? Are you witnessing any sort of movement as far as the leaders themselves are concerned? Yes, Ronak, since early morning we have seen that there is a healthy voter turnout, and in fact right now also you can see I am at a polling station called Balamgre in West Garo Hills of Meghalaya, and this is how the people are queuing up to cast their votes. Right now as the day is progressing, the temperature is also soaring, that's why people have brought umbrellas to be under the shade of the umbrellas. You can see that people of all ages are here to cast their votes. There you can see a mother coming with her child. There you can see another lady, she's also come with her child. So there are elderly people also who are queuing up to cast their votes. So everybody is making a point to come and cast their votes, and Bongaigaon has witnessed high voter turnout in the past elections also, and this time also it's not going to be different. Looking at the early morning trend, we can say that it's going to be a big voter turnout, and we have been at the polling station since 6 a.m. in the morning, and we have seen people coming up in large number, queuing up even before the polling stations opened up for voting. And right now also you can see that people have come in large number to cast their votes. Now you were asking about the candidates, whether they have come out to the polling booths to cast their votes. Let me tell you that only 2 candidates in the fray have their votes in the Bongaigaon constituency. One is the TMC candidate Sadhyarani Sangma, the other is Jinjang Marak, who is the International Congress candidate. And apart from that, Mehtab Chandi, wife of Meghalaya Chief Minister Conrad Sangma, doesn't have her vote in the Bongaigaon constituency. Likewise, the Chief Minister also doesn't have his vote in the Bongaigaon constituency. Bernard Marak, the BJP candidate, who is also the member of the Garo Hills Autonomous District Council and the Meghalaya Vice President of the Bharatiya Janata Party, his vote is also not here in this constituency. So basically all the leaders who don't have their votes in the constituency, they have not ventured out to the polling stations during this election process. And I have talked
to Bernard Marak a short while ago, asking him whether he had any plan to come out to the polling station. He said that as of now, he doesn't have any plan to come out to the polling station. Talking about the Chief Minister and his wife, they are at their residence in Tura. Bernard Marak is also in Tura. Mukul Sangma is also in Tura. So likewise, all the leaders are in Tura, apart from the two candidates which I have mentioned, have their votes in the Gambagir constituency. Ronak. All right, Arindam Das, thank you very much once again for all those live updates, and do keep us updated on all further developments. We'll come back to you again in a while, but for now, thank you very much. Let me at this point go across to the Sidli constituency, where my colleague Mizing Wari is joining us live. So Mizing, what is going on around you right now? Because Sidli, of course, has is witnessing a direct contest between the ruling UPPL and the opposition BPF. Both candidates have expressed their confidence ahead of the elections of their own victory. So what is going on around you right now? What is the latest, Mizing? Yes, right now we are in front of the Kasikotra 950 LP school voting center, and from the morning in around 6:30 p.m. the casting of vote has already started, and we have visited 3 polling stations here, and the fight will be going to be very interesting from the Sidli constituency, because the fight is going to held between the NDA and BPF opposition and also Congress. And most interestingly, this is the last election for the 31 Sidli, and after this, the Sidli will be renewed for as Sidli 19 constituency. And one thing is also very important, that Sidli has large voters out of 5 constituency which is holding the by-election. So here all the Sidli has 273 polling station, and out of this 46 voting centers is from Kokrajhar, and a total of 2,17,236 voters are here in Sidli constituency, out of which 40,000 voters is from Sidli constituency. And one thing is also very important, that here in Sidli constituency the female voters is very much took place important role, and female candidate total 1,09,308, and male voters are 1,07,924. And the very interesting thing is here is the fight is going to be a triangular fight between Congress and between the UPPL BPF. All right, so Mizing, earlier we saw the BPF candidate also casting his vote. We also saw the Congress candidate casting his vote just a while back. So what about the UPPL candidate? Any sign of him so far? Any update on when we might expect him also to come out and cast his vote today, Mizing? Yes, the UPPL candidate Nirmal Kumar Brahmo has also cast his vote in around 7:30 a.m. and he is right now roaming in the voting centers under the Sidli constituency, and hope in future we'll get a fight from him. All right, and on that note, Mizing, very quickly, you also spoke to the BPF candidate when he came out after casting his vote, as well as the Congress candidate. So tell us a little bit more about what did you gauge when you spoke to them? How confident are they about their prospects so far? The BPF candidate Chuttu Busumtari has very confident, and he has also organized a large, huge number of campaigning, like pocket campaignings, and he has very much confidence about his winning. And even the star campaigners from the NDA has arrived in this constituency, and also he has mentioned that even the star campaigners has arrived here, that NDA will not be a factor for BPF, and the star campaigners will not treat the BPF. जी मीजिंग, यहाँ पर जानना चाहेंगे एक बात आपसे कि सिडली सीट को काफ़ी सुरक्षित सीट माना जाता है, यहाँ माना गया है सुरक्षित सीट, और निर्दलीय उम्मीदवारों की भी यहाँ पर काफ़ी भूमिका देखी जाती है, क्या कहेंगे?
देखिए इस समय जो काफी चर्चित है सिडली समष्टि, और यहाँ पे अभी फिलहाल कांग्रेस से एक कैंडिडेट, बीपीएफ से एक कैंडिडेट और यूपीपीएल से कैंडिडेट दिया गया है। यहाँ पे जो निर्दलीय कैंडिडेट है फिलहाल इस टाइम नहीं दिया गया है। काफी जोर से यहाँ पे तीनों पार्टियों की जो प्रचार शुरू हुआ था और अंत में जाके अभी चुनाव चालू हो रहा है, और कुल ये जो फाइट होने जा रहा है, ये जो तीनों पार्टियों की लड़ाई है, ये ट्रायंगुलर फाइट होने जा रहा है। जी फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अमेजिंग। हम लगातार आपसे जुड़े रहेंगे और यहाँ दर्शकों को हम लगातार दिखा रहे हैं सुबह से ही, जहाँ आज असम के 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और इसी के साथ मेघालय में भी एक सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। काफ़ी उम्मीदवार यहाँ अपनी किस्मत पर दाव लगा रहे हैं और इस वक्त लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखेंगे फिर इसकी ताज़ा तस्वीरें। Don't like the inverted image? Get the real picture. মুৰছাল যেন কবিতা, কাৰণ ইয়াৰ চিৰসংগী ইটালিয়ান অলিভ অইল আৰু ভেষজৰ গুণেৰে সমৃদ্ধ জেক অলিভ অইল বডি অইল। কবিতাৰ দৰে চালে জগাই তোলে মনত নতুন সুৰ। News to keep you ahead. Evening Prime every day at 7 p.m. Don't like the inverted image? Get the real picture. News to keep you ahead. Evening Prime every day at 7 p.m. Don't like the inverted image? Get the real picture. Welcome back viewers to this special broadcast of Voting Day Live, as voting is underway for these 6 constituencies going to Bypolls today, 5 in Assam and 1 in Meghalaya. So that is the update at this point in time. Voting is underway and by and large it has been peaceful so far across all these 6 constituencies. Dulumani, at this point in time, let's also talk about how important this by-election is being considered, especially in light of the fact that in 2026 Assam is going to hold its assembly elections. So it has been touted as the semi-finals of sorts as far as the Assam elections are concerned. So you know, the outcome of the by-polls in these 5 constituencies will in some way or the other definitely have its impact come 2026 when the state votes in the state assembly elections, isn't it? जी बिल्कुल राना, क्योंकि जैसा कि हाल के दिनों में देखा गया है, चुनाव प्रचार के दौरान जिस तरह से देखा गया था कि एक तरफ विपक्षी गठबंधन में काफी टूट दिखी, काफी
टकराव दिखा, उनके बीच सम्मिलित मोर्चा जहां पर दिखी थी, कांग्रेस से काफी नाराज दिखी, कांग्रेस भी उनसे नाराज दिखी। और जैसे कि उनकी उम्मीद की जा रही थी, विपक्ष से उम्मीद की जा रही थी कि 2026 के चुनाव में दोनों ये गठबंधन पार्टियां, विपक्षी गठबंधन पार्टियां मिलकर एक साथ चुनाव लड़ेंगी, जीत का दावा किया जा रहा था। लेकिन इस बीच भाजपा जो है अपने स्तर पर बिल्कुल स्पष्ट दिखी है, बिल्कुल स्थिर दिखी है। अपने उम्मीदवार उन्होंने आराम से उतारे हैं। यूपीपीएल भी यहां पर जैसा कि देखा जा सकता है काफी अहम भूमिका निभाती रही है एक सहयोगी पार्टी की तरह। और अगर सिर्फ कांग्रेस की यहां बात करें तो काफी कुछ पिछड़ चुकी है कांग्रेस कई सीटों पर, जितना कि दावा किया जाता है, जितना कि आरोप प्रत्यारोप देखे जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस को लोग कहीं ना कहीं नकार चुके हैं, मतदाता कहीं ना कहीं कांग्रेस को नकार चुके हैं। और ऐसे में अब कांग्रेस को या किसी भी विपक्षी पार्टी को आगे आकर काफी अहम भूमिका निभानी होगी, लोगों के बीच पहुंचना होगा, अपनी शाखाएं काफी मजबूत करनी होंगी। जी बिल्कुल दुलमनी, and an example of that was also seen very recently if we talk about the Behali constituency, where there was this whole fiasco that initially it was supposed to be one candidate that was fielded by the opposition alliance, but then that was not to be because the Congress decided to field its own candidate, following which the CPIML fielded its own candidate. So the opposition it's safe to say was in a bit of a disarray heading into this by-election. That was very evident if we talk about Behali, and what will be the impact of that? How will that affect the prospects of the Congress as well as the CPIML? Well, that remains to be seen, but definitely one thing is for sure, Dulumani, the BJP would be definitely looking to bank on that confusion, that disarray that has been left in the wake of whatever happened in Behali, and try to take advantage of that and score a resounding victory as far as Behali is concerned. जी बिल्कुल। और रौनक, जैसा कि देखा गया है बिहाली सीट को लेकर या फिर अन्य सीटों को लेकर, तो इसमें भाजपा को काफी फायदा मिला है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल दुलिमन, that is exactly what I was pointing at. The BJP, the Congress's loss has always been the BJP's gain, and what happened right in the run-up to the Behali elections just goes to the fact that the BJP will indeed be looking to take advantage of what is going on in the opposition camp. All right, and on that note, let's also not forget that along with the by-elections in Assam, voting has also started and is underway for the first round of Jharkhand assembly polls covering 43 constituencies out of the state's 81 seats. The remaining constituencies in Jharkhand will go to the polls 7 days later, coinciding with the elections for all 288 assembly seats in Maharashtra. Voters in 43 assembly constituencies across 15 districts have started casting their votes, with polling booths opening at 7 a.m. with the closing time set at 5 p.m. Across these constituencies, 683 candidates are in the fray for legislative seats, which include 17 general, 20 reserved for scheduled tribes and 6 reserved for scheduled castes. In total, 15,344 polling stations have been set up across the state. According to the Election Commission of India, over 200 security force companies have been stationed at key locations to ensure order and safeguard the electoral process. In this phase, 683 candidates, including 73 women, are competing for the seats. The ruling Jharkhand Mukti Morcha, a member of the opposition's Indie bloc, will face off against the BJP-led National Democratic Alliance. The NDA allies in Jharkhand Assembly polls are the All Jharkhand Students Union and the Janata Dal United, while the Indie bloc is represented by the JMM, the Congress, the Rashtriya Janata Dal United, and of course the left parties. जी बिल्कुल। और जैसा कि रौनक, हम देख सकते हैं आज झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले फेज की वोटिंग जारी है। पहले चरण के चुनाव में 81 सीटों में से 43 सीटें शामिल हैं। झारखंड की बाकी सीटों पर 20 नवंबर को दूसरे चरण में वोटिंग होनी है। सुबह 7 बजे से आज वोटिंग शुरू हुई है, जो शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। और इन निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 683 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिनमें 17 सामान्य, 20 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित और 6 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें शामिल हैं। चुनाव के शांतिपूर्ण आयोजन के लिए 200 से अधिक सुरक्षा बल की कंपनियों को तैनात किया गया है। झारखंड चुनाव के पहले फेज में जिन प्रमुख राजनेताओं की किस्मत का फैसला होना है, उनमें पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन,
स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, राज्यसभा सांसद महुआ माझी, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा और पूर्व सीएम रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास शामिल है। पूर्व सीएम और भाजपा उम्मीदवार चंपई सोरेन सरायकेला सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, जिस पर वह 2005 से काबिज है। जनवरी 2024 में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद चंपई ने मुख्यमंत्री की भूमिका संभाली और पूर्व सीएम मधु कोड़ा की पत्नी और बीजेपी की गीता कोड़ा जगन्नाथपुर में कांग्रेस नेता सोना राम सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। जी बिल्कुल दुलमनी, so the lot at stake as far as Jharkhand is concerned as well. The Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma, who is also the BJP's election co-in-charge, had campaigned extensively in Jharkhand in the run-up to the assembly elections. वही महिलाओं को थोड़ा मिलना चाहिए, उसका सेफ्टी होना चाहिए, यहाँ उसकी कमी है ना, थोड़ा बदलाव चाहिए हम लोग को भी। मुद्दा है कि देश स्वशासित हो और ठीक ठाक से झारखंड चले, ये मुद्दा ही है। क्योंकि मैं स्वाधीनता का पहले से जन्मा हुआ हूँ, मैंने सब इलेक्शन में वोट दिया हूँ, इसलिए ये भी इलेक्शन है, शायद हमारी ज़िंदगी के लास्ट इलेक्शन होगा, इसीलिए मैं आया हूँ। हमारे मैडम दोनों वी आर बियॉन्ड बिफोर दैट एज, जब भारत आज़ाद नहीं थी, और उसके बाद आज़ादी के बाद तो मैं दे ही रहा हूँ दोनों मिलके। इन सीटों पे जो विकास होगा, इन सीटों पे जो जनप्रतिनिधि होगा, वो आपके विचारधारा का होना चाहिए, जो आप ठीक समझते हैं वो होना चाहिए। सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, अपने मताधिकार का प्रयोग करें और अपनी सरकार को, अपने विधायक को, अपने जनप्रतिनिधि को चुनें। शिक्षा, रोजगार, युवाओं से संबंधित दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। तो जब युवा निश्चित रूप से वोट डालने जाता है तो इन सब विषयों को ध्यान में रखते हुए All right, so that is of course how the things are unfolding in Jharkhand. Meanwhile, Wayanad is also set for a fierce three-way electoral contest which it is witnessing, with Congress General Secretary Priyanka Gandhi Vadra making her debut, aiming to retain the party's stronghold and increase the victory margin her brother Rahul Gandhi secured in the past two Lok Sabha elections. The by-election in Wayanad, which has over 14 lakh voters, was necessitated after Congress leader Rahul Gandhi vacated the seat and chose to represent Raebareli in the Lok Sabha. Polling began at 7 a.m. in over 1,000 booths across the constituency, with special security measures implemented at locations with a history of Maoist activity or identified as trouble-prone. The district administrations have deployed several companies of the Central Reserve Police Force and the Armed Police Battalion to maintain security during elections across 7 assembly segments. Well, the preparations also include setting up 24-hour control rooms and round-the-clock police patrolling ahead of the polling. Meanwhile, the Malappuram district administration has reported substantial seizures since the implementation of the model code of conduct, including drugs and alcohol. और यहाँ अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि झारखंड में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 43 सीटों पर जहां मतदान के साथ ही 10 राज्यों की 31 विधानसभा और केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर आज उपचुनाव हो रहे हैं। यहाँ 10 राज्यों की 31 विधानसभा सीटों में से 28 विधायकों के लोकसभा चुनाव में सांसद बनने की वजह से ये सीटें खाली हुई है। और केरल की वायनाड सीट की बात करें तो यहां आज उपचुनाव हो रहा है। राहुल गांधी ने यह सीट छोड़ी थी। दरअसल राहुल वायनाड के साथ रायबरेली सीट से भी सांसद चुने गए थे और इसके बाद ही उन्होंने रायबरेली सीट अपने पास रखने का फैसला किया। अब इस सीट से उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा अपनी किस्मत आजमा रही हैं। कांग्रेस का राज्य में यूडीएफ से गठबंधन है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का सक्रिय संसदीय राजनीति में कदम रखने का सपना इसके साथ ही पूरा होगा या नहीं, इसका फैसला वायनाड के मतदाता आज उपचुनाव में करेंगे। उपचुनाव में करीब 14 लाख मतदाता 16 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर रहे हैं। साथ ही केरल में चिलकारा विधानसभा सीट पर भी आज उपचुनाव हो रहा है। As I've said many times before, my expectation is that the people of Wayanad give me the chance to repay the love and the affection they've shown me, and to work for them and to be their representative. I don't think today is a day of talking about these controversies.
I think it's the day for polling right now, and I just hope that everybody exercises their democratic right, comes out and votes. Will you cross the majority of Rahul? That is to be seen. We will see. और वहीं भाजपा ने नव्या हरिदास को यहां चुनावी मैदान में उतारा है. We are fully confident on winning the elections because that's a response that we are getting from the public. 2 days back we consolidated our public gatherings and everything. There were huge support from the public this time, very different from the other time. And for as far as the Congress is concerned, in their rally itself, people from North India came to support them, but not a huge support from the ground. There are so many issues in this Wayanad Mandal in different sectors, and they need to be addressed. The point is that Rahul Gandhi have never addressed this issue in the parliament in the last 5 years. So the same is going to happen if Priyanka Vadra is coming for the next 5 years. They have never been involved with the people of the Wayanad to seek their real requirements or to address these requirements in the parliament. So they have never been in the ground level. People of this community need a person who can work with them in the ground level, and those who can address their issues in the parliament as well to find a solution. And as you said, the Congress is trying to influence the voters by providing kits this time, providing money, liquor, everything, because there is a fear factor for Congress that they are going to lose this election. All right, we have breaking news coming in at the moment, viewers. Tensions have erupted in the Samaguri constituency. Situation has turned tense at a polling booth in Salmari as there has been a clash between Congress and BJP workers. Reports have also come in that there has been a scuffle even inside the polling booth. Police, meanwhile, have brought the situation under control. So, big breaking news coming in, viewers, at this point in time. Tensions have erupted in the Samaguri constituency where the situation has turned tense at a polling booth in Salmari as there has been a clash between Congress and BJP workers. Reports have also come in that there has been a scuffle even inside the polling booth. Police have meanwhile brought the situation under control, and let's hope it stays that way because this seat has been notorious for witnessing several instances of violence in the run-up to the polls. And today, once again, we're witnessing tensions erupting in Samaguri, where reports are coming in that a polling booth in Salmari has seen a clash between Congress and BJP workers, and what we are being given to understand is that a scuffle took place even inside the polling booth. But thankfully, however, police seems to have been able to bring the situation under control, and hopefully that is the last of that. Dulumani, so this is indeed something of a concerning matter, isn't it? There were already quite a few incidences that rocked Samaguri in the run-up to the polls, and now once again something similar we are witnessing on polling day as well. जी बिल्कुल, जैसा कि बीते दिनों देखा गया था चुनाव प्रचार के दौरान भी सामग्री में काफी हंगामा हुआ था. अब सोलमारी में वोटिंग के बीच माहौल तनावपूर्ण हो गया है. कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट की खबरें सामने आ रही हैं. पुलिस ने यहां परिस्थिति को फिलहाल काबू में कर लिया है. यहाँ इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है. सामग्री के सोलमारी में वोटिंग के बीच ही माहौल तनावपूर्ण हो गया है. कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच यहाँ मारपीट की खबरें सामने आ रही हैं. पुलिस ने फिलहाल परिस्थिति को काबू में कर लिया है. Ji bilkul Dulmani, and now what you're seeing on your screens are the visuals coming in from the incident side. Already you can see a large number of people have gathered there, and you know the visual speaks for itself. You can make out from the visuals that you know the situation is pretty tense over there. The people are also having a word with the security forces who are on the ground, who are on election duty right now, and also you can see special forces also stationed there to keep the situation under control. Hopefully there is no further untoward incident that disrupts the polling process today. At this point, viewers, we'll take a very short break here. Don't go anywhere. Live coverage to continue on the other side. Stay tuned.
This is my Northeast. Here, life is not that easy. That is why the people here don't give up so easily. And Star Cement was born in this very land. Star Cement, har ghar mein star. New Yamaha Race CR Street Rally. মোৰ দেউতাই মানে কি ইনে গাঁৱতে গুনগুনাই থাকে কেতিয়াবা ষ্টুডিঅ'ত সোমাবৰ কাৰণে ভয় লাগে News to keep you ahead. Evening Prime, every day at 7 p.m. Don't like the inverted image? Get the real picture. Welcome back, viewers. We continue with our live coverage of Voting Day Live as 6 constituencies are going to Bypolls today, 5 in Assam and 1 in Meghalaya. And of course, on your screens are the visuals of the people, including leaders themselves, who cast their votes earlier today and are flashing the indelible ink on their fingers, which is a celebration of the festival of democracy. Earlier today also, our editor-in-chief Wasbir Hussain spoke with Silchar MP Parimal Shuklabadya on the contest underway in Dholai constituency. Let's listen into their conversation. परिमल शुक्लबद्या जी नमस्कार। आप वोट दिए, आप लाइन में खड़े रहे, आप वोट डाले, आपको कैसा लग रहा है, क्या फील हो रहा है आज? देखिए बहुत अच्छा लग रहा है। पहला दफे मैं 91 से आज तक पहला दफे मैं कोई विधानसभा चुनाव में कोई अपना पार्टी का अलग सा हम लोग इधर में बाई इलेक्शन में हम लोग उम्मीदवार खड़ा किया निहार रंजन दास को। इस बार वोट देके बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये डेमोक्रेसी में आपका भी जानकारी है कि डेमोक्रेसी हमारा एक पर्व होता है और ये इलेक्शन पर्व में हम लोग हिस्सा लिया राष्ट्र निर्माण के लिए। राष्ट्र सुख समृद्धि शांति का वातावरण लेके आता है और इसलिए राष्ट्र निर्माण का लक्ष्य में भाजपा इस बार असम विधानसभा का जो बाई इलेक्शन चल रहा है धलाई में, इसमें निहार रंजन दास को उम्मीदवार दिया है और निहार रंजन दास को भाजपा में वोट देके बहुत अच्छा लग रहा है। तो परिमल शुक्लबद्या जी, ये पहले दफे आप संसद के रूप में वोट डाले हैं, ये आपका क्या मायने रखते हैं आपके लिए? संसद के रूप में ये पहले दफे आप वोट डाले हैं। जी सही बात है, मैं संसद का रूप में पहला दफा वोट डाला हूं। ऐसा है कि मैं पहले आपको बोला संसद
या तो विधानसभा या तो पंचायत, हर जगह पे ही राष्ट्र निर्माण का लक्ष्य में ही भाजपा वोट में हिस्सा लेता है। और आज का दिन पे भी हम, क्योंकि आपका जानकारी है 21 में हमको 5 साल के लिए हमारा धलाई का जनता जनार्दन ने हमको विधानसभा में भेजा था, मगर बीच में संसद निर्वाचन में पार्टी का उम्मीदवार मैं हुआ। वो पार्टी का उम्मीदवार होने का बाद हमारा सिलचर लोकसभा का जितना निर्वाचक मंडली है, इन लोग का आशीर्वाद से मैं यहाँ से चुनकर गया पार्लियामेंट में। मगर ये जो स्थान खाली हुआ, इसमें आज का दिन पे निहार बाबू या निहार रंजन दास वो उम्मीदवार है भाजपा का। तो पहला दफे सांसद होने का बाद में मैं पहला दफे ये चुनाव में हिस्सा लिया, बहुत अच्छा लगा। मैं उम्मीद रखता हूँ कि निहार रंजन दास जाके माँ भारती के लिए बहुत अच्छा काम करेगा। अच्छा, परिमल बाबू, आप तो असम के एक वरिष्ठ नेता है, आप बीजेपी का, भाजपा का भी आप वरिष्ठ नेता है, असम का आप वेटरन पॉलिटिकल लीडर है, तो आपका क्या मानना है ये जो उपचुनाव है, ये क्या 2026 में जो असम में विधानसभा का निर्वाचन होंगे उसका क्या एक रेफरेंडम हम लोग कह सकते हैं? देखिए, आपने बात सही बोला, क्योंकि हमारा 26 का जो चुनाव है, ये चुनाव तो आने वाला है, नथिंग टू द डू। इसमें ज्यादा से ज्यादा 1 साल है हम लोग का हाथ में। ये चुनाव में आप लोग देख रहे हैं, आदमी जैसा एक उत्साह उमंग के साथ उभर कर आ रहा है वोट डालने के लिए, भाजपा को वोट डालने के लिए। और मैं समझता हूँ कि ये 26 का चुनाव में भी ऐसा ही पूरा असम का जितना हम लोग वोटर्स हो, हम लोग उमंग के साथ भाजपा का सरकार बनाने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। हम लोग ऐसा ही वोट डालते रहेंगे। तो डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी का नेतृत्व जो सरकार है असम में, उनका ये जो परिणाम निकलेगा, उनका 26 का इलेक्शन में इनका क्या प्रभाव पड़ेंगे आपका हिसाब से? देखिए, हर चुनाव का एक प्रभाव होता है। पहला बात है जो यहाँ से चुन जाएगा वो तो काम करेगा, और सबसे बड़ा बात है कि जिस पार्टी से चुनकर जाएगा जरूर ये पार्टी ही 1 साल का अंदर भाजपा छोड़ के अलग सा कोई पार्टी क्या काम करेगा समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, मेरा जानकारी नहीं है। इन लोग तो हर टाइम में ही बोलता है, इलेक्शन का पहले ही फटाफट खटाखट करके भेज देगा, क्या करेगा, तो बहुत सारे बात है। मगर मैं उम्मीद रखता हूँ आज का दिन पे डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी का नेतृत्व में जैसा काम चल रहा है, मोदी जी का नेतृत्व में जैसा पूरा इंडिया में काम चल रहा है, तो हर जितना निर्वाचक मंडली है, तो इन लोग सोचेगा कि राष्ट्र के लिए ही तो वोट डालना है। राष्ट्र निर्माण होगा तो अपना सुख समृद्धि, अपना शांति आने वाला है। तो इसलिए नेक्स्ट 26 में भी डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा का नेतृत्व में जो चुनाव अभी चल रहा है, ये बाई इलेक्शन 26 में चलेगा अपना पार्टी का, तो अच्छा ढंग से बहुत वोटों से अपना जो मेजोरिटी आने वाला है, मेजोरिटी आने का बाद जरूर पार्टी तय करेगा कौन सीएम होगा कौन नहीं होगा, तो पार्टी का जी। सो बहुत धन्यवाद परिमल शुक्लभद्र जी, नॉर्थ ईस्ट लाइव से बात करने के लिए। Right, so very candid conversation there. Meanwhile, a CPI-ML candidate from Bihali constituency, Lakshmikanta Kurmi, who is contesting with the backing of the United Opposition Alliance, also cast his vote today. We have reactions from him. Let's listen in. মই নিশ্চিতভাৱে মই বিহালী সমষ্টিৰ ৰাইজক মই জানো, মই বহুত সৰুৰে পৰা মই সমাজৰ আৰু এই ৰাইজৰ লগত মই জড়িত আছোঁ। গতিকে এইবাৰ এই বাহুবল ধনবলৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজে ভোট দিব, এই মই আশাবাদী, আৰু বৃহৎ পৰিৱৰ্তন এই বিহালী সমষ্টিৰ পৰাই হ'ব। ৰাইজেই ৰজা। আজি বিহালী সমষ্টিৰ চুকে কোনে ৰাইজে ভোট প্ৰদান কৰিব, আৰু ৰাইজে যি সিদ্ধান্ত ল'ব লাগে ইতিমধ্যে লৈছে, আৰু এটা উচিত সিদ্ধান্ত ৰাইজে ল'ব বুলি মই আশাবাদী। সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত, উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত আৰু
আমাৰ গণতন্ত্ৰ ৰক্ষা কৰাৰ স্বাৰ্থত ভোট প্ৰদান কৰিব বুলি মই আশাবাদী আৰু এইটোৱে মই ৰাইজৰ ওচৰত আহ্বান জনাইছোঁ And we also have reactions of Congress candidate from Sidli, Sanjeev Wari, who cast his vote just a short while back today. Let's take a look. আজি ইয়াত ভোট দি আমি খুব ভাল লাগিছে খুব শান্তিপ্ৰিয় আৰু সকলো মনত এটা হাঁহি সবে ভোট দি আছে সেইকাৰণে খুব ভাল লাগিছে প্ৰায় সকলে বিপিএফ ইপিপিএল দুটাকৈ চালে 17 বছৰ বিপিএফে কৰিলে এবাৰ 4 বছৰ যিটো ইপিপিএলে কাম কৰিলে সিহঁতৰ যিটো কাম এই কামত ৰাইজে সন্তুষ্ট নহয় আৰু ৰাইজে যিটো বিচাৰিছে সেইটো হোৱা নাই সেইকাৰণে ৰাইজে মোক ভোট দিব একচুয়ালি পুৰানা হিচাপত 2,50,000 যদি ধৰো আমি 70,000 প্লাস পাম All right, so lots of reactions coming in from some of the candidates themselves, all of whom seem to be very confident of their victory. We'll slip into a very short break here, viewers. Don't go anywhere. Lots more coming up on the other side. Stay tuned. कफ को जो करता है नित्य खंड खंड अशुद्धता का भाव भी इसको न छू सके कभी ये जीवनीय शक्ति है इसमें न अतिशोक्ति है आयुर्वेद का ये सार है आरोग्य का प्रकाश है ये दिव्य है अमूल्य है पतंजलि च्यवनप्राश है পতঞ্জলি কচ্চি ঘানি বিশুদ্ধ সৰিয়হৰ তেলত বিশুদ্ধতাৰ তীব্ৰতা এনেকুৱা যি লৈ আহে চকুলৈ পানী আৰু যেতিয়া পৰিবেশন কৰা হয় তেতিয়া সকলোৰে মুখলৈ আহে পানী সোৱাদ আৰু বিশুদ্ধতাৰ সংযোগ পতঞ্জলি কচ্চি ঘানি সৰিয়হৰ তেল News to keep you All right, welcome back, viewers. We are bringing you live visuals from all the constituencies going to Bypolls at this point in time. All right, we're getting live visuals of Dubri MP Rakibul Hussain, who has just come out to cast his vote right now, and he is accompanied by none other than his son and the Congress candidate from Samuguri, Tanzil Hussain. So both father and son together, as one candidate is hoping for the support of the people, while his father, the Dubri MP Rakibul Hussain, has come out to cast his vote. Let's take a look and see whether they speak to the media after casting their votes. Of course, a heavy presence of media persons as well around this place as the Dubri MP has come out to cast his vote. What do you have to say, Dulumani? जी बिल्कुल तंजिल हुसैन की अगर बात करें तो वो पहले भी यहाँ से विधायक रह चुके हैं लेकिन जिस तरह से देखा गया चलिए पहले सुनते हैं आज मतदान प्रक्रिया को लेकर क्या कह रहे हैं प्रथमे सामग्रीबासी राइजक सकलोके मैं धन्यवाद और कृतज्ञता जनाइছো जे তেওঁলোকে বিভিন্ন त्यक्ततार মাজতো হলো ক্যাম্পেইনিং শেষ হল আৰু আমি ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবৰ কাৰণে সকলো আজি ইয়াত ওলাই আহিছে আৰু মই যেহেতু ইয়াৰ ভোটাৰ গতিকে আমাৰ পৰিয়াল লৈ মই আজি ইয়াত ভোটদান কৰিলো মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো যে সকলো দেখিছো এটা উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশেৰে ওলাই আহিছে আৰু আপুনি যে কৈছে যে পুৱাবেলৰ পৰা পৰিঘটনা এনিবাৰ যেনে ধৰণৰ হৈছে মই ভাবো পৃথিৱীত এনে ধৰণৰ ঘটনা উপনিৰ্বাচনৰ এবাৰ যেটো হৈছে কেতিয়াও হোৱা নাই যোৱা কালি আপোনালোকে জানে যে এখন লিষ্ট লৈ লৈছে বিভিন্ন অফিচাৰে বিভিন্ন ঘৰত গৈ দুখীয়া মানুহবিলাকক ৰেড কৰিছে সন্মানীয় কিছু মানুহক গৰু চুৰৰ কেছ দি গৰু চুৰকিটা বহি আছে কোত আপোনালোকে জানে কেছ দি মানুহক লাঞ্ছনা কৰিছে সেইবিলাক মানুহে বহুত বেয়া পাইছে আৰু সেই কাৰণেও ধৰি লওক এটা যেটো নীৰৱ ভোট হেতু যিসকলে কৰিছে তাৰ বিপৰীতে গৈছে আজি যোৱাকালি নোহোৱা নপূজা কথা মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকো প্ৰায় 2টামান বজাত এটা আপলোড কৰিছো মোৰ নগাঁৱত থকা ঘৰত
So that is, of course, the Dubri MP, Rakibul Hussain, speaking to the media after having cast his vote. He seems to be a very confident man, isn't it, Dulumani, regarding the prospects of his son, Tanzil Hussain? जी बिल्कुल, और जैसा कि हाल के दिनों में देखा गया था, वे अपने बेटे के लिए चुनाव प्रचार में जोर शोर से लगे हुए थे। अपने बेटे की जीत को लेकर वह पूरी तरह से एक बार फिर से आश्वस्त दिखे थे, और इसी तरह से आरोप प्रत्यारोप भी काफी देखे गए थे भाजपा और कांग्रेस में। Absolutely, absolutely. That is something that we are witnessing today, a tight contest between the parties. The Congress confident at the same time, the BJP confident as well. All right, coming back to Jharkhand, viewers, the first phase of voting for 43 of the 81 constituencies in 15 of the 24 districts of Jharkhand is also currently underway. It's a battle of prestige for both the ruling JMM-led alliance and the BJP in the state. Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma, who is also the BJP's election co-in-charge for Jharkhand, played a key role in the BJP's campaign for Jharkhand. And of the total 1,203 candidates in the fray in Phase 1 and Phase 2, the fates of 685 candidates will be decided today. A direct fight is underway and is on the cards between the NDA and the Indie bloc. The fight will be between the ruling Jharkhand Mukti Morcha along with its Indie bloc partners, Congress and RJD, while the NDA bloc includes the BJP, JDU, LJP and the AJSU. Another party that is in the race is the Jharkhand Loktantrik Krantikari Morcha, or the JLKM. Key candidates in the first phase are former Chief Minister Champai Soren, who switched over to the BJP from the JMM ahead of the polls. Then we also have Health Minister and Congress leader Banna Gupta, Rajya Sabha MP Mahua Maji, Geeta Koda, who is the wife of former Chief Minister Madhu Koda, and Purnima Das, the daughter-in-law of former Chief Minister Raghubar Das. Among the key constituencies are Saraikela, which has been represented by Champai Soren since 2005, Jamshedpur East, Jamshedpur West, Jagannathpur, where Geeta Koda, former Congress Lok Sabha member, is contesting on a BJP ticket. और चलिए रौनक, इस वक्त सुनते हैं रघुबर दास क्या कह रहे हैं। महिला, अगर महिला नहीं होती तो हमारी देश की जो पारिवारिक कुटुंब व्यवस्था हो नहीं चलती। तो महिलाएं आधी आबादी जब तक आगे नहीं बढ़ेगा, ना राज्य आगे बढ़ेगा ना देश आगे बढ़ेगा। और इसी को ध्यान में रखकर हमारी मतदाताएं, बहनें, माताएं अपने मत का प्रयोग अधिक से अधिक कर रही है। ये सिद्ध करता है कि लोकतंत्र में हमारी महिला शक्ति, नारी शक्ति बढ़ चढ़कर भाग ले रही है, तो उस नारी शक्ति का मैं सम्मान करता हूँ। All right, so reactions coming in from Jharkhand as well. And as I was saying, in the last assembly elections in the state, back in 2019, in fact, the JMM had won 30 seats, the BJP had won 25, down from 37 in 2014, and the Congress won 16 seats. A coalition of the JMM, Congress and the Rashtriya Janata Dal formed the government after the last assembly elections, with Soren assuming the role of chief minister. तो झारखंड में आज विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग हो रही है। 15 जिलों की 43 सीटों पर हो रहे मतदान में मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस जेएमएम गठबंधन के बीच है। ये चुनाव तय करेगा कि झारखंड में हेमंत सोरेन फिर सत्ता में आएंगे या फिर भाजपा अपना परचम लहराएगी। जिन 43 सीटों पर वोटिंग हो रही है उनमें 17 जनरल, 20 एसटी और 6 एससी सीटें हैं। वोटिंग के लिए 20,281 जगहों पर कुल 2,09,562 पोलिंग 29,562 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। इनमें से 5,042 शहरी और 24,520 बूथ ग्रामीण इलाकों में हैं। इनमें से 543 में से 29 सीटों को संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्र घोषित किया गया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम बताए गए हैं और आज पहले चरण में 683 कैंडिडेट झारखंड में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। All right, we seem to be getting reactions. Let's listen in. हमसे यही कहना चाहूंगी हमारी देश की हमारे राज्य की देवतुल्य जनता को कि हमारे राष्ट्र हित के लिए, हमारे
राष्ट्र को, हमारे देश को, हमारे राज्य को मजबूत करने के लिए अपना मतदान दे और अपने कर्तव्य को निभाए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है घरों से निकलकर जागरूक होकर और लोगों को जागरूक करें कि वो मतदान अवश्य करें। जिस तरह से आप इस बार चुनाव में इस पर खड़ी हुई है, एक मंडी में बीजेपी की ओर से उम्मीदवार के तौर पे लगातार प्रचार में थी, जनता के साथ जुड़ी, क्या लग रहा है कि एक चैलेंज है अजय कुमार आपके खिलाफ यहाँ पे किस तरह से कैंडिडेट के तौर पे खड़े हैं? देखिए आज जो है हमने तैयारी बहुत अच्छे से की है, बाकी आज जो है परीक्षा का दिन है, आज इम्तिहान का दिन है आज। बाकी जनता ने सारा कुछ देखा है, हमारी देवतुल्य जनता ने प्यार और आशीर्वाद से तो मुझे भर दिया है और मुझे और ऊर्जा दे दी है। लग रहा है कि ये सीट आप लगातार जिस तरह से रघुवर सर इस सीट को 4 बार वो जीत चुके हैं जी। एक पारिवारिक आप भी उनके बहू है, क्या कहना चाहिए, उसका कायम रखेंगे उस? तो ये आपने सुना भाजपा उम्मीदवार पूर्णिमा दास की प्रतिक्रिया, जो उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास की बहू हैं। और यहाँ पर जैसा कि देखा जा सकता है आज 15 जिलों की 43 सीटों पर मतदान हो रहा है। मुख्य मुकाबले यहाँ भाजपा और कांग्रेस जेएमएम के बीच है। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पूर्वोत्तर की दो राज्यों असम और मेघालय की कुल 6 सीटों पर आज उपचुनाव हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आज झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के तहत विधानसभा के सीटों के लिए मतदान हो रहा है। झारखंड की बात करें तो यहां सुबह 9 बजे तक 13.4% मतदान दर्ज किया गया है। ये लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आज झारखंड में 15 जिलों की 43 सीटों पर मतदान हो रहा है। जी बिल्कुल दुलमनी, a very interesting contest underway as in the first phase of the Jharkhand Assembly elections. Dulimani, let's not forget, there was a lot of talk about infiltration being one of the main poll planks in the run-up to the Jharkhand elections. It has been the main poll plank of the BJP, isn't it? Driving out infiltrators, giving back power to the tribal communities in Jharkhand. That has been the main poll plank, and we saw how the BJP star campaigner Himanta Biswa Sharma had also spoken extensively on this matter in the run-up to the elections. और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मतदान केंद्र से। लगातार झारखंड में फिलहाल अर्जुन मुंडा यहां मतदान केंद्र पहुंचे हैं। वे अपनी पत्नी के साथ यहां मौजूद हैं और उनकी पत्नी एक उम्मीदवार यहां पर बनकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंची है। और जैसा कि रौनक आपने कहा कि हाल के दिनों में जैसा देखा गया था, झारखंड के चुनावों को लेकर भाजपा ने काफी जोर आजमाइश की है, काफी ताकत यहां पर झोंकी है। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जो उपचुनाव में केवल यहाँ असम के उपचुनाव 5 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर केवल 3 दिन ही उन्होंने प्रचार किया, लेकिन इसके बावजूद वे झारखंड के चुनाव सह प्रभारी का जिम्मेदारी संभालते हुए उन्होंने वहां पर जमकर चुनाव प्रचार किया। लगातार जैसा कि देखा गया था, वे सुबह अगर वहां रहते हैं झारखंड में चुनावी सभाओं को संबोधित करते हैं तो शाम के वक्त वे असम में आकर यहां की 5 सीटों की उपचुनाव की तैयारियों का जायजा लेते हैं। यहां की असम की अन्य मुद्दों को लेकर वे यहां पर सजग देखे गए हैं। और झारखंड की अगर बात करें तो यहां पर भाजपा ने इस बार रौनक घुसपैठियों और बांग्लादेशियों का मुद्दा छेड़ा है। तो ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। झारखंड से आज 15 जिलों की 43 सीटों पर पहले चरण के तहत मतदान है। दूसरा चरण यहां 20 नवंबर को होना है। And of course, as we speak about Jharkhand, let's also not forget the 3-way fierce contest that is also underway in Wayanad in Kerala, with Congress General Secretary Priyanka Gandhi Vadra making her debut, the much talked about debut, aiming to retain the party's stronghold and increase the victory margin of her brother Rahul Gandhi, who had secured in the past 2 Lok Sabha elections. The by-election in Wayanad, which has over 14 lakh voters, was necessitated after Rahul Gandhi had decided to vacate the seat and chose to represent Raebareli in the Lok Sabha.
Polling began, of course, at 7 a.m. sharp in over 1,000 booths across the constituency, with special security measures implemented at locations which have a history of Maoist activity or identified as trouble-prone. The district administrations have also deployed several companies of the Central Reserve Police Force and the Armed Police Battalion to maintain security during elections across 7 assembly segments. The preparations also include setting up 24-hour control rooms and round-the-clock police patrolling ahead of the polling. Meanwhile, the Malappuram district administration has reported a substantial number of seizures since the implementation of the Model Code of Conduct, including drugs and alcohol. जी रौनक, और जैसा कि देखा जा रहा है, आज यहां लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की अग्नि परीक्षा है और इस दौरान आज जब वह मतदान केंद्र पहुंची, लोगों से भी उन्होंने मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने उम्मीद जताई कि वायनाड के लोगों से उन्हें भरपूर प्यार और स्नेह मिलेगा, उन्हें इस प्यार और स्नेह का बदला चुकाने का मौका मिलेगा। उन्होंने लोगों के लिए काम करने और उनका प्रतिनिधि बनने का मौका देने की भी अपील की। लोगों से उन्होंने बढ़ चढ़कर मतदान की अपील की है। सुनते हैं प्रियंका गांधी ने इस दौरान क्या क्या कहा था। Yes, absolutely. No doubt all eyes would be on the debutante Priyanka Gandhi Vadra. Can he follow in the footsteps of her brother Rahul Gandhi and secure the mandate of the people of Wayanad? That is something that she will be aiming for. We also saw her campaigning extensively in Wayanad in the lead up to the elections. तो ये तस्वीरें सामने आई है जहां अर्जुन मुंडा ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर वो बाहर आ चुके हैं मतदान केंद्र से और तस्वीरें यहां हम आपको सीधी दिखा रहे हैं। अपनी पत्नी के साथ वे यहां मौजूद हैं। उनकी पत्नी भी एक उम्मीदवार के तौर पर खड़ी है। तो आज झारखंड के 15 जिलों की 43 सीटों पर पहले चरण के तहत मतदान हो रहा है। दूसरा चरण यहां 20 नवंबर को होना है। Yes, of course, Dulumani, needless to say, the entire focus would be on tribal welfare, the welfare of the tribal community in Jharkhand. That will be in complete focus as far as the first phase of the Jharkhand Assembly elections are concerned. All the parties are looking to secure the mandate of the tribal community, the welfare of the tribals, driving out infiltrators, bringing illegal influx under control are issues that are in main focus in Jharkhand. Let's listen into what Arjun Munda is about to say. चुनाव जाना है ना इनको, तो प्रत्याशी है। मैं यहाँ आज खिलाड़ी साहिब में मतदान करने के लिए आया हूं। मतदान हर किसी का एक मौलिक अधिकार 5 साल में जिसका उपयोग अपने राज्य के हितों को ध्यान में रखते हुए विधानसभा के लिए और देश के लिए पार्लियामेंट का चुनाव में मतदान करना चाहिए। इसके अलावा भी स्थानीय निकायों की चुनाव होती है, सब में भाग लेना चाहिए। जनप्रतिनिधि व्यवस्था जितनी मजबूत होगी, लोकतंत्र उतना मजबूत होगा। जन आकांक्षाओं को समझ करके जब जनता अपना मत देती है तो जनप्रतिनिधि को इस बात का ध्यान रखते हुए कि राज्य के नीतियों में, देश के नीतियों में आम जनता और उनके हितों की रक्षा की जा सके। आज जो हमने मतदान किया है, इस बात को ध्यान में रखते हुए राज्य के भविष्य को हम उज्जवल भविष्य की तरफ कैसे ले जाएं। यहाँ से जो प्रतिनिधि जिनके पक्ष में हमने मतदान किया है, हमें आशा है कि इसी तरीके से खरसवां की जनता मतदान आज कर रहे हैं और हमारे प्रत्याशी जीतेंगे और आने वाले दिनों में नीतिपरक विषयों पर एक महत्वपूर्ण भूमिका जहां निभाएंगे, वह विकासात्मक
कार्य योजना में उसकी अच्छी भागीदारी होगी कि वो जन आकांक्षाओं को पूरा करने में सफल हो रहे हैं। मैडम वोट डालने आई यहाँ पे, आप नाम क्या है? आज वोट इस क्षेत्र में पड़ रहा है, मैंने इस फर्स्ट फेज का वोट है, तो उसमें मैं सभी मतदाताओं से कहना चाहूँगी कि अपना मताधिकार का उपयोग करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। इसी से सारे इस विधानसभा जो झारखंड प्रदेश का दिशा और दशा तय होगा, इसीलिए मैं कहना चाहूँगी सभी कोई अपना मत का उपयोग करें। आप भी इस बार मैम चुनाव लड़ रही हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या माहौल है, किस तरह से वोटर जो है निकल रहा है घरों से? काफ़ी लोग उत्साहित हैं, वोटिंग के लिए सुबह से लाइन लगी हुई है और इस बार लोगों की सोच बदली है, इस बार बदलना चाहते हैं लोग। लगता है रिजल्ट फेवर में आएगा? अब देखिए, सबके आशीर्वाद, सबके शुभकामनाएं और ऋतु समय के साथ। जी ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू। प्रिया, झारखंड से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे। इस वक्त मीरा मुंडा ने, जो कि खुद भी एक प्रत्याशी हैं, उन्होंने लोगों से अपील की है कि लोग बढ़ चढ़कर आए और पहले चरण में आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। लगातार हम आपको आज चुनाव और उपचुनाव की तस्वीरें दिखाते रहेंगे, अपडेट्स आपको पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। বিশ্বাস কৰাৰ আগতে পৰীক্ষাটো কৰি লওঁ মেডাম। পতঞ্জলি হানিক পৰীক্ষা কৰা হৈছে বিশ্বৰ প্ৰসিদ্ধ লেবত, আৰু পতঞ্জলি হানিয়ে পাছ কৰিছে বিশুদ্ধতাৰ 100ৰো অধিক ইণ্টাৰনেশ্যনেল পেৰামিটাৰ্ছ। সেইটো হৈছে মোৰ বিশুদ্ধতাৰ নায়ক পতঞ্জলি হানি, 100ৰ ভিতৰত 100। মোৰ ছাল যেন কবিতা, কাৰণ ইয়াৰ চিৰসংগী ইটালিয়ান অলিভ অইল আৰু ভেষজৰ গুণেৰে সমৃদ্ধ জেক অলিভ অইল বডি অইল। কবিতাৰ দৰে চালে জগাই তোলে মনত নতুন সুৰ। মোৰ দেউতাই মানে কি এনেই গাঁৱতে গুণগুণাই থাকে কেতিয়াবা। ষ্টুডিঅ'ত সোমাবৰ কাৰণে ভয় লাগে। পাছে পাছে ঘূৰাই বডিগাৰ্ডে বনালি। Don't like the inverted image? Get the real picture. News to keep you ahead. Evening Prime, every day at 7 p.m. Welcome back, viewers. This is the polling day and we are bringing you the live coverage from across the 6 constituencies in the northeast, as well as the assembly elections, the first phase of the Jharkhand assembly elections, which is also currently underway. The first phase, of course, voting underway for 43 out of the total 81 constituencies in 15 of the 24 districts of Jharkhand is currently underway. It's a battle of prestige, viewers, for both the ruling JMM-led alliance as well as the BJP in the state. Assam Chief Minister
Himanta Biswa Sharma, as we had seen, played a key role in the BJP's campaign as far as Jharkhand is concerned as the state election co-in-charge. So, Dholai, talking about the elections underway in Jharkhand, it can largely be seen as a battle between the Sorens, isn't it? You have Hemant Soren on one hand and you have Champai Soren on the other hand. A lot was talked about Champai Soren's jump from the JMM to the BJP in the run-up to the polls, and now it just remains to be seen which Soren, so to speak, the people of Jharkhand actually give their mandate in favor of, isn't it? जी बिल्कुल। और जैसा कि देखा गया था बीते दिनों, एक तरफ जहां हेमंत सोरेन अपनी प्रतिष्ठा के लिए लड़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ चंपई सोरेन जेल से छूटकर यहां वापस आए थे अपनी सीट पर काबिज होने के लिए। इस दौरान दोनों के बीच काफी टकरार दिखी थी। अब जाके फिर जब 81 सीटों पर 81 सीटों में से 43 सीटों पर मतदान हो रहा है। आज झारखंड की बाकी सीटों पर अगले चरण में 20 नवंबर को चुनाव होने हैं, लेकिन इस बीच भाजपा ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है, काफी अच्छा यहां पर अपनी जीत को लेकर दावा कर रही है। खास तौर पर जब एक सोरेन भाजपा में शामिल हो गए हैं तो भाजपा को काफी मजबूती मिली है, काफी दावा किया जा रहा है, काफी अहम यहां बताया जा रहा है, क्योंकि उनके आने से भाजपा काफी ताकतवर हुई है। क्योंकि जो दूसरे सोरेन की हम बात कर रहे हैं, वे अपनी साख, अपनी स्थिति, अपनी छवि के लिए काफी मशहूर रहे हैं, काफी लोगों के बीच पॉपुलर रहे हैं। जी बिल्कुल दुलमनी, the BJP is banking very heavily on the popularity of Champai Soren, and the entire poll plank has been that Champai Soren is the torch bearer of the tribals' welfare, of the development of the tribal community in the state. But on the other hand, let's not undermine the popularity of Hemant Soren, the incumbent chief minister as well. The JMM is a party that is actually banking very heavily on Hemant Soren. So by and large, it will come down to the two Sorens, and who holds more sway with the people of the state, that will decide the fate of the Jharkhand Assembly elections. जी बिल्कुल रौनक। और जैसा कि देखा गया था बीते दिनों, हमारे मुख्यमंत्री, असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा भी यहाँ पूरे जी जान से प्रचार में लगे हुए थे और लोगों से लगातार वे मिल रहे थे। यहाँ पर उन्होंने झारखंड में खासकर घुसपैठ और बांग्लादेशियों को लेकर काफी एक बड़े बयान दिए थे, काफी अहम बातें उन्होंने कही थी। Absolutely, that is another very interesting point. The BJP had left no stone unturned campaigning in the run-up to the Jharkhand Assembly elections. The top campaigners, if we talk about Amit Shah, the Prime Minister Narendra Modi himself, not to mention Himanta Biswa Sharma, the Assam Chief Minister, all of them descended upon Jharkhand to try and win the favor of the voters of the state. And the main poll plank, as I have been saying, has been the welfare of the tribal community and driving out infiltrators from the state. That is something that has been a lingering issue for the state for the longest time. And Duluman, and on that point, it's a very interesting thing that even the Assam Chief Minister had also earlier noted, there are a lot of similarities between what Jharkhand is facing and what Assam is facing in a way, isn't it? Because there too, the influx problem is something that has been plaguing the state for a long time. In Assam as well, we get to see something very similar. So a lot of similarities, and that's why, the expectations of the voters may also be on similar lines, isn't it? जी बिल्कुल। और जैसा कि मुख्यमंत्री, असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा, जो कि झारखंड में भाजपा के चुनाव सह प्रभारी की जिम्मेदारी भी उन्होंने संभाली है, उन्होंने साफ तौर पर जनसभाओं में कहा है कि जिस तरह से असम अब घुसपैठ और बांग्लादेशियों का मुद्दा काफी गंभीर बन चुका है असम में, उसी तरह झारखंड को यह मुद्दा जल्द से जल्द सुलझाना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने दावा किया कि इस मुद्दे को, इस समस्या को सुलझाने में सिर्फ भाजपा ही कारगर साबित हो सकती है। और इसी के साथ उन्होंने लोगों से वोट की भी अपील की थी, लेकिन लोगों का क्या कहना है, लोग किसे चुनते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। Absolutely. At the end of the day, let's not forget, viewers, the people are the king. The people decide the fate of the candidates. So it's up to them, the voters, to decide whom they want to, come and form the next government in Jharkhand. Meanwhile, we have reactions of JMM candidate from Ranchi, Mahua Maji, after she cast her vote today. Let's listen in to what she said.
Alright, so that is the visual of Mahua Majhi casting her vote. Today she is of course the JMM candidate from Ranchi, one of the biggest prospects of the JMM, one of the strongest candidates who is in the fray in this first phase of the Jharkhand Assembly elections. We also have her reactions after she cast her vote. Let's listen in. ये जनता का विश्वास है मेरे पे कि मैं जीत कर आऊंगी तो उनके लिए इतना काम करूंगी जो पिछले करीब 30 साल के लगभग जो विधायक जी हैं यहाँ के उन्हें मौका दिया था जनता ने लेकिन नहीं किया। उन कार्यों को वो चाहते हैं कि मैं पूरा करूं और मैंने कुछ समय में उनके साथ रहकर उनके सुख दुख में साथ देकर उनके लिए जितना काम किया है उससे मैंने विश्वास हासिल किया है जनता से और उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त होगा ऐसा विश्वास है। बीए कॉलेज, कई यूनिवर्सिटीज़, अच्छे हॉस्पिटल्स, मोहल्ला क्लिनिक, फिर आईटी सेक्टर, इस तरह की चीज़ें नहीं हैं ताकि युवा बाहर जाने को मजबूर हो जाते हैं और ख़ास तौर पर जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है उनके लिए काफ़ी परेशानी होती है पुणे, बेंगलोर या नोएडा वगैरह में जाके पढ़ाई करने के लिए और नौकरी करने के लिए। तो ये सारी सुविधाएं अगर राज्य में हो जाए, अपने राज्य में हो जाए तो यहाँ और ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, मल्टीनेशनल कंपनियां आएंगी तो यहाँ का भी विकास होगा और युवा अपने बुजुर्ग माँ बाप को बुढ़ापे में अकेले छोड़कर बाहर नहीं जाएंगे और हम लोग का सपना इस राज्य को नंबर 1 बनाने का है देश का, वो भी पूरा होगा। Alright, so those were reactions coming in from Mahua Majhi after she cast her vote. Now, let's once again come back to the region where bypolls are underway and voting is going on in full earnest. My colleague Arindam Das joins us once again from Bongaigaon, which is witnessing a very, very interesting multi-cornered contest. Arindam, where are you right now? What is going on? And, as the day progresses, are we seeing an increase in the voter footfall at the polling stations, Arindam? Yes, Ronak, since early morning there has been high voter turnout. We have seen people queuing up since 6:30 in the morning, even before the gates of the polling stations opened up for voting. So till 10 a.m. What the record we have gathered from the district officer for this Bongaigaon election is around 30% people have cast their votes. So Bongaigaon basically witnesses a high voter turnout in the previous elections. Also, it's above 80%, 90%. So this time also it's not going to be different, and it's going to be high voter turnout by the end of the day. So we can expect this time also the voters turnout to be over 90%. So right now voting is underway at all the polling stations. So 51 polling stations are there for this constituency, and 500 people have been engaged as polling agents as well as security personnel in these 51 polling stations. Elaborate arrangements have been made to ensure that free and fair polls are held. CCTV cameras are installed in all the polling stations, which is streaming live feed to the returning officer. In case there is any untoward incident, there is unfair means adopted at the polling station, immediately it can be caught at the returning officer's office. So right now polling is underway, and as I have mentioned, till 10 a.m. around 30% voters have cast their votes. There are over 33,000 voters in this constituency, and earlier also we have seen that the margin of the winning candidate is not much, since the voter size is not much, 33,000 votes. So if 90% people cast their votes, so it's above say 30,000 people will be casting their votes. So on 23rd of November it will be visible as to with what margin the winning candidate makes the last laugh, because what has been predicted this time being a multi-cornered fight and being a prestige fight for all the political parties in the fray. So whichever candidate wins will win with a very small margin, and some predicts that it's going to be as low as 500 votes, which is going to be the winning margin for the candidate who makes the last laugh.
Ronak. Absolutely. Who will have the last laugh? That indeed remains to be seen. But Arindam, looking at this from a broader perspective, Meghalaya has always been all about women empowerment. It's a matrilineal society. Women have a very strong voice in the hill state. So, keeping that in mind, how important do you see the candidature of Mehtab Chandi Sangma as well as Sadhya Rani Sangma of the TMC, both of whom are also high-profile candidates in their own right, Arindam? That's right, Ronak. They are not only the high-profile candidates but also the star campaigners for each of the political parties. And PP's star campaigner was Mehtab Chandi. In fact, for TMC, it was Sadhya Rani Sangma. So Mehtab Chandi, the wife of Chief Minister Conrad Sangma, is making her political debut in this election. So it's a prestige fight for both Mehtab Chandi as well as Chief Minister of Meghalaya Conrad Sangma, who is also the national president of the NPP. On the other hand, TMC has fielded the sister-in-law of former Chief Minister of Meghalaya and also the leader of opposition and TMC leader, Dr. Mukul Sangma. So it's going to be a prestige fight for Sadhya Rani Sangma as well as Dr. Mukul Sangma and his brother Janit Sangma, who was also a cabinet minister earlier in Meghalaya government. So both the candidates have been put in the fray, and this is going to be a prestige fight for both these women candidates, whether it be Mehtab Chandi or Sadhya Rani Sangma. On the other hand, the BJP has also fielded the vice president of the state of Bharatiya Janata Party, Bernard Marak, in this election. It's going to be a prestige fight for the Bharatiya Janata Party. And on the other hand, it's a prestige fight for the Congress party, since the last MLA from this constituency, Saleng Sangma, he was with the Congress, so that's how he was seen on the ground campaigning for the candidate Jinjang Marak. So it's a four-corner fight which is taking place in the Gambekar constituency, and we have to wait till 23rd of November when the votes will be counted and who will win this election. Absolutely, absolutely. Very interesting multi-cornered contest underway in Gambegre. Thank you very much, Arindam, for all those details. We'll come back to you again shortly. But for now, let me now go across to Bongaigaon, where my colleague Abhideep is joining us live. So Abhideep Chaudhary is joining us live. Abhideep, so basically, the Bongaigaon constituency, although has not been making the headlines for any sort of violence, it has been by and large peaceful. But whatever was going on within the AG camp did draw a lot of headlines. So how far do you think that is going to play a role as far as the outcome of the Bongaigaon bypoll is concerned, Abhideep? Abhideep, can you hear me? This is Ronak from the studio. Am I audible? It does not seem like my voice is reaching Abhideep Chaudhary. We might be facing some issues with the connection there, which will be rectified shortly. But in the meantime, viewers, as I was saying, Bongaigaon also witnessing a very interesting contest where one of them is, of course, the high-profile candidate Diptumoi Chaudhary, the wife of Fani Bhushan Chaudhary, the 8-time MLA. And at the same time, the Congress also looking to put up a very tough fight in the form of Brajanjit Sinha. But what is also interesting is that the independent candidate Sailendra Sarkar used to be a district leader of the AGP until very recently, when he rebelled against the party leadership and tendered his resignation and then decided to contest as an independent from the Bongaigaon seat. So that has made the contest in Bongaigaon all the more interesting. Earlier it was touted to be a direct fight between the AGP and the Congress, but with the coming of Sailendra Sarkar into the fray, now this can very well be said to be a three-cornered contest, isn't it, Dulumani? जी बिल्कुल। और जैसा कि अगर बात करें यहाँ पर बंगाईगांव की, तो बंगाईगांव जो है यह सीट काफी वक्त से एजीपी का ही गढ़ रहा है। फनी भूषण चौधरी यहाँ लगातार अपनी अच्छी छवि और विकासशील कार्यों के लिए लोगों के चहेते रहे हैं। लोगों ने उन्हें काफी पसंद किया है। अब उन्हीं की जगह पर उनकी पत्नी दीप्तिमयी चौधरी अपनी किस्मत आजमा रही हैं। वे पहली बार राजनीति में कदम रख रही हैं। लोगों से उन्हें समर्थन भी मिलता दिख रहा है, लेकिन
23 नवंबर को ही पता चलेगा कि लोगों ने उन्हें कितना समर्थन या कितना प्यार दिया है, कितना उन पर विश्वास जताया है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें हम कांग्रेस की, तो ब्रजेंद्र सिन्हा भी यहाँ पर काफी दमदार कॉन्टेस्टेंट के हिसाब से दिख रहे हैं। रौनक, अगर दीप्तिमयी चौधरी की बात करें तो वे एक शिक्षिका रही हैं, उनकी भी छवि काफी अच्छी रही है। वे काफी एक साधारण महिला के तौर पर ही अपनी लोगों से मिलती रही हैं। क्या जी रौनक, जैसे कि हम बात कर रहे थे दीप्तिमयी चौधरी की, तो उनकी छवि जो है लोगों के बीच काफी अच्छी रही है। लोगों के बीच उनके और उनके पति यानी कि फणिभूषण चौधरी को लेकर काफी एक अच्छा प्रचार रहा है, काफी अच्छा सहयोग रहा है लोगों के बीच उन्हें लेकर। जी बिल्कुल दुलमनी, and on that note, in Assam's Samaguri constituency, on the other hand, Dubri MP Rakibul Hussain and his son and Samaguri Congress candidate Tanzil Hussain cast their votes just a short while back today. Let's take a look at that. প্ৰথমেই সামগ্ৰীবাসী ৰাইজক সকলোকে মই ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ যে তেওঁলোকে বিভিন্ন ত্যক্ততাৰ মাজতো হ'লেও কেম্পেইনিং শেষ হ'ল আৰু আমি ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবৰ কাৰণে সকলো আজি ইয়াত ওলাই আহিছে। আৰু ময়ো যিহেতু ইয়াৰ ভোটাৰ, গতিকে আমাৰ পৰিয়াল লৈ মই আজি ইয়াত ভোটদান কৰিলোঁ। মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে সকলো দেখিছোঁ এটা উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশেৰে ওলাই আহিছে। আৰু চবকে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যোনে যোনে এতিয়াও ঘৰত আছে তেওঁলোকে আহি পেলাই ভোট দিয়ক, কিয় ভোট দি পেলাই নিজৰ যোনটো অধিকাৰ সেইটো আপোনালোকে পালন কৰক। আৰু আপোনালোকৰ যোনটো ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ হ'ব বা বিধায়ক হ'ব তেওঁ আপোনালোকে নিজৰ হাতেদি নিজে আপোনাৰ নিৰ্বাচিত কৰক। And let's also listen into the reaction from Bongaigaon AGP candidate Diptimoy Chaudhary and her son after they too cast their votes a short while back. Let's listen in. ভাল লাগিছে, বেলেগ একো নাই। মানে গণতন্ত্ৰ যিহেতু একমাত্ৰ ভোটটোৱে আচল উৎসৱ গণতন্ত্ৰৰ, গতিকে গণতন্ত্ৰৰ এই উৎসৱত নিজেই এজন প্ৰতিনিধি হিচাপে ভোট দিবলৈ পাই অতিকে আনন্দিত হৈছোঁ। আৰু এইটো ক'ব গ'লে ডাঙৰ কথা, এজন প্ৰতিনিধি হিচাপে আহি নিজেই নিজৰ ভোটটো দিয়াটো সেইকাৰণে ভাল লাগিছে। আপোনাৰ জিকাৰ সম্ভাৱনা কিমান? জিকাৰ সম্ভাৱনাটো পুৰাই ভাবিছোঁ, জিকিম বুলি ভাবিছোঁ। কিমান ভোট পাম বুলি ভাবি আছে, আশা কৰি আছে? মই সেইটো কেনেকৈ কওঁ এতিয়া, ঘূৰিছে প্ৰচাৰ কৰিছে, আগত কৰি বেছি পাম বুলি ভাবিছোঁ। মহিলা হেৰিৰ ফালে যাওঁ, মিত্ৰজোঁটৰ পাৰ্টি, সেইটোকে ভাবিছোঁ। একমাত্ৰ মহিলাৰ কাৰণে হ'ব পাৰে নেকি? হ'ব পাৰে, মানে বহুত মহিলাই কৈছে, মানে এইবাৰ মহিলা ইমান বছৰৰ মূৰত হৈছে, গতিকে মহিলাক সকলোৱে বিচাৰিছে আৰু মহিলাৰ হ'লে মনৰ কথা ক'বৰ কাৰণে সুবিধা পায়, সেইটোৱে ভাবিছে। আৰু আপুনি শিক্ষয়িত্ৰী আছিল, ৰাজনৈতিক পথাৰত আপুনি আহিব বুলি কেতিয়া ভাবিছিল নেকি? একদম ভবা নাছিলোঁ, কোনোদিন ভবাই নাই মই ৰাজনৈতিক পথাৰত আহিম বুলি। একদম মানে চিম্পুল আছোঁ, মই স্কুলতো সেই তেনেকৈ আছিলোঁ। হঠাৎ মানে পৰিস্থিতিয়ে বাধ্য কৰালে মোক চবেই, মহিলা পৰিষদ যুৱ পৰিষদে চবেই ক'লে আপুনি এনেকৈ কৰক। তাৰপিছত ছাৰ নাথাকিলে, তেখেতৰ কথাবিলাক আমি কাৰ আগত ক'ম, এনেকৈ কোৱাৰ পিছত চবেই এনেকৈ ইমান কৈছে জোৰ দি। আমাৰ ছাৰৰ ফালৰ পৰা বহুত আপত্তি আছিল, মোক কথা পাতিব দিয়া নাছিল আৰু এইবিলাক ময়ো ভবাই নাই একদম কথা মানে। তাৰপিছত সকলোৱে ক'লে মানে মই প্ৰাৰ্থিত্ব দিবই লাগিব, সকলোৱে কোৱাৰ পিছত মই पित्त कफ को जो करता है नित्य खंड खंड, अशुद्धता का भाव भी इसको न छू सके कभी। ये जीवनीय शक्ति है, इसमें न अतिशयोक्ति है। आयुर्वेद का ये सार है, आरोग्य का प्रकाश है। ये दिव्य है, अमूल्य है, पतंजलि च्यवनप्राश है। মুৰছাল যেন কবিতা, কাৰণ ইয়াৰ চিৰসংগী ইটালিয়ান অলিভ অইল আৰু ভেষজৰ গুণেৰে সমৃদ্ধ জেক অলিভ অইল বডি অইল। কবিতাৰ দৰে চালে জগাই তোলে মনত নতুন সুৰ। Welcome back, viewers. You are watching this live coverage of a voting day as 6 constituencies in the northeast are going to bypolls today, 5 in Assam, 1 in Meghalaya, and at the same time another very crucial election is underway. The first phase of the Jharkhand assembly polls is also underway simultaneously. So first, Dulumani, let's talk about what we're witnessing right here in the region. As far as Assam is concerned, of course, needless to say, this
Bypoll is being heavily touted as the semi-final ahead of the 2026 Assam Assembly elections. What we're witnessing today is definitely going to play a role in what we get to see in the run-up to the 2026 polls, isn't it? जी बिल्कुल, और ये काफ़ी अहम चुनाव माना जा रहा है सत्तारूढ़ के लिए भी और विपक्ष के लिए भी, क्योंकि ये जो 5 सीटें हैं काफ़ी अहम है। अगर इन 5 सीटों पर किसी भी पार्टी का दबदबा कायम हो जाता है, किसी भी सीट अपनी बढ़त बना लेती है, तो एक तरह से यह साबित हो जाएगा, एक तरह से यह स्पष्ट हो जाएगा कि उनकी मजबूती कितनी है ज़मीनी स्तर पर, लोग अब उन्हें कितना पसंद कर रहे हैं, लोग कितना उन्हें चाह रहे हैं, लोग कितना चाहते हैं कि वह अगली बार भी इस सीट पर जीते और कितना विकास यहाँ जरूरी है। और रौनक, अगर हम यहाँ मेघालय की बात करें तो मेघालय की एक सीट पर भी आज उपचुनाव हो रहा है। काफी अहम उम्मीदवार, काफी हाई प्रोफाइल उम्मीदवार यहाँ मौजूद हैं। जी बिल्कुल दुलमनी, and at the same time, let's also not undermine how important the first phase of the Jharkhand Assembly election is as well. All eyes would be on the issues of infiltration, on the issues of tribal welfare. That is what both sides, if we talk about the opposition indie bloc as well as the NDA bloc, they've both been trying to bank on these issues. While on one hand, Champai Soren is being touted by the NDA bloc as the torchbearer for the welfare of the tribal community. On the other hand, the JMM combined is looking to sway votes in their favor by saying that Hemant Soren is in fact the one who is the most adept at taking forward the issues and development of the tribal community. The live coverage will continue right here, viewers, of course, because voting is underway and will go on till the evening at least. So we will keep bringing you all the latest updates. Don't go anywhere. We'll cut across for a short break here, but on the other side, live coverage and all the latest updates will continue. Stay tuned. পতঞ্জলি কচ্চি ঘানি বিশুদ্ধ সৰিয়হৰ তেলত বিশুদ্ধতাৰ তীব্ৰতা এনেকুৱা যি লৈ আহে চকুলৈ পানী, আৰু যেতিয়া পৰিবেশন কৰা হয় তেতিয়া সকলোৰে মুখলৈ আহে পানী। সোৱাদ আৰু বিশুদ্ধতাৰ সংযোগ পতঞ্জলি কচ্চি ঘানি সৰিয়হৰ তেল। প্ৰথম পিম্পল তেন্তে কি কৈছে তোমাৰ ইনফ্লুৱেঞ্চাৰছে? বহুত কিবা কিবি, কিন্তু মোৰ OG অৰিজিনেল ইনফ্লুৱেঞ্চাৰ তুমিহে না। সেই কাৰণে এইটো মোৰ OG এডভাইস। ইয়াত আছে 100% নেচাৰেলি ডিৰাইভড নিম। ই হ'ল সোপ ফ্ৰী আৰু পেৰাবেন ফ্ৰী। পিম্পলছ আঁতৰাই স্কিন কৰি তোলে হেল্ডি। হিমালয়া পিউৰিফাইং নিম ফেচ ৱাছ, পিম্পলৰ অৰিজিনেল সলিউশ্যন। প্ৰতিগৰাকী মাকৰ এটাই প্ৰিয় বস্তু, খাদ্য কৰি তোলে পূৰ্ণৰূপে সুস্বাদু, সোৱাদেৰে পূৰ্ণ কিন্তু স্বাস্থ্যকৰ, পেট ভৰাই খোৱা খাদ্য মাৰ আশীৰ্বাদৰ। প্ৰতিগৰাকী মা কৰে ভৰসা, মাতৃ স্নেহেৰে ভৰা পতঞ্জলি বিশুদ্ধ গৰু গাখীৰৰ ঘিউ। মোৰ দেউতাই মানে কি এনেই গাঁৱতে গুণগুণাই থাকে কেতিয়াবা। ষ্টুডিঅ'ত সোমাবৰ কাৰণে ভয় লাগে। News to keep you ahead. Evening Prime, every day at 7 p.m. Don't like the inverted image? Get the real picture.
News to keep you ahead. Evening Prime, every day at 7 p.m. Don't like the inverted image? Get the real picture. News to keep you ahead. Evening Prime, every day at 7 p.m. Don't like the inverted image? Get the real picture. News to keep you ahead. Evening Prime, every day at 7 p.m. Don't like the inverted image? Get the real picture. ইটালিয়ান অলিভ অইল আৰু ভেষজৰ গুণেৰে সমৃদ্ধ জেক অলিভ অইল বডি অইল। असम के 5 विधानसभा सीटों पर मतदान, 34 उम्मीदवार मैदान में 9,09,057 मतदाता करेंगे सभी के भाग्य का फैसला। मेघालय के गांव में गृह विधानसभा सीट पर मतदान जारी, 32,254 मतदाता 6 उम्मीदवारों के भाग्य का करेंगे फैसला। मतदान को लेकर लोगों में उत्साह का माहौल। झारखंड विधानसभा चुनाव के तहत पहले चरण के लिए 43 सीटों पर वोटिंग, 1,37,00,000 मतदाता, 683 प्रत्याशियों मैदान में, 15 जिलों में कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान जारी। बिहार के 4 और पश्चिम बंगाल के 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव,
बंगाल में भाजपा और टीएमसी के बीच मुकाबला, बिहार में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच सीधी टक्कर, मतदान को लेकर लोगों में भारी उत्साह का माहौल। अमेरिकी ब्यूरोक्रेसी को क्लीन करेंगे एलोन मस्क और भारतवंशी विवेक रामास्वामी, ट्रंप ने सरकार में किया शामिल। 20 जनवरी को ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति की लेंगे शपथ। और आईपीएल से पहले एमएस धोनी को बड़ी मुश्किलें, बिजनेस फ्रॉड मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने भेजा नोटिस। धोनी के पूर्व पार्टनर्स ने उन पर धोखाधड़ी का लगाया है आरोप। असम के 5 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग जारी है। सामागुड़ी, बिहाली, धलाई, सिदली और बंगाईगांव सीट पर सुबह 7